में से कोई एक स्क्वाड होगा जो कि इस मैच का चिकन डिनर लेकर भाई इसमें अब क्या शिफ्ट मारेगा भाई वेव जोन में 52 नॉर्दर्न साइड के ऊपर मौजूद है। किल स्कोरिंग अच्छी की जा सकती है। अभी भी जिस एरिया से आ रहे हैं वहां पर इतना ज्यादा कवर मौजूद नहीं है। VGS बढ़िया है चैलेंज करने के लिए आज की ऑडियंस कंप्लीटली हाइड अप हो चुकी है जो एरीना में मौजूद है। Falcons इन द चैट गाइस तो सेंटर दे देता तो मजा आ अच्छा स्प्लिट है येट वियर्ड भी में जैसे प्लेयर्स ओपन यहाँ पर मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक भी प्लेयर इनको स्पॉट करते हैं हाई रिच से तो ये भी एलिमिनेट हो सकते हैं। दो प्रेडिटी टीम फाल्कन ईस्पोर्ट्स अपने गवा चुकी है। टीम स्टारवॉर्ट्स के एक्शन वंस अगेन इन द किल फीड भरपूर एक्शन दिखाते हुए नजर गेमिंग के प्लेयर्स के ऊपर प्लेयर मौजूद रहते हैं। 4 प्लेयर्स अभी तक इंटैक्ट हैं। एक किल इनके पास आ चुका है। एक सर्कल के एज पे मौजूद है। अनफॉर्चुनेट करना पड़ेगा काफी हद तक फ्रिक्शन का कोशिश कर रहे हैं कि वो एरिया अपने लिए मखसूस किया जाए लेकिन एनजीएक्स के लॉर्ड अपना डेरा जमाते हुए टीजीबी एक और मजीद प्लेयर सुरक्षक के हाथ हो जाते ओमेगा का नेट जाता है। एशवेंट को भी एलिमिनेट किया जाता है। टीजेबी एक और बुरे मैच का सामना करती है और फाइनली पूरे स्क्वाड को नेट कर दो किल टीम सोल अब बैक में लेकर जाती हुई बहुत खूबसूरती के साथ आगाज कर दिया जा चुका है विदाउट लूजिंग एनी ऑफ their players, the team soul और की टीम्स सर्वाइव करती हुई। अबे इनका क्या लैग कर रहा है? ये तो सेल दो मैं बचना पड़ेगा क्योंकि इंग्लिश वाला ही खोल लेता है। ये लोग लैग कर रहे हैं। आप लोग सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। खून रेजिंग we'll see VIVO key trying to pick other players. Yellow. These are players that are very, very aggressive, but as you were saying, they are so skilled from South America, from that Brazilian region. Hopefully, I'm really pushing for them because I'm all South American, so I'm a little bit biased, but I'm really hoping that they can make it to the after party. All right, Falcons looking to Yusuf, last player live right now. Cielo is taking him on. Yes, taking him very low as well. UMP could be pushing into the shack. He's trying to defend it, but he's going to be taken down. It's very impressive here by VIVO. That means Falcons is going to be going out in 14th place. Unfortunately, also saw Morph going out just before that. Morph is going to get elimination, so they're going to be racking up some of those points. And a team that might be quiet is Wildcats right now. They currently have 0 LMs, but they are keeping all their players alive. And for that team, they are sitting in 7th place. Looking at this circle, anything can happen. I'm loving what I'm seeing from some of the other teams. They have been there for such a long time that they're hopefully going to have enough of the loot. Like, this is one of the things that we saw some of the other teams getting yesterday with just staying put on just one spot. They were able to, yes, make it towards the final 2 circles, but when they started getting into the engagement, they just didn't have the utility. They didn't have a lot of stuff in their nets. And now, with this right here, them one Kia couldn't be happier. Really happy for this. They're looking to try to defend that 5th spot right now, and they're sitting in the center compound in the circle. Right now, a lot of teams are going to be fighting for that Quarry Ridge on that south side of the circle where we see Vampire right now. We have so many teams down there right now. Soul, REGAN.S, Box down there, Stalwart, back-to-back. So many teams are going to be fighting for just, you know, 1/2 of a compound and a little bit of a ridge. So we're not seeing probably more than 1 or 2 teams that's going to be surviving that outcome right there. Also in the north, a lot of teams are going to be fighting for just a little bit of sliver of that fields that we have. Fall Rivals sitting happy inside that shack. They're going to be waiting until later. Yes, 7 out of our 13 teams right now currently facing back-to-back. J7 being able to hit some shots right there. Hopefully his teammates are able to back him up. I think they're going to realize that just they're all grouped up and maybe they'll start shooting those vehicles to get the explosions. We know it has happened. And look at that, Lux getting shot by J7. J7 right now on a tear. Action kill ले लिया. Really nice play, but Stalwart also on screen. J7 continues to put damage onto Istanbul. Wildcats goes down. Without an elimination, that's going to be a rough one for them. But Stalwart is pushing right now. They're aggressing this. They saw the knocks come out, and they know that J7 potentially could be only one guy because they only heard one player shoot. Defensive. Can he find J7? Oh, that's a really good Molotov defensive. That was a great Molotov. J7 able to back off, and I don't think Pico was able to spot him. Polo also able to set himself up behind the rock, getting those angles. And here comes a bit of a push there from, I think it was J-Way trying to push up. J7 wants to get more into the action. He's able to get one knock. Can he get the finish? He's going to be able to get the finish. Top lane down. From some of the other teams behind, this might benefit back-to-back. Polo is down top. It's currently having a height advantage. J7 being able to get some damage there with the nade that he threw. Can he get this knock? Is he going to be able to let top heal up? And I think he is going to have enough time to heal up. Aggression right now. Let's see if J7 can get another one with this Bison right on hand.
could he make something more happen? Last player for back-to-back. More damage coming in on the utility. That is a really good denial. J7 was forced to just move back now. Soul under a lot of pressure from Vampire as well. Right now, more is coming in from them. Stone finding multiple grenades. Utilities be also being deployed from Goblin. This is really well played by Stone. Aggressive. Gets down Hector on the knock. No, it's going to run into the Molotov. That's unfortunate. Goblin finds one though, returns, but Soul goes down. That's super unfortunate for them. Ninth play because back-to-back takes the 10th place elimination right there. Vampire has to try to survive. They're under a lot of fire, fighting for this terrain here we were talking about before. A lot of teams getting knocked, and I'm interested to see how Vampire Esports is going to be able to recruit from that engagement. I know that's a team that stays very calm. They're going to hopefully be able to pick up this player and start the rotation. And guess what? Nigma Galaxy, a team that we're talking about earlier with the circles, they're currently sitting pretty. They're letting all the other teams take the fight. Luckily for them, nobody has pushed them. And same thing with Pmwi. I mean, this is a team. 2 out of the current 7 teams. Pmwi has 4 players alive. Virtual Gaming Squad has 4 players alive. But Pmwi has just been watching all this. They haven't had to shoot at least one time. Yeah, and as I was talking about before, only 2 teams survived this mayhem on the second side of Vampire Stalwart. And as we saying this before here, Nigma Galaxy were able to take that shag away from Fall Rivals. He didn't catch it, unfortunately. But as Seven pointed out here, this is really important for Pmwi. They could be defending this top 5 spot, making it even harder for the teams chasing. Vampire taken down by Song though. Juni also finding Stone. Ravenclaw going down too. That is super unfortunate. And Shreps is just the last player that is not knocked at the moment for Vampire. Vampire just getting very unlucky too there, and I think he was trying to make it farther with that buggy, but he ended up crashing into REG ka kharab match, Vampire ka kharab match, Falcon ka kharab match, bachi kon SC. Finally getting finished from the zone. And Stalwart Esports, I mean, this is a team. It's been quiet. They did end up just getting one of the players knocked, but they're going to see if they can maybe pick him up. Pmwi, they're sitting perfect right now. And as you were saying, Nigma Galaxy currently just has 1 player, but they do have 8 Ilms. That's going to be big for them as they are trying to break into that top 5. Vampire Esports trying to make it up, trying to use that smoke wall. And so far, he's barely been able to. You can see VGS getting into some fights over there with 52 Esports. Yeah, exactly. And Stalwart is going to be trying to survive the situation. Nigma Galaxy actually gone out in 7th place with the eliminations. That was Adrian being able to close that out from VIVO. Important for them. Stalwart right now on the offense, but Shreps is helping this defense that Pmwi is trying to set up in the south with all this utility that he's using right now. He's trying to get deeper into the zone, trying to survive for as long as possible while 52 Virtual Gaming Squad is fighting for the northern side. As you see how in the distance, a lot of pressure has been put onto 52, but there right now, Belly is trying to survive, deployed smokes. Virtual Gaming Squad is moving out on the east side of this compound that Pmwi has been able to hold, but Juni is finding another one with a fantastic usage of utility right now. More Molotovs coming out. Only 3 eliminations for Pmwi, but if they can secure this winner chicken dinner, this could be a huge amount of points for them. Top Gun down 2. You can see Juni right there being able to knock down Top. They are aware of everybody that's going to try to rush him. Barely getting missed by that nade. And I think Stalwart Esports might be able to recover from this. Something that I was currently looking at too. If you won the game with the last player from Nigma Galaxy, that's going to be huge for this team because they are trying to hunt down some of the other teams that are out. Wildcats, I mean, points, they're already out. Morph as well, they're already out. They're going to be able to climb up in a big way when it comes to that overall leaderboard. So great start here from VIVO. And another team, I mean, I feel like they've been a little bit quiet after we talked about their third party earlier. 52 Esports, only 2 Ilms, but they do have 3 players alive. And in all the action that we have been seeing here, Avenger, they're just waiting patiently. They're doing, I feel like, what Pmwi was doing earlier. Exactly, and the question is here, with this circle, as you see in the minimap, it's actually only Pmwi that is inside, but 52 is the only team on the northern side. Virtual Gaming Squad does have the information on them. They know that they're there up north, and yeah, Foz is hiding so many shots, so many bullets onto it. VIVO keyed out in 5th place, though, with the elimination. The question is,
How far can Virtual Gaming Squad take this one? And is Damwon Kia going to be able to defend this compound? Yeah, is Damwon Kia going to have the enough utility to be able to take advantage of all of this? Here we go, Virtual Gaming Squad trying to get different angles. Are they going to be able to break into that? Careful with Stalwart Esports. That was on the other side there. I think Stalwart Esports has been able to rotate a little bit more. And now you see 52 Esports getting Damwon Kia hasn't lost a player. ये लोग कंपाउंड में लड़ रहे हैं एसटी पीछे से आके सबके मजे ले जाए देखो ना कैसा है एसटी पे गोल्डन जाते Stalwart Esports meanwhile they're like okay ये दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं लोग आके मजे ले जाए बे एसटी एक्शन पे नेड वेड भी है टॉप फॉर्म में है ना yeah 52 definitely just trying to survive trying to make everything just happen in front of them because if they can survive a bit longer, they're going to be securing themselves even more points. But no, it doesn't happen. Stalwart says no, they find Taku. Gaddafi steals it. And more shots are coming out towards Pharaoh. I think that's him down as well. 52 out in 4th place. 4v3. But good amount of any predictions through the placements now. 4v3. 4 guys alive. So is Damwon Kia. Stalwart is the team trying to survive here. Forest is finding multiple though. Forrest being able to knock down 2 players right there. That was huge. Damwon Kia Jr. is going to get knocked. King Shot get connected this nade. Here we go. Stalwart Esports now moving into action as well. Damwon Kia getting some of those players knocked. Virtual Gaming Squad being able to clutch it up as well. Can someone Damwon Kia being able to win that 1v1. Song so well played here. Swapped to the barrel after playing with the not having any more bullets with the UP. Can he make something more happen or they're going to be taken down. He's pushing out. It's so well played actually by Top. Securing 2nd place here for Stalwart, but he is alone. And Virtual Gaming Squad has 3 members, now 4 members standing. And they can just push aggressively. I believe, okay. I believe in Top. We see it before. We see someone force. Can he do it? He knocked the first one. Can he knock the second one? He's going to take some shots. He is 1 HP. He's ultimately was too much. Virtual Gaming Squad, ladies and gentlemen. Being able to get the first win and keeping their dream alive. As I said, we're talking about it. Teams towards the bottom, they are going to be able to try to make a statement here in the last day. They are going to try to do their best to push towards that top. A 16th place team, I'm pretty sure. I mean, they're definitely not going to be 16th place after this match. Great performance from Virtual Gaming Squad on the first game of the last day. Yeah, so amazing to see Libya being represented here. Virtual Gaming Squad, of course, super amazing. They have not had the best first 2 days. वो डॉमन गेमिंग जो था ना वो बंदा जो था ना क्या नाम यार उसका प्रोनाउंस नहीं कर पाया मैं उसका नाम बट भाई वो क्रेजी ट्राई था So far in the previous 2 days did extremely उसका ट्राई क्रेजी था भाई Monkey, one of them. पॉइंट्स टेबल देखते हैं डिफरेंस कितना बन रहा है done with this game here. We're going to be going to the desk with the match rankings sponsored by STC. एक सेकंड रुको गाइस पॉइंट्स टेबल No, you guys aren't done. We're actually going to bring you back for analysis. No, I'm just kidding. We're not going to bring them back because it's our time to be on the desk, just like it was time for Virtual Gaming Squad to get themselves a chicken dinner coming in from PMPL Africa, able to get themselves 20 points on the match. A fantastic job by them to 26 points निकाले भाई स्टालवर्ड ने लीड बना ली different things we could talk about. स्टालवर्ड ने लीड बना ली भैया जी Almost a god स्टालवर्ड ने लीड बना ली forever it felt like 26 पॉइंट 13 पॉइंट का 11 पॉइंट का डिफरेंस था 11 या 12 पॉइंट का और उल्टा लीड बना ली We were talking about it with Kalaris, like that compound is a godsend if you can get there early and teams are not able to get close because you just have a like little ridge line on the east and the south that is very nadeable. बाप रे बाप क्या इंटेंस आ रहा है बे आरएससी के लिए खराब लगा रे Yeah, that's it's weird the compound. आरएससी के लिए खराब लगा स्टार्टिंग के 2 कैजुअलिटी but it has problems. Okay, so अरे डालना भाई पॉइंट्स टेबल आज इंपॉर्टेंट है जल्दी डालना चाहिए यार जो मत करते यार जल्दी डालते नहीं है इंपॉर्टेंट है के दिन जल्दी नहीं डालता डाल भाई their downfall because all of these teams are pushing in at similar times to try and thwart their अभी बता है so as much as Damwon Kia had that center ये DWG भी रेस में आ गई हो BGS as well as Stalwart push ओमेगा डिड इज बेस्ट एज एन आईजीएल यस कंप्लीटली उसने रोटेशन अच्छा करा है जोन अच्छा दिला एंड में साला जोन हक दिया एंड में साला जोन किस्मत साथ नहीं दिया पूरा ऑपोजिट चला गया अबे यही तो है बे स्टार्टिंग में जोन दे रहा है लेकिन साला मेन टाइम पे जब जोन चाहिए तब भाग जा रहा है ये मैच में तो लिटरली वही हुआ ओमेगा ने 3rd 4th 5th सर्कल मस्त रोटेशन करवाया सेंटर पहुंचा दिया उसके बाद जोन साथ नहीं दिया अब सेंटर में रह के भी जोन साथ नहीं दिया तो भाई किस्मत खराब है ना भाई आ गया पॉइंट टेबल आ गया पॉइंट टेबल में एसटी 156 13 पॉइंट की लीड है गाइस फर्स्ट और सेकंड में Yeah. 13 पॉइंट की लीड है 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 13 पॉइं
ST 156, Team Falcon 143, RSG 124, Damwon Gaming 122, Vampire Esports 121. टॉप 5 टीम्स रेस में, टॉप 5 टीम्स रेस में, और जो 6th पे टीम है 1 आउट 8 पॉइंट्स है निग्मा गैलेक्सी। अगर निग्मा गैलेक्सी कुछ ऐसा हैट्रिक चिकन मार देता है या बैक टू बैक 2 चिकन मार देता है, मतलब सबका फट जाएगा, ऐसा सीन है। ये वेर यू सी पॉइंट 7 इंस्टाग्राम पे ब्रदर 13 पॉइंट का लीड है फर्स्ट और सेकंड में। अभी 5 मैचेस बचे, 5 मैच के हिसाब से तो थोड़ा कम ही है, बट कुछ भी हो सकता है, कोई भी जीत सकता है अभी। Where were they coming in? Were they coming in for the west side or north side? मतलब कोई भी जीत सकता है अभी। अभी क्या लग रहा है तुमको कौन जीतेगा? पहले मैच के बाद क्या लग रहा है? ST का मोमेंटम अच्छा बना। Yeah, I mean, the thing is, we've talked. मैंने प्रिडिक्ट किया था ट्विटर पे RSG या तो ST जीत रही है, मैंने प्रिडिक्ट किया था। फेस कैम ऑफ कर दो, ठीक है ब्रदर। These are moves you have to make. मैंने प्रिडिक्ट किया था RSG या तो have to be able to capitalize ST on जीतेगी। situations like that, off situations like देखते that. कौन We जीतता talked है। about it so many times when it came to PMPL, Western Europe as well, seeing teams not be able to do that. So इंडिया जीतनी चाहिए ब्रदर, चांसेस कम है ना भाई, अभी चांसेस नहीं है, अभी फर्स्ट प्लेस में आने के चांसेस है। Extremely happy, exactly. And as you said before, Max, they're coming to this event just trying to learn, just trying to improve on I predict RSG or ST expectations of getting, top 5 kind of finish. वही But they मैंने want भी to वही use this to predict go back to PMPL Africa and then भाई go फिर to तुम the next फेस season. कैम ऑफ कर दो, ऐसा क्यों बोलते हो यार? इधर इधर तो लगाना ही पड़ेगा ना भाई, अब कुछ ना कुछ तो हाइड होगा ही ना। अब जैसा इधर लगाऊंगा तो इसका शक्ल हाइड हो जाएगा, इधर लगाऊंगा तो इसका शक्ल हाइड हो जाएगा, इधर लगाऊंगा तो ये कुछ हाइड हो जाएगा, इधर लगाऊंगा मतलब कहीं ना कहीं तो मेरे को रखना ही है ना, तो कुछ ना कुछ तो छुपेगा ही भाई। अभी इधर वीवो का फोन, सॉरी एक्सपीरिया का फोन छुप रहा है इसमें। एक्सपीरिया का फोन देखना है तुमको, एक्सपीरिया का फोन देखना है तुमको, कैसी बातें करते हो यार? Picky, I suppose, with this, given if the fight happened between Damwon Kia and Stalwart did have more than one alive, I would have liked to have seen VGS be a bit more urgent about their push forwards. They were very keen on getting the full res to then push on Stalwart and guarantee 100% the बराबर if you're a top team, बराबर you're pushing on while that third party साची बात है भाई, साची बात है, बराबर के them out of the picture straight away without the full बराबर res, because you need 100% urgency about these moments. बराबर Otherwise, the other team could recover and have a problem. बराबर Let's actually dive a little bit deeper into a head-to-head. મારો શું કહેવાનું છે, તમે ફોલો ઠોકી નાખો, ફોલો નહીં ઠોકો ને તમે છોકરી નહીં મળશે ભાઈ, તમે બધા ફોલો ઠોકી દેવાનું, આપણે 1 મિલિયન થઈ જવાનું લોકો પર। અરે આવો તમે પધારો ભાઈ, કેમ છો? He just wanted the કેમ ચાલે છે? સારું ચાલે છે? આજ મેન મસલા है relatively well, but that's kind of the what's going to happen when you're in a compound, right? You can't chase to get those eliminations. It's a lot of peacocking from that area and just saying kind of falling shots almost and getting knocks, and maybe that falls behind a 2000 का डैमेज दिया रे दोनों ने on that, so that's annoying as well. भाई बट वो One thing that एक तो टॉप ने खतरनाक खेला और एक इसने DWG के एक प्लेयर ने खतरनाक खेला। With limited resources, they definitely went in with limited use. खतरनाक खेले भाई, because if they have themselves more ब्लैकमेल कर रहे हैं तुम तो, they देखते कितने फॉलोअर बढ़े डायलॉग मारने के बाद। रुक जाओ उन्होंने कराया कि नहीं कराया 850 के भाई? तो पहले बोल दे रहा हूँ, आज दिए है ना 850 के भाई, तुम लोगों को लड़की नहीं मिलेगी, पहले बोल दे रहा हूँ, याद रखना, याद रखना, दिल से बोल रहा हूँ। और 8,000 चाहिए। Thank you positive stream brother, thank you so much brother। इंसान ही अपन पॉजिटिव है तो स्ट्रीम भी रहेंगी ना भाई। उर्दू लगा दो, वो लैग कर रहा था, लगा देता हूँ। उर्दू चल ही रहा है वैसे तो, बैकग्राउंड में चल ही रहा है, तो लैग कर रहा था ना। जैसे इतने आखिरी दिन में इंटेंस मोमेंट्स के अंदर अगर वो मैच लेकर जा सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है गाइस, आज कुछ भी हो सकता है और हर चीज के लिए तैयार रहिए। वो लैग कर रहा था इसके लिए मैं WG का आपस में एक एदाद का मुआवजा किया जाता है। कल मियां भाई की एंट्री, यस बैंगलोर लैंड में तुम्हारे भाई की एंट्री किया जाता है। ST की हमारा भाई आएगा बैंगलोर। गाइस बैंगलोर से कल कौन-कौन आ रहा है मिलने, पहले बताओ चैट में, 2147 कल कौन-कौन आ रहा है मिलने भाई? हीलिंग उसके मुकाबले के बैंगलोर में अपन आ रहे, कल कौन-कौन आ रहा है मिलने, जल्दी बताओ। और इनफैक्ट उनके जो स्कोरिंग है, किल स्कोरिंग है, एलिमिनेशंस है, वो भी काफी ज्यादा कम है। बिल्कुल एलिमिनेशंस काफी ज्यादा कम जरूर है, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि DWG की तरफ से कमबैक, जिसकी शादी हो गई उसको क्या, अभी तक DWG जिसकी शादी हो गई उसके लिए मैचेस खेलते हुए देखा जरूर था। ये भी एक एवरेज या एवरेज से थोड़ा सा बेहतर मैच जरूर था। लाइक इनकी तरफ से जो वो कुछ नहीं यार, तुम्हारा रिश्ता जबरदस्त सुखी शांति से चलेगा अगर तुम लोग फॉलो ठोक दोगे। फॉलो नहीं ठोकोगे थोड़ा शानदार दिन निकाला जाएगा, सना ना हो सकता है, फॉलो ठोक दोगे तो थोड़ा शांति से चलेगा। अगले 2 मैचेस के भाई इतने लोग आ रहे हैं, मी बोल के इतना सारा लिख रहे हो, इतने लोग आ रहे हैं सही में? सर्वाइवल किया थी 52 ने काफी अच्छी बाप रे बाप,
एड्रेस तो बताओ, TC अरीना एग्जैक्टली अलादीन, वो जो उन्होंने डाला है Instagram पे एड्रेस। आज के गेम से पहले राजस्थान कब आओगे भाई? राजस्थान आएंगे। 15 पॉइंट्स चाहिए या मे बी शायद 10 से 15 आज फुल एकदम गॉगल पहन के आए रे। सो वो बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइवल अगर फिक्सिंग कर थोड़े से किल्स वो करके लेकर जाते इस मैच से, तो मेरे ख्याल से मामला थोड़े और बेहतर हो सकते थे, क्योंकि टॉप 4 के अंदर अगर आप आ गए हो तो फिर आपको कोशिश करनी पड़ती है कि आप थोड़ा बहुत एग्रेशन और किल्स जरूर उठाओ। आप इनफैक्ट वहां पर मीमी से याद आया, एलिमिनेट हो भी जाते पहले जब स्टार्टिंग में मीम स्टार्ट हुआ था ना, मीम स्टार्टिंग में जब एकदम सोशल मीडिया की दुनिया में जब ये नया मीम आया था, तब मैं कितने में था? कौन सी क्लास में था? 10th में था। हमें देखने को मिली VGS तब मैंने थोड़ा मीम सुना था, मीम होता है। और तब मैं उसको में भी हमने देखा मीम नहीं पढ़ता था, मीम ही पढ़ता था। फिर एक मेरे को पता नहीं था इसको मीम पढ़ते। मेरे से ऐसे बहुत लोग होंगे, था। अभी भी बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि इसको मीम बोलते हैं, बट मैं वो टाइम पे मीम ही पढ़ता था। करने ही वाले थे, लेकिन स्टारवॉर्ट ईस्पोर्ट्स के प्लेयर मेरी बहन कोई बताती थी मेरे को मीम, बोलता था ये मीम ही अच्छा है, शेयर करना इनकी तरफ से कि उस फाइट से रिट्रीट बैक करना और मीम ही शेयर करना हैश पर लेकर आ जाता है। सच्ची बताओ, तुम लोग भी बोलते हो? बट अभी तो सबको पता है इसको मीम बोलते हैं। जो टीम जिन्होंने सर्वाइवल निकाला है, जैसे कि आप देखें कि स्टार्टिंग में मीम ही पढ़ता था। विवो किट की तरफ से 6 पॉइंट सर्वाइवल के निकाले गए, मगर वहीं पर विवो किट के पास स्किल्स जरूर मौजूद थे। कुछ टीम्स ऐसी हैं सर्वाइवल के ज्यादा पॉइंट्स लेकर गई हैं, स्किल्स उनके पास कम है, जैसे कि वर्चुअल गेमिंग के पास अहमदाबाद कब आ रहे भाई? आएंगे संक्रांति को भाई, वो इस वक्त प्लेसमेंट के, लेकिन 5 ही किल्स मौजूद थे। किया के पास 10 प्लेसमेंट पॉइंट्स मौजूद थे, लेकिन 5 ही किल्स मौजूद थे। वहीं पर 8 किया के पास 10 प्लेस पॉइंट लेकर जाती हुई, ये आपके पास तो सेल्टॉस है, सोनेट है, ये सब प्लेसमेंट पॉइंट थोड़ा सा हमें गंदा नजर आ रहा है, लेकिन अभी मेरे ख्याल से बट किया के पास एयरबैग्स नहीं है, वो नहीं रियलाइज करते इमोशनल डैमेज। ये जो किया के पास सेफ्टी नहीं है, जो मैचेस हैं 3, इनमें अगर वो किल्स नहीं इमोशनल निकालते, डैमेज। बड़ा मैच नहीं, मजाक कर रहा हूं यार, ऐसा कोई फिर टॉप 10 में आना जो है वो एक सपना बन सकता है उनका, और मैं ऐसा नहीं चाहता कि ये सपना बनकर रहे। मैं चाहता हूं कि किया के पास एयरबैग्स नहीं, लेकिन वहीं पर ठीक है एक खवातीन के साथ फन एक्टिविटी आपके सामने लेकर आते हैं। सेनेटर को हमने जो वो भेजा है कि वो थोड़ा सा जरा ये जो बास्केटबॉल जो खेल अपना दिखाएं और किस तरह से वो कामयाब साबित होते हैं इसमें या नाकाम साबित होते हैं, आपके सामने आएगा। बोला ऐसा कीजिए। बिल्कुल ठीक है। अरे क्या हुआ? ऐसा सन्नाटा, मेरे को लगा लैग हो गया। वेस्ट बंगाल कब आओगे? आएंगे मेरी जान, स्लेयर बुलाएगा जब आएंगे। कलकत्ता आएंगे ना भाई, आगे अमी तुम्हारे भालोबाशी, तुम्हें खूब सुंदरी लगती। लैंड होते ही बोलेंगे एयर होस्टेस को, तुम्हें खूब सुंदरी लगती, हमको रसगुल्ला खिलाती। रसगुल्ला बोलते ना। सुंदरी सुंदरी क्या करती? सुंदरी रे तो प्रोफेशनल है रे। चिच्चा प्रोफेशनल है, कोच है ना, एसटी का कोच है शायद। हाँ कोच है, एसटी के कोच है शायद। कोच होता है भाई, प्लेयर होता है। अरे NBA 3 or 6. I was pretty decent. It's not the record. But what was the record? 11. वेलकम बैक खवातीनो हज़रात, एक छोटी सी फन वीडियो आपने देखी जरूर, जहां पर 6 बार कामयाब होते हैं। नॉट दैट तुम्हें खूब सुंदरी लगती। फिर क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? हमने से पहले जो वीडियो देखी थी वहां पर तो कौन सा रसगुल्ला खाओगे? एयर होस्टेस का प्लेयर थे, वो कोशिश कर रहे थे किसी तरह से गेंद को ऊपर उछाले, उनसे हो नहीं रहा था, लेकिन सेनेटर ने दिखाया कि वो तमाम तर जो एक्टिविटीज है उनको बखूबी अंजाम देना चाहते हैं। और एसटी की थोड़ी सी बात करते हैं, जिस तरह से आज के दिन पहला मैच उन्होंने निकाला जरूर है। कोलकाता का रसगुल्ला खाएंगे, तुम कैसे है? की तवक्को की जा सकती है इनकी तरफ से आती है। तौबा बिल्कुल माफ करना भगवान, मैं शरीफ मेरे ख्याल से अपने मैच के अंदर टीम एसटी की तरफ से की जा सकती है तो, और इनफैक्ट टीम फाल्कन बैकग्राउंड में चल रहा है, लेट्स गो फाल्कन। चोक थोड़ा बहुत जरूर करते हैं, जेम इन द चैट। आई थिंक सो मिरामार एक ऐसा मैदान रहेगा जहां पर फाल्कन्स के प्लेयर फाइट बैक जरूर करने वाले हैं। और स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स ऑलरेडी अपने लिए वो पॉइंट्स लेकर जा चुकी है कि वो पहले स्पॉट के ऊपर आ जाएं और फाल्कन्स को नीचे उतार लिया जा चुका है। लेकिन व्हाट डू यू थिंक अबाउट फाल्कन्स, क्योंकि अब फाल्कन्स को वो जगह वापस नहीं मिलेगी। उनके बारे में आप क्या समझते हैं कि इस अगले मैच के अंदर क्या फाल्कन्स वापस से वो स्पॉट छीनते हुए नजर आएंगे? देखिए जब आज के दिन का आगाज हुआ था, आप शायद ज्यादा डिले नहीं रहेगा, मैं ऑलरेडी कर दिया कि किस तरह से टीम फटाफट जेम निकालेगी और क्या वो जीत कर जाएगी या नहीं जाएगी। तो मैंने आपको जेम मतलब जय माता दी बात कर रहे थे
कि फैल्कन्स को आज रीट्रस्ट किया जाएगा पहले मैदान से और शायद उनको चौथे तक नंबर तक जब पता नहीं यार जो बाकी टीम्स हैं वो थोड़ी ज्यादा हमें जब वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है, कहीं ना कहीं उनका जो कॉन्फिडेंस है वो ज्यादा नजर आ रहा है, उनको जरूरत भी ज्यादा है पॉइंट्स निकालने की। लेकिन वहीं पर मैं कहूंगा जिस तरह से इस टीम ने हमें परेशान किया ऑलरेडी, आप देखें 143 पॉइंट्स निकालना कोई मजाक नहीं है, इतने बड़े टूर्नामेंट में इतने बड़े नंबर्स को सिक्योर करना आसान नहीं होता। आपने देखा होगा स्टार्टिंग के मैचेस काफी अब अपनी टीम किधर जाएगी मेरे को देखना है। लाख ओवरिया है 10,000 किलोमीटर दूर प्लेन पाथ के साथ ज्यादा है अगर कंपेयर पिकाडो है 1000 किलोमीटर दूर। ये तुमको क्या लगता है कहां जाएगी? कहने के मेरा ओपिनियन भी है, लाख ओवरिया हो गया करते हुए देखा है आरएसजी को दूसरी दुनिया में लाख ओवरिया प्लेन पाथ के साथ डोमिनेट करते हुए देखा है इन द ग्लोबल चैंपियनशिप। क्या लगता है निग्मा गैलेक्सी भी आज के दिन कुछ कंसिस्टेंसी दिखाना चाहेगी। मेरे को क्यों लग रहा है गन फाइट लेगी निग्मा गैलेक्सी का तो काफी फर्क है फाल्कन्स के साथ। वहीं पर आरएसजी की बात करें, मेरे को लग रहा है फाइट लेंगे। मैच दूर है वो, अगर एक मैच आरएसजी का अच्छा निकलता है तो बात मेरे को लग रहा है फाइट लेंगे जब डिथ्रोन किया जाएगा। लेकिन चलें फिलहाल जो वो मैच का आगाज हो चुका है, मिरामर का मैच आज के दिन का दूसरा मैच खबर नजर आपके सामने स्टार्ट होता है। और फ्लाइट पाथ की बात करें वो जाता है इम्पाला की तरफ से रेडरमा की तरफ, टीम डिस्पर्स होती हुई नजर आएगी। अभी फिलहाल एलएसआर की तरफ जाएगी यूएससी, पिकाडो ही जा रहा है। चलो जेम इन द चैट गाइस, फाइट होती है आदि मुझे स्टिकर्स कर दे रहा। सर्कल कहां जाता है? रॉकेट्स इन द चैट। बिल्कुल आदिन, पिछले मैच के अंदर में कुछ ड्रॉप क्लैशेस नहीं देखने को मिले और सच टीम्स ने इंटेंशनली भी किसी को टारगेट नहीं किया, बजाहिर देखने में तो यही लग रहा था। सो आई बिलीव कि इस मैच के अंदर भी नहीं, हाँ सैनहॉक के अंदर कुछ पता नहीं है क्योंकि कल के दिन भी सैनहॉक के अंदर ही टीम आरएसजी ने टीम स्टारवर्ट ईस्पोर्ट्स को एलिमिनेट किया था। फिर से टीम आरएसजी की भी पिछले मैच के अंदर इनिशियल्स में एलिमिनेट होती है, एलिमिनेट होते हैं, दो प्लेयर्स कोशिश करते हैं मैच के अंदर सरवाइव करने की, लेकिन उनको भी ड्यूरिंग द रोटेशन पिक ऑफ कर लिया जाता है। अभी के लिए टीम्स स्प्रेड हो चुकी हैं थ्रू आउट द मैप और सर्कल की अगर हम बात करें तो सर्कल बिल्कुल चुमसेरा के पास एंड हो सकता है। साउदर्न साइड के ऊपर एक शिफ्ट लेकर गया है सर्कल, टीम 52 बिल्कुल जो कि फार साउदर्न साइड के ऊपर जा रही है और उसके अलावा ज्यादातर स्प्रेड हमें इस सर्कल के हिसाब से और प्लेन पाथ के हिसाब से नॉर्दर्न साइड के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा। अलादे बिल्कुल जी, फिलहाल सर्कल यार एक बार क्राउड बता दे यार कितनी क्राउड आई है कहीं ना कहीं फाइनल डे इतनी प्रॉब्लम्स दिखाता हुआ टीम्स के लिए नजर तो नहीं आ रहा, बट वहीं पर देखते हैं किस तरह से कैपिटलाइज किया जाता है इस चीज को। कल के दिन अगर आपको याद हो तो हमने काफी टीम्स को हमने देखा था कि उनकी तरफ से सर्कल के अंदर होने के बावजूद, सेंटर में होने के बावजूद उसको कैश नहीं किया गया उनकी तरफ से। अगर आपको याद हो 52 की तरफ से बहुत अच्छा एरिया होल्ड किया गया था, कैश नहीं कर पाते। वहीं पर अगर हम बात करें व्हाट इज दिस, वो सोल ने सर्कल काफी अच्छे से लिया जरूर था लेकिन उसको खेल नहीं पाते सही से। फर्दर इसके पहले तो ये लोग आराम से अपना लूट के निकल जाते थे, अभी फाइट होने के बाद जाता है और यूटिलाइज नहीं कर पाते सर्कल को। तो सर्कल के रहमो करम पे नहीं रहना, फाइट्स को जो वो अच्छे से लेना और फाइट्स जीतने के बाद ही आप जो वो सर्वाइव कर सकते हैं। जी बिल्कुल आदिन, वही बात है कि आज के दिन आपको अपने जोर बाजू पर इस जंग को जीतना है। वो जो ट्रॉफी आप लोगों ने स्टेज पर देखी है पड़ी हुई, वो इतनी आसानी से किसी के हाथ पर नहीं रखी जाने वाली। टीम स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स ने फाइट किया और वो पहले स्पॉट के ऊपर आ चुके हैं। टीम फाल्कन्स को इस मैच के अंदर फाइट करना ही करना है। जी हाँ, फाल्कन को जो इस मैच में फाइट करना ही करना है। वैम्पायर स्पोर्ट्स के इस वक्त हमारे सामने फ्लूकेट हमारे सामने मौजूद हैं। वैम्पायर स्पोर्ट्स के प्लेयर्स हमारे सामने जो वो लूट करते हुए नजर आएंगे, लेकिन A7 वर्सेस आरएससी की फाइट काफी क्लोज, दोनों टीम्स एक दूसरे के मौजूद। आरएससी के प्लेयर्स आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए ये तो डेंजर फाइट है मौजूद है क्योंकि स्टार्टिंग में डेंजर फाइट है। ये लोग आरएससी वाले तो घूम रहे मौजूद हैं। आरएससी के प्लेयर्स को पता तो नहीं है, लेकिन ब्रूनो का अगर हल्का सा भी भनक उनकी पड़ जाती है तो ग्रेनेड उनका काम तमाम कर सकता है। वहीं पर आरएससी के प्लेयर्स साइड पर जा रहे हैं, उनका सेटअप देखो वहां पे जरूर, लेकिन ब्रूनो पिंच डाउन हो चुके हैं, वो फॉल बैक नहीं कर सकते। उनको भी एक स्टूडियो में उठा के खिला रहे होंगे ना, लॉबी की तरफ लेकर जा सकता है। मीनवाइल उनकी तरफ से जब वो आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी, एक डिफरेंट एंगल से वो आ जरूर रहे हैं। आरएससी बिल्कुल भी उनको अंदाजा नहीं है। आरएससी को देखा वो 87 ने 87 पोजीशन अच्छी है, की तरफ से थोड़ी पोजीशन अच्छी है 87 सेना थोड़ी पोजीशन अच्छी है। यहां पे जो बैक एंड पे मौजूद है, उनकी तरफ से इंतजार किया जा रहा है कि टीम को जब एक जब पुश होगा तो बैक एंड से जो एक कवर प्रोवाइड किया जाए। बट एंगल बहुत ही बुरा है यहां पर। मैं ये कह रहा हूं उसी एंगल पर है जहां पर नो फाइट इनिशिएटेड, उनको यहां पर जो एक फ्लैंक देने की कोशिश करनी चाहिए या फिर किसी हाइट की तरफ हो जाए। सो इस फाइट के अंदर यार वो आरएससी का वो नहीं लगे यार कोई, वो चारों प्लेयर्स इकट्ठे स्टार्टिंग में सुना था मैंने एक दो प्लेयर्स को बोपू एलिमिनेट कर सकते हैं। अपने इधर बोपू बस बजता है, पता है ना, आईपीएल में बोपू बजता है। इंडिया में बस लाइन मैन होता है, बोपू बजाते हैं, पैं 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 पैं। लूट कर चुके हैं वो, हालांकि इधर नहीं बजा रहे यार। 30 सेकंड ही हुए हैं। किड्स देखें तो उनके पास क्या बोलते हो, बोपू चाहिए, मतलब बोपू होना चाहिए ना, उनके पास 3 ड्रिंक्स मतलब बोपू मौजूद है। बताओ चैट में सामान
अनुमान उनके पास अगर हम बात यार वो भोपू का फील अलग आता है बे, वो काफी अच्छा है, तो रोटेशन है ना? कर सकते हैं। जी हां, लैंड पे पब्लिक रहती है, भोपू बजाती है, एक मारते हैं पे 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 पे। कौन-कौन से गन्स इनके पास मौजूद हैं। अगर आपको शुरुआत में आईपीएल में होता है जैसा, मिल जाती है, इसके पहले भी जब पहले की लाइन होती थी ना उसमें रहता था, कोई भी क्लोज रेंज गन मिल जाती है तो आप एटलीस्ट गुजारा कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको एके ऑफर मिल जाए, ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। वहीं पर अगर आपको गोकू नहीं भाई, अरे भोपू, अरे एनिमी कार्टून वाले कोई कह लें कि गोकू सुन रहा है इसको प्रतीक भाई, इतना भी एनिमी ना देखो कि जिंदगी भर एनिमी एनिमी रहे। आपको एक एम4 मिल जाए और साथ एक डीएमआर मिल जाए। मम्मी बोलेगी खाना खा ले बेटे, बोलोगे गोकू के साथ ही खाऊंगा, मिनी 14 के साथ दूसरे के साथ नहीं खाऊंगा। अरे भाई हद है, वो भी आपके गोकू बोल रहा हूँ भाई को, गोकू सुने दे रहा है। क्या कार्टून देखते हो यार, शिनचैन मिनचैन देखो, जरूर, लेकिन बात करें कि टीम मोटिवेशनल है शिनचैन यार, कितना मोटिवेशन देता है शिनचैन, तुमको आइडिया है? जी बिल्कुल लादेन, एक फाइट यहाँ पर देखने को मिल सकती है हमें। टीम सोल के प्लेयर्स मौजूद हैं, चल सोल के प्लेयर्स ने काफी कुछ ट्राई किया है डिफरेंट अपने लिए, ड्रॉप लोकेशन से इन्होंने चेंज भी किया, लेकिन ये रूप टीम सोल का मैंने आज से पहले इस इवेंट के अंदर नहीं देखा। बीजीएमआईएस में हम लोगों ने देखा था टीम सोल अपने किल्स के और एग्रेशन के बेसिस के ऊपर लड़ती हुई नजर आती थी, लेकिन अब वही रूप कहीं ना कहीं वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत खुशी हो रही है देखते हुए। लेकिन एक प्लेयर को गिरा चुके हैं, टीजेबी के स्क्वाड मौजूद था और टीजेबी बिल्कुल टीम 52 के ऊपर ही मौजूद है, टीम सोल से 1-2 पायदान ऊपर ये मौजूद है और दोनों स्क्वाड्स आज के दिन के लिए फर्स्ट पेज के लिए लड़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन हेक्टर को जाना है, हेक्टर को अपने प्लेयर को रिवाइव भी करना है। यूएमपी 45 का इस्तेमाल कर रहे हैं, 25 बुलेट्स इनके पास मौजूद रहने वाली है, लेकिन टीजेबी के प्लेयर्स जिस एंगल्स पर मौजूद हैं वहां से उनको टेक डाउन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन नीचे की तरफ जाते हैं टीजेबी के प्लेयर, एफपीपी मोड के ऊपर शिफ्ट करते हैं, टीम सोल के प्लेयर गिराने में कामयाब हो जाते हैं, फ्री फायर का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल और प्लेयर को एलिमिनेट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन बैक एंड से टीजेबी के एक और प्लेयर आते हैं, 2 प्लेयर्स को गिराने में कामयाब रह जाते हैं। अक्षत को आना है, अक्षत को अब आना है आगे, लेकिन अक्षत को पता है कि अगर मैं यहां से निकला तो टीजेबी के लिन उनको एलिमिनेट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। टीम सोल के अक्षत अब आखिरी प्लेयर है, उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो किसी ना किसी तरह कुछ ना कुछ कर कोई जादुई शक्तियां इस्तेमाल कर रिवाइव दे ओमेगा को, लेकिन आई डोंट बिलीव कि ये ऐसा होता हुआ दिखाई देगा। गॉब्लिन भी बैकएंड के ऊपर मौजूद रहते हैं, गॉब्लिन ने एक नॉक निकालने में कामयाब, दूसरा नॉक भी निकालने की कोशिश की जाएगी, लेकिन क्रॉसएयर लड़खड़ाते हैं। अभी तक प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, बैकएंड से प्रेशर आता हुआ, काफी हद तक प्रेशर का सामना करते हुए एक और प्लेयर को गिराते हैं, लेकिन बैकएंड से टीजेबी के मजीद प्लेयर इस कहानी पर एक फुल स्टॉप लगाते हैं और टीम सोल को इस मैच से एलिमिनेट किया जाता है। गॉब्लिन का वो स्प्रे लड़खड़ाना इस पूरी टीम को इस मैच से बाहर कर देता है। गॉब्लिन अगर वहां पर वो नॉब निकाल लेते तो मेरे ख्याल से अभी सोल इस मैच में सरवाइव कर रही होती, लेकिन आई विश देम वेरी बेस्ट ऑफ लक। हेट देने की किसी भी टीम को जरूरत नहीं है। टीम स्टालवर्ट ई-स्पोर्ट्स भी अपना एक प्लेयर गवा चुकी है, अलादीन एक्शन ऑलरेडी लॉबी जा चुके हैं और एक्शन का लॉस टीम स्टालवर्ट ई-स्पोर्ट्स को काफी महंगा जरूर पड़ेगा। से नॉक हो जाता ना तुरंत, दे हैव अ गुड पॉइंट, लेकिन कर देता है इस मैच में परफॉर्म करना पिछले मैच से ज्यादा जरूरी है अलादीन, क्योंकि वो लीड, वो जो थ्रोन है वो उनको अपने पास ही रखना है, उस पर डेरा उनको जमाना है और उसको अपने लिए ही महसूस रखना है उनको। बिल्कुल जी, एंटी गॉब्लिन इन द चैट, एंटी गॉब्लिन इन द चैट। अरे यार अच्छा ट्राई था रे उसका, अगर होलो से नॉक होता ना होना चाहूंगा, लेकिन फिलहाल 87 को देखें आप, होलो से नॉक होता ना 100% भाई मार देता, 1v4 कर देता। उसमें अब अपना स्टांस चेंज कर चुके हैं। कुछ मिनटों पहले हमने देखा कि आरएससी होलो से वो थोड़ा 87 लेफ्ट राइट हो गया। अब आप देखें कि आरएससी वो नॉक हो जाता ना, होलो से पहले कनेक्शन बन जाता ना, ऐसा उनके करीब जा रही है। तो ये डिफरेंस देखें, ये शिफ्ट देखें किस तरह से ये जो दोनों के मोमेंटम का जो है वो बनता बना रहेगा। लेकिन लाइटनिंग यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत स्टेल्थ मोड का यहाँ पर जो मुजाहरा किया जाता है उनकी तरफ से, इंतजार कर रहे थे, टीपीपी ले रहे थे, अब बैठे आराम से, और जैसे ही उनकी तरफ कुछ किया जाता है 87 के प्लेयर की तरफ से, उनकी तरफ जैसे वो आगे बढ़ते हैं, ग्रेनेड लेकर जो है वो ग्रेनेड थ्रो करना चाह रहे होते हैं, उसी एडवांटेज को लैग हुआ रे गॉब्लिन का, दिख गया हो तो थोड़ा मूवमेंट अटक गया था ना, मूवमेंट अटक गया था ना, अब ऐसे ही जाया जा रहा था मेरे साथ, जो मूवमेंट अटक गया था, डिफेंसिव थी क्रॉस एरिया तो क्रॉस से मेरे को लगता है मूवमेंट लैग हो, जब पहले जोन वहीं था यार जोन वहीं था रे, चुम्मा से चर्च पे जोन था रे, अबे जोन वहीं था रे, हट बे, जोन वहीं था बे, अबे ऑलमोस्ट 1v4 था बे गॉब्लिन का। पीछे वाले बे को भी, मतलब जो पीछे घूम के मारा था उसके टाइम पे भी साले का वो क्या कहते हैं, रिलोड आ गया तो सारा सामने वाला मार दिया। अगर
रीलोड नहीं रहता तो उसको भी ले लेता। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कोशिशें जब की पलट जा के रही मारा ना हैं एंड टीम्स वाले की तरफ से। टीम बॉक्स गेमिंग के एंड वाले प्लेयर्स को भी जब एक पलट के मारा ना रोटेशन इन तब प्ले रीलोड आ दिखाते गया हुए उसका, और देखा बॉक्स दोनों गेमिंग गन का। यूएमपी में बॉक्स गेमिंग 5-6 गोली को भी थी, अच्छे स्कार में पॉइंट्स 9 की गोली अशद थी। जरूरत पड़ने वाली है इस इसकी मैच आदत में, लेकिन तक अभी के लिए तो टीजेबी के प्लेयर्स मजीद किल गोलियां स्कोरिंग खत्म करने की हो कोशिश करेंगे। टीम सोल के स्क्वाड के 4 किल्स अपने बैकपैक में लेने के बाद टीम Black बॉक्स था, वो गेमिंग clear दिखा, को इस हाँ मैच से ना। बाहर भेजने के लिए वो आ चुके हैं, लेकिन देखते हैं कि side क्या ये movement प्लान मतलब काम करता है। movement बॉक्स अटका है गेमिंग तो के प्लेयर्स के black साथ लड़ना इतना आसान नहीं रहने वाला। टीजेबी But भाई ऑलरेडी NT सेकंड है, पेज NT पर है। काफी नीचे आ चुकी है। हैश 14-15 पर ये स्क्वाड मौजूद है NT और है, टीम NT। बॉक्स गेमिंग ऑन द अदर हैंड वो NT in the काफी ज्यादा chat, NT बेहतर for नजर what? आए हमें कल के दिन खेलते हुए, लेकिन अभी के लिए versus बॉक्स गेमिंग के TJB। प्लेयर्स काफी ओहो, ध्यान ओहो, से ओहो। खेलते हुए नेट्स का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। वैसे में टीजेबी भाई के मार रहे- शाव को टेक डाउन एकदम करने में smooth कामयाब। conditioner बॉक्स की तरह, के वैसे ट्रिस में में conditioner की अभी तरह। के लिए मॉलों से बचते हुए, लेकिन No उनके प्लेयर promotions। नीचे जो नॉक है उनको रिवाइवल का प्रोसेस भी इनिशियलाइज कर दिया जाएगा। टीजीबी के प्लेयर्स आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए और अपने कदम जमाते हुए मजीद घेरा तंग करते हुए टीम बॉक्स गेमिंग के प्लेयर्स के लिए, लेकिन बहुत ही खूबसूरत नेट का इस्तेमाल किया जाता है बॉक्स गेमिंग के प्लेयर्स की तरफ से। ट्रिस भी आप नीचे की तरफ जाएंगे, मौके का फायदा उठाना चाहते हैं एंड दिस इज द राइट टाइम टू रश इन। और टीजेबी के प्लेयर्स अब एनहाइलेट हो सकते हैं इस मैच से। एक और बुरा मैच जा सकता है टीजीबी के लिए। 2 प्लेयर्स एलिमिनेट हो चुके हैं, 2 प्लेयर्स अभी नॉक हैं, 1 प्लेयर इस मैच से एलिमिनेट हो चुके हैं। आखिरी प्लेयर लिन को कुछ करना पड़ेगा, लेकिन 4 बंदों के आगे कैसे कुछ कर पाएंगे मैं देखना चाहता हूं। एक प्लेयर को क्या एलिमिनेट कर पाएंगे। बॉक्स गेमिंग के प्लेयर को लो करते हैं और खुद इस मैच से एलिमिनेट हो जाते हैं। टीम बॉक्स गेमिंग वंस अगेन 4 किल्स अपने बैकपैक में लेकर जाती हुई। टीजेबी टीम सोल के ऊपर 4 किल स्कोर करती है और टीम बॉक्स टीजीबी के ऊपर 4 किल स्कोर करती है। अब मैं देखना चाहता हूं टीम बॉक्स के 4 किल्स कौन लेकर जाता है, क्योंकि ये एक लूप यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है इस मैच में। लेकिन ये वो फाइट थी जहाँ पर टीम सोल के प्लेयर्स अपनी जान गंवा बैठते हैं और एक वो स्प्रे, अगर एक बुलेट वहां पर कनेक्ट हो जाती गॉब्लिन की तरफ से तो कहानी बहुत मुख्तलिफ हो सकती थी। लेकिन टीजीबी के प्लेयर्स ने बहुत अच्छे तरीके से सामना किया था टीम सोल के प्लेयर्स का। इंडीड जेवे बैक टू बैक पिछले मैच के अंदर टीम स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स के अगेंस्ट आते हैं और बैक टू बैक के प्लेयर्स ने कोशिश की थी टीम स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स को एलिमिनेट करने की। रोटेशंस बहुत अच्छी रही बैक टू बैक के पिछले मैच में, लेकिन अभी के लिए किसी से फाइट लेना नहीं पसंद करेंगे। मिरामार के सर्कल्स बहुत ही एक हार्ड शिफ्ट होता है, ऑलमोस्ट हर सर्कल ही ज्यादातर हार्ड शिफ्ट लेकर जाता है। दूसरा शिफ्ट सेंट्रलाइज होता है और उसके बाद फिर हार्ड शिफ्ट का सिलसिला जारी रहता है। जैसा कि आपने देखा सेकेंड सर्कल शिफ्ट एक सेंट्रलाइज्ड शिफ्ट था और अब एक हार्ड शिफ्ट आएगा जो कि आई बिलीव नॉर्दर्न साइड के ऊपर जाएगा। अब देखते हैं सर्कल क्या हमें सही साबित करता है या गलत साबित करता है। बॉक्स गेमिंग के प्लेयर्स बजाहिर इस सर्कल शिफ्ट के बिल्कुल बीच में मौजूद हैं। टीम 52 अपने आप को इस सारे मंजर से साइड पर रखती हुई थोड़ा सा कॉर्नर्ड है और इस सारे क्लस्टर से थोड़ा सा अलग होकर खेलना चाहते हैं, लेकिन VGS वर्चुअल गेमिंग स्क्वाड उनकी जान नहीं छोड़ता। मैच में पहले मैच में हमने देखा इनके जो ड्रॉप्स हैं वो भी ये लोग साथ ही लेते हुए हम लोगों को पिछले मैच में दिखाई दिए। इस मैच के अंदर भी एक दूसरे के साथ साथ ही रोटेशंस करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये स्क्वाड जो कि अभी अलादीन हमारी स्क्रीन पर मौजूद है टीम फाल्कन्स का, इनके लिए ये मैच बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बनने वाला है और कुछ नया, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स इनको करना पड़ेगा। स्टॉलवर्ट ईस्पोर्ट्स को अगर थोड़ा सा भी रूम दिया गया खेलने का तो वो मजीद अपनी लीड को आगे बढ़ा ले जाएंगे। एंड हमने देखा है PMPLs में, PMPL साउथ एशिया के अंदर के स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स को अगर आप थोड़ी सी छूट दें तो फिर वो आपके पकड़ में वापस नहीं आते। और कुछ ही स्टालवर्ट स्पोर्ट्स को एक बार मौका दिया जाए तो उनको फिर दोबारा से कैटर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस बात से तो मैं एग्री करूंगा आपकी। लेकिन अभी देखिए आपके तमाम जो टीम्स हैं लॉबी में, जिस तरह से फाल्कन्स है, जी है, जो कि अभी तक उस पहले पायदान के खेल में जो वो बराबर के हिस्सेदार हैं, ये तमाम टीम्स भी हमें बहुत ज़्यादा फॉर्म में नजर आ रही हैं। तो मौका इतना आसानी से मिलेगा भी नहीं। टीम एसटी को छीनना पड़ेगा यहाँ पर। सब एसटी को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा उनको यहाँ पर जो है वो, या तो मैं कहना चाहूँगा जो मेरा जो एक पर्सनल एक मशवरा है जो कि RSG कर रही है, जिस तरह से RSG खेल रही है वैसा खेल यहाँ पर दिखाना पड़ेगा इस टीम को। थोड़ा सा डिफेंसिव रहे, इंतजार करें लास्ट मोमेंट्स तक का और फिर जो है वो मोमेंट पे जो वो किल्स निकालें, क्योंकि वो जो 15 का जो एक नंबर होता है जो आपको मिलता है चिकन डिनर के बाद, वो एक बहुत बड़ा है। टीम RSG उस 15 के नंबर के लिए ही खेलती हुई नजर आ रही है, इसी वजह से वो एक अच्छा कमबैक कर पाए। टीम अग्रेसिव हो जाते हैं समटाइम्स और उनको पनिशमेंट भी मिलती है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें, हमारे सामने स्क्रीन पे मौजूद है टीम वाइल्डकैट्स, उनके सामने फॉर राइवल्स दोनों टीम जिसके सामने जूसी भी नजर आएगी और फाइट लेने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। बिल्कुल आदिन, हर टीम्स की तरफ से हर टीम की तरफ से फाइट लेने की भरपूर कोशिश की जा रही है। फॉर राइवल्स को भी पॉइंट्स अपने लिए बेहतरीन चाहिए और
जितनी टीम्स पहले पेज के ऊपर मौजूद हैं, खास सेकंड पेज से यार एक टीम उठकर मैं अभी भी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, इस बात को हजम नहीं कर पा रहा कि वर्चुअल गेमिंग स्क्वाड ने पिछले मैच में एक बहुत बेहतरीन अपने लिए उस मैच को बनाया, उस मैच के अंदर पहला पायदान वो लेकर गए हैं, ये चीज हजम ही नहीं की जा रही। लेकिन अभी के लिए टीम इस्तानबुल वाइल्डकैट्स थोड़ा सा पीछे की तरफ आ जाते हैं, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर स्प्रे देते हैं और लेजर स्प्रे दिया जाता है राइवल्स के वो की ओपी की तरफ से। प्लेयर एक नॉक एक्सचेंज करने के बाद थोड़ा से फ्लैंक्स अडॉप्ट करना चाहते हैं या मे बी शायद सर्कल को मद्देनजर रखते हुए अपनी पोजीशन को चेंज करें और फर्दर डीप इनसाइड द सर्कल हमें जाते हुए नजर आए। सर्कल के अंदर सारी की सारी टीम्स शुमार हो चुकी हैं। टीम 52 अभी भी सरवाइव कर रही है, पिछले मैच की तरह इस मैच के अंदर भी उनको ऑलमोस्ट 12 से 15 पॉइंट्स उनको निकालने हैं अगर वो पहले पेज तक जाना चाहते हैं। नहीं अगर ऐसा नहीं होता तो मजीद दूरियां बढ़ती हुई नजर आएंगी। 52 अभी भी सर्कल के अंदर मौजूद है। DWG का स्क्वाड एक बहुत अच्छे जगह पर है। बॉक्स गेमिंग जिस प्लेस के ऊपर मौजूद है जहां पर उनकी प्लेसमेंट है स्क्वाड की वो बहुत ही ज्यादा जो एक शिफ्ट है जो टीम्स ने लेना है, एक जो क्लस्टर फॉर्म हुआ है, टीम RSG ने वहां से आना है, बड़े नाम है, सारे ऐसे नाम है जो कि टीम बॉक्स गेमिंग को कॉन्टेस्ट जरूर कर सकते हैं और अगर वहां पर किल स्कोरिंग बॉक्स गेमिंग की तरफ से दी जाती है, गेट कीप किया जाता है तो मेरे ख्याल से खातिर खा किल्स इस मैच से बॉक्स गेमिंग भी लेकर जा सकती है। बिल्कुल, लेकिन आप सर्कल का शिफ्ट देखें कितना अच्छा है। इस सर्कल के शिफ्ट के हिसाब से एसटी को एडवांटेज काफी मिलेगा और एसटी यहाँ पर क्लोज बिल्कुल वैम्पायर स्पोर्ट्स के भी, लेकिन वैम्पायर स्पोर्ट्स की डिफिकल्टी में इस तरह से आएंगे कि वो स्प्लिट में मौजूद है और उनके ऊपर नॉक्स भी निकल सकते हैं, लेकिन किल फीड में आप देखें इस वक्त के लिए पावरफुल यहाँ पे एलिमिनेट होते हैं। फाल्कन स्पोर्ट्स अपना एक प्लेयर गंवाते हुए नजर आएगी, टीम फाल्कन इनफैक्ट एलिमिनेट भी हो जाती है। 6 ही पॉइंट्स उनको मिलेंगे जरूर इस सारे मैच के। ओके, DenizBank Wildcats अभी सर्वाइव कर रही है। मेरे सामने डिफरेंट स्क्रीन, आई एम रियली सॉरी, जरूर गई थी और मैंने उसको जब वो कास्ट कर दिया तो मैं अभी DenizBank Wildcats की बात करूं, एक्सरे भाई ने एक्सरे उतार दिया सामने से, उनकी तरफ से स्प्रे में कनेक्शन को मिलता है, नॉक भी निकालते हैं, फिर से बाकी लेंगे पुश कर रहे भाई, डब्ल्यू दबा रहे, कंफर्म करने की कोशिश की जाती है, एग्रेशन दिखाया जाता है। ये देखना फिलहाल 4 डबल वर्सेस फाल्कन की फाइट बनती हुई हमारे सामने। मैंने फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया कि 4 फाल्कन के प्लेयर्स एलिमिनेट हो जाते हैं, लेकिन देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता। लेट्स सी डॉक्टर स्ट्रेंज वहां फाइट चल रहा है, बताओ ना चुके और आपने ग्लासेस भी लगा रखी है, लेकिन देखते हैं टीम फाल्कन्स अगर तो इस मैच में इनिशियल्स में एलिमिनेट हो जाती है, अभी एलिमिनेट होते हैं, कोई प्लेसमेंट पॉइंट उनके बैकपैक में नहीं जाता, पॉइंट उनके पास एक है, सिर्फ वही लेकर जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन बहुत बुरा खड़ाएगी ये स्क्वाड अगर इस मैच में ये इनिशियल्स में एलिमिनेट हो जाती है। एक फ्यूचर मेरी साइड से भी प्रेडिक्ट कर दिया जा चुका है, स्पॉइलर मिल चुके हैं, लेकिन इस्तानबुल वाइल्डकैट्स के अंदर सही जगह पर मौजूद, कुछ एक आधे नॉक्स भी निकाले, इनफैक्ट 2 किल्स भी स्कोर कर चुकी है एंड आई बिलीव RSG के स्क्वाड पर ही एग्जैक्टली उन्होंने ये किल्स स्कोर किए हैं। अभी के लिए इस्तानबुल वाइल्डकैट्स टीम RSG के मजीद 2 प्लेयर्स को टेक डाउन करना चाहेंगे। RSG पिछले मैच में भी अपने 2 प्लेयर्स को, 2 शहजादों को जल्दी गवा बैठी थी और एक और मजीद किल दिल पर लगा टीम RSG के प्लेयर्स के। RSG के GZ अब आखिरी प्लेयर सरवाइव कर रहे हैं और उनको अपने सर्वाइवल को यकीनी बनाना है और बज़ाहिर देखने में ऐसे ही लग रहा है कि टीम IWD के प्लेयर्स को अंदाजा नहीं है कि GZ एग्जैक्टली कहां पर मौजूद है। डीफॉक्स जा रहे हैं, देखना चाहता हूं मैं कि क्या वाकई ही स्पॉट किया जा चुका। जी लातन, मैं कहना चाह रहा हूँ कि लास्ट मैच में हमने देखा कि एक ऐसी टीम जो बॉटम पे मौजूद थी, चिकन निकाला था, जिसका नाम अगर मैं फिर से दोहराना चाहूँ तो इट वाज टीम वर्चुअल गेमिंग स्क्वाड। डू यू थिंक इस मैच में B2B भी चिकन निकाल सकती है? बिकॉज B2B उनके बिल्कुल शाना बशाना मौजूद है एट द बॉटम स्पॉट। हिस्ट्री जो यहाँ पे रकम हो जाएगी, लेकिन RSG वो एक पेट्रोल के डब्बे के पीछे यहाँ पर जो वो गैस कैन के पीछे यहाँ पर जो इसको कवर लेके प्रॉम्प्ट डाउन है, ये पहली बार देखा है हमने। लेकिन यहाँ पर थोड़ा महंगा पड़ सकता है गैस कैन के पीछे अगर वो कवर ले रहे हैं। आई थिंक तो अभी के लिए थोड़ा सा ब्लेंड होने की कोशिश कर रहे हैं उसी कैन के अंदर। टीम फाल्कन्स के प्लेयर एक फाइट के अंदर जूझते हुए, इस्तानबुल वाइल्डकैट्स के प्लेयर बैक एंड के ऊपर एलिमिनेट हो जाते हैं। टीम 4 राइवल्स के प्लेयर आ चुके हैं, फाल्कन्स के प्लेयर्स की तरफ से 2 प्लेयर्स को गिरा दिया जा चुका है, 3 किल्स ऑलरेडी स्कोर कर लिए जा चुके हैं टीम फाल्कन्स की तरफ से। पावरफुल अपनी कुछ शक्तियां इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी के लिए स्मोक्स का एक बहुत खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। पावरफुल और यूसुफ आखिरी प्लेयर्स सर्वाइव कर रहे हैं और इनके एक प्लेयर अभी भी नॉक है जिनको रिवाइवल दे दिया जाएगा। 4 राइवल्स को ज्यादा नुकसान पहुंचा है इस फाइट का इस
रश का। 4 राइवल्स के आखिरी प्लेयर अब सर्वाइव कर रहे हैं और एक किल सिर्फ ये लेकर जा पाए हैं इस फाइट से। सो एक बहुत बुरी ट्रेड रही है, काफी लॉस भी इनको हुआ है। फाल्कन्स भी ज्यादा देर तक इस जगह से फाइट लेने के बाद नहीं बच पाएगी। सर्कल काफी करीब है, लेकिन अगर आप मिनी मैप में देखें जो आपके स्क्रीन के बिल्कुल ऊपर आ रहा है राइट साइड पर, तो वहां पर एक और स्क्वाड भी मौजूद है। आई थिंक सो VGS का वो स्क्वाड है जो कि गेट कीप करना चाह रहा है टीम फाल्कन्स के प्लेयर को। फाल्कन्स जैसे ही 4 राइवल्स के इस प्लेयर को यहां से एलिमिनेट कर निकलेगी तो VGS इनके ऊपर किल स्कोरिंग करती हुई नजर आएगी। लेकिन अभी 4 राइवल्स के प्लेयर आते हैं, उसी का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, काफी ज्यादा लो HP करते हैं, उसका इस्तेमाल करती हुई टीम 4 राइवल्स को एलिमिनेट कर देगी। टीम RSG के आखिरी प्लेयर सर्वाइव जो कर रहे थे, टीम मॉर्फ के एक प्लेयर को एलिमिनेट करते हैं। एक सरप्राइज बैकस्टैब दिया जाता है उनकी तरफ से। टीम मॉर्फ के अभी भी 2 प्लेयर M416 का इस्तेमाल करते हुए रिज के बिल्कुल 2 रिज के बीच में मौजूद है। रिज के टॉप पर यूएससी बिल्कुल सामने स्कोरिंग अच्छी कर सकती है, लेकिन VPE का स्क्वाड था जो कि फाल्कन्स को अभी थोड़ी देर बाद एक मुश्किल सिचुएशन के अंदर ले आएगा। VPE ने कुछ खास परफॉर्मेंसेस नहीं दिखाए। वर्चुअल गेमिंग स्क्वाड जिन्होंने पिछले मैच में एक बहुत बेहतरीन चिकन डिनर लिया, वो इस मैच में हमें छोड़कर चले जाते हैं। कुछ रैंडम फायर्स का सामना करना पड़ रहा है, ये असल चैलेंज है। यहां से बाहर निकलना टीम फाल्कन्स के लिए एक असल इम्तिहान रहने वाला है। अभी 5 किल्स उनके पास आ चुके हैं। थोड़ा बहुत सर्वाइव अगर वो करते हैं, किसी ना किसी तरह उनको अपने आप को टॉप 5 के अंदर अलादीन लेकर ही आना है अगर वो टीम स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स के साथ इस मैच के बाद कंप्लीट करना चाहते हैं। बट लेकिन मुझे जिस तरह की सिचुएशन लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि फाल्कन्स एलिमिनेट हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हाइट पर देखें तो तक बिटू भी मौजूद है। बिटू यहाँ पर किल्स उठा सकते हैं, पर एसटी भी किल्स निकालेगी जरूर। एक बड़ा रिस्की मूव लिया जाएगा। इस रिस्की मूव के चलते कबो में जाने की कोशिश, पहला प्लेयर डाउन होता है। फाल्कन स्पोर्ट्स के ऊपर कहर बिरसाते हुए पीठ नजर आएगी। एक नॉक निकाला जाता है। दमार भी गाड़ी लेकर आगे जाना चाहते हैं। यूसुफ यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। पावरफुल एंड दमार सर्वाइव करते हुए दमार आगे जा रहे हैं। ये व्हीकल बस्ट हो सकता है, व्हीकल बस्ट हो सकता है। जी हां, स्टे पड़ेगा, काफी लोग पड़े होंगे। व्हीकल बस्ट के साथ दमार नॉक भी हो जाते हैं। सो कहीं ना कहीं वो सही साबित होती है। फाल्कन्स ऑलमोस्ट एलिमिनेशन की तरफ जो वो जा जरूर है। B2B जो कि उनको एलिमिनेट कर रही है। सो हिसाब लगाएं आदि यहाँ पर जो वो हालात किस तरह के बन रहे हैं। फिलहाल फाल्कन के पावरफुल गलत बहुत ही जगह पे मौजूद हैं और उनको अगर एसटी स्पॉट नहीं करती तो वैम्पायर स्पोर्ट्स कर लेगी, और वैम्पायर स्पोर्ट्स नहीं करती तो उनके हाइट पर मौजूद B2B इनको आसानी एलिमिनेट कर सकती है। लेकिन फिलहाल वो अपनी इस जिंदगी और मौत के बीच की कश्मकश को झेल रहे हैं। किल फीड के अंदर B2B के प्लेयर्स की तरफ से ऑनबा को नॉक किया जाता है और B2B अब अपना कहर डिफरेंट एरिया से बरसा रही है। लुक एट देम, सर्कल उनके बिल्कुल करीब ही मौजूद है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा, उसके उनको टीम से फाइट लेकर क्लियर आउट करना पड़ेगा। मैच और एक अच्छा जाएगा। जोन के एच पे 2 बंदे लाइव हैं, बैक क्लियर करते हैं तो टॉप 5 इजी। अब आखिरी प्लेयर पे जिंदा है, ऐसे जीत जाएगा बिल्कुल। और टीम 52 के प्लेयर्स भी कुछ सामना करना पड़ रहा है, कुछ टैग्स का उनको सामना करना पड़ रहा है। 52 अभी के लिए 3 प्लेयर्स उनके जिंदा हैं, इस लॉबी के अंदर मौजूद हैं। एक प्लेयर नॉक है और उनको भी रिवाइव दे दिया जा चुका है एक किल के साथ। टीम 52 अभी तक सर्वाइव करती हुई, लेकिन DWG के फॉरेस्ट नेट्स का इस्तेमाल करते हैं और मजीद अपने किल्स के अंदर इजाफा करने की कोशिश उनकी साइड से भी की जा रही है। वैम्पायर ईस्पोर्ट्स है, रेवन क्लॉ वंस अगेन अपने क्लॉज निकालते हुए और देखते हैं किसके सर पर ये क्लॉज अपना हाथ वो रखते हुए नजर आते हैं। फिलहाल टीम लेकिन बैक एंड से बैक टू बैक के प्लेयर्स आते हैं। RSG के यार 2 मैच खराब गए, बट वो चाइना है यार। RSG PL टीम है, स्पोर्ट्स के भरोसा नहीं है भाई किसको पता। आखिरी 2 शहजादे, आखिरी 2 जाबाज मौजूद है यहाँ पर जो कि अपनी लीड को बरकरार रखना चाहते हैं ओवरऑल लीडर बोर्ड को, लेकिन ज्यादा आसान नहीं रहने वाला। किल स्विच की तरफ से एक प्लेयर को नॉक किया जाता है, बहुत बेहतरीन तरीके से किया जाता है। बैक टू बैक की तरफ से दूसरी दफा टीम स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स के अगेंस्ट ये खेलने के लिए आते हैं और पिछले मैच के अंदर भी ऐसी ही एक मुमकिन फाइट बनती हुई नजर आई जिसके इम्कानात टीम स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स से एलिमिनेट किए थे और रोटेट कर लिया था राइट ऑन टाइम। लेकिन इस दफा बैक टू बैक उनको बख्शना बिल्कुल भी नहीं चाहते। टीम 52 के पेन आखिरी प्लेयर है, आहिस्ता 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 कोशिश कर रहे हैं सर्कल के अंदर बनाने की, काफी होशियारी से प्रोन गेम खेलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन रेवन वंस अगेन आगे बढ़ते हुए एलिमिनेट कर दिया जा चुका है। पिका को भी जो कि बगी के अंदर ब्लेंड होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रीप्ले निकल कर आता हुआ टीम NGX के प्लेयर, ये वो मोमेंट था जहां पर वर्चुअल गेमिंग स्क्वाड के प्लेयर्स को एलिमिनेट किया जाता है। क्या ही 1v1 लिया गया, दैट मूवमेंट वाज अमेजिंग और कैसे डांस करते हुए उन्होंने इस प्लेयर को गिराया। अभी के लिए DWG 2 प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, 5 के बॉक्स गेमिंग के प्लेयर वैम्पायर लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। वैम्पायर ईस्पोर्ट्स के स्टोन्ड चारों के चारों प्लेयर्स जिंदा और 2 किल्स भी बैक में 87 के प्लेयर को स्पॉट डाउन करते हैं। आउटसाइड इन द ओपन नॉक भी रजिस्टर कर दिया जाता है। 87
Aton Esports on the verge of elimination, अपने आखिरी प्लेयर के साथ सर्वाइव कर रही है। वैम्पायर ईस्पोर्ट्स को सर्कल के अंदर जाना है। साउथर्न साइड पर अगर आप देखें तो एक बहुत एक्सट्रीम क्लस्टर फॉर्मेशन बन चुकी है, लेकिन राइट ऑन टाइम बगी लेकर रवानगी इख्तियार करते हुए बिल्कुल आंखों के सामने से बैक टू बैक के प्लेयर, लेकिन ओवर एग्रेसिव नहीं होना। डीडब्ल्यूजी के फॉरेस्ट थोड़ा सा ओवर एग्रेसिव अगर होते हैं तो चारों के चारों बंदों का फोकस वो छीनते हुए नजर आएंगे। बैक टू बैक के प्ले स्पॉट डाउन करते हैं और वही हुआ जिसका डर था। काफी ज्यादा नॉइज जनरेट की जाती है और डीडब्ल्यूजी के आखिरी प्लेयर को भी इस मैच से एलिमिनेट कर दिया जाता है। आखिरी 6 टीम्स अभी तक सर्वाइव कर रही है। अलादीन 15 प्लेयर्स अभी तक बचे हैं और बैक टू बैक इज लुकिंग टू गुड। और जो आपने बात कही थी वो सर आंखों पर रखी जाती है उनकी तरफ से। बैक टू बैक इज सो क्लोज फॉर द चिकन डिनर। मेरे ख्याल से 2 ही स्क्वाड सिर्फ मौजूद है जिनके चारों के चारों प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, वैम्पायर ईस्पोर्ट्स और टीम बैक टू बैक। वैम्पायर ईस्पोर्ट्स बैक टू बैक की तरफ से बहुत जबरदस्त खेला जा रहा है। वैम्पायर ईस्पोर्ट्स के पास यहाँ पे 3 किल्स मौजूद। बैक टू बैक यहाँ पर जो किल्स के नंबर मल्टीप्लाई करके बिकॉज़ उनकी तरफ से इतने किल्स पहले कहीं नहीं निकाले गए किसी मैच के अंदर। लेकिन बात करिए बॉक्स गेमिंग की कितने मौजूद थे कि नॉक करवाते हुए, लेकिन बॉक्स गेमिंग के लिए सबसे बड़ी थ्रेट है उनके ईस्टर्न साइड पे मौजूद 87 इस वक्त 3 प्लेयर्स उनके भी 2 प्लेयर्स उनके भी जिंदा हैं। और वहीं पर अगर बात करें एक और साइड पर उनके मॉर्फ के एक बचे हुए प्लेयर भी हैं, लेकिन फिलहाल B2B किस तरह से फाइट को प्रोसीड करती देखना बहुत जरूरी है। 4 प्लेयर्स ही वैम्पायर के भी जिंदा। वैम्पायर और B2B अगर आपस में लड़ते हैं फिर शायद लॉबी में चिकन डिनर कोई और लेकर जाए, लेकिन अगर वैम्पायर और B2B की तरफ से मेक श्योर किया जाता है कि सराउंडिंग का चिकन है, जोन देखो करो का जोन होल्ड देखो, तो मेरे ख्याल से 4 फाइट हमें एंड में देखने को मिलेगी जरूर। लेकिन फिलहाल एट्रस में नॉक करते हुए सना आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। बॉक्स के ऊपर कैन बरसाने की कोशिश करते हुए 87 के प्लेयर्स आगे बढ़ रहे हैं। बॉक्स गेमिंग इस वक्त उनको डिफेंड करना पड़ेगा, लेकिन पैकेट से डैमेज पड़ता हुआ सना का हो जाएगा। मॉर्फ के प्लेयर ऊपर की तरफ आते हैं, B2B को नॉक करते हुए उनको 87 आगे बढ़ती हुई टीम 87 यहां पर अब 87 दिक्कतों में आ चुके हैं। तो सर्कल उनको इस वक्त डैमेज दे रहा है, सर्कल डैमेज दे रहा है। किल्स डिनाई करने की कोशिश की जाएगी या किल देते हुए नजर आएंगे। किल डिनाई किया जाता है, जोन के चलते ही एलिमिनेट हो जाएंगे। इट्स अ परफेक्ट 4-4 फाइट नाउ जहां पर B2B और वैम्पायर के बीच में अब चिकन डिनर की एक तोड़ लग चुकी है। अरे इनका ऑफ एंगल का है और यहाँ पर चिकन डिनर किसके खाते में रजिस्टर होने वाला है इसका फैसला कुछ ही घड़ी में कर लिया जाएगा। ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट में इस मैच का फातेह निकलकर सामने आने वाला है। बैक टू बैक लुकिंग टू गुड इन दिस मैच। चारों के चारों प्लेयर्स को अपने सर्वाइव भी करवाते हैं। वैम्पायर ईस्पोर्ट्स अपने लिए मोमेंटम लेकर जाना चाहते हैं। दोनों स्क्वाड्स के रीजंस जस्टिफाइड है इस मैच के चिकन डिनर के लिए, लेकिन दर्द भरी कहानी ये है कि इस मैच से टीम जिंदा और ईस्पोर्ट्स फॉर्मेशंस बहुत ही खूबसूरत है। तीनों के तीनों खिलाड़ी एक ही साथ खेलते हुए स्पोर्ट्स के बैक टू बैक के प्लेयर्स एक स्प्लिट फॉर्मेशन के अंदर जा चुके हैं और कोशिश की जा रही है ज्यादा से ज्यादा एरिया होल्ड करने की, ज्यादा से ज्यादा एरिया अपने लिए महसूस किया जाए। एक सनसनीखेज मुकाबला बनता हुआ टीम बैक टू बैक के प्लेयर्स का वर्सेस टीम वैम्पायर ईस्पोर्ट्स। वैम्पायर्स को ये खून चूसना ही पड़ेगा अगर तो वो इस मैच से अच्छे पॉइंट्स और ओवरऑल लीडर बोर्ड के ऊपर एक अच्छे स्पॉट के ऊपर आना चाहते हैं, क्योंकि स्क्वाड ने जैसे परफॉर्म किया था पहले दिन वैसा किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। स्मोक्स का कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है वैम्पायर ईस्पोर्ट्स के प्लेयर्स की तरफ से। बैक टू बैक के प्लेयर्स कोशिश कर रहे हैं इस चीज को प्रेडिक्ट करने की कि कहां से वैम्पायर ईस्पोर्ट्स के प्लेयर आएंगे। नेट्स किसी के भी पास मौजूद नहीं है, अगर मौजूद भी है तो वो संभाले रखे हुए हैं सही वक्त के लिए, लेकिन वो सही वक्त कब आएगा इस चीज का हमें अंदाजा नहीं है। लेकिन सर्कल एक सही शिफ्ट देखते हैं लेकर जाता है। अगर सेंट्रलाइज्ड एक शिफ्ट जाता है सर्कल का तो दोनों ही स्क्वाड्स को सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। अभी के लिए सोचा जा रहा है, देखा जा रहा है सर्कल को, लेकिन पैन थ्रो करते हुए नजर आते हैं और अपने एग्रेशन का मुजाहिरा भी कर रहे हैं। 2 प्लेयर्स बैक टू बैक के रिच के ऊपर है, ओके व्हीकल के अंदर बैठा जाता है, साथ ही साथ बाहर भी निकल आते हैं। बैक टू बैक के एक प्लेयर JV की पोजीशन बहुत जबरदस्त है, वो अपने आप को स्टेल्थी रखना चाहता है, लेकिन पोलो आहिस्ता आहिस्ता उस हार्ड कवर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। व्हीकल की सूरत में कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा एरिया सर्कल के अंदर होल्ड किया जाए। वैम्पायर ईस्पोर्ट्स अभी तक कोई अननेसेसरी मूवमेंट्स नहीं कर रही, कोई भी पीक्स उनकी तरफ से नहीं दी जा रही, लेकिन बैक टू बैक के किल स्विच ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। M416 मौजूद है, हार्ड कवर भी ऑलमोस्ट उनके पास एक गाड़ी की सूरत में आ चुका है। लुक एट द स्ट्रेटजी अलादीन, दिस वाज टू गुड। एक प्लेयर पहले दूसरे प्लेयर के आगे गाड़ी लगाता है, फिर पीछे जो प्लेयर है वो आगे जाता है उसके, ताकि ज्यादा एरिया होल्ड किया जाए। बैक टू बैक का ये रूप कहां पर था पिछले 2 दिनों से? आज के दिन बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस ये निकालने जा रहे हैं। अगर इस मैच का चिकन डिनर लेकर जाते हैं, ये दूसरा मिरेकल होगा एक ही दिन में 2 मिरेकल से। वैम्पायर ईस्पोर्ट्स के एक प्लेयर को गिराने में कामयाब, 9 किल्स ऑलरेडी ये लोग अपने बैक में लेकर जा चुके हैं। वैम्पायर ईस्पोर्ट्स 3 किल के साथ मौजूद है, स्पॉट डाउन किया जाता है, लेकिन बुलेट्स अनफॉर्चुनेटली कलेक्ट नहीं करते। बैक टू बैक एक प्लेयर को कामयाब, वैम्पायर ईस्पोर्ट्स 2 प्लेयर्स डाउन हो चुके हैं। इसी के साथ एग्रेस करते हुए पोलो भी आगे बढ़ रहे हैं।
खूबसूरत नजर आ रही वैम्पायर स्पोर्ट्स के तीनों प्लेयर्स मौजूद है, 2 प्लेयर्स नॉकडाउन है, 1v2 सिचुएशन बन चुकी है यहाँ पर वैम्पायर स्पोर्ट्स के स्टोर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा लो रेंज में बैक टू बैक के हाथ में ये चिकन डिनर जाता है, लेकिन वैम्पायर स्पोर्ट्स के काफी ज्यादा करीब आते हुए एलिमिनेट करेंगे और बैक टू बैक इस मैच का चिकन डिनर बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने बैकपैक में लेकर जाती हुई लीडर बोर्ड के नीचे। भाई वो पीक शॉट जो मारा एकेएम का परफॉर्मेंस आज के यार, वो गाड़ी कितनी भारी पड़ी है, उनको गाड़ी फोड़ के नॉक हो गए। लेकर गई है और पूरी लॉबी में उन्होंने एक बंदा गाड़ी से नॉक हो गया ब्लास्ट नीचे है तो क्या फर्क पड़ता है, माफ कर दे, हम भी तो खेल भाई भाई पीछे फाड़ देगा भाई। खूबसूरत परफॉर्मेंस चला अच्छा है, बैक टू बैक बिल्कुल जी उनकी तरफ से बताया जाता है नीचे है मगर पीछे नहीं है, और यहाँ पर जब चिकन लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं हमें इस पूरे ही मैच के अंदर जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई जाती है पीटीपी की तरफ से। भाई वो एकेएम का जो 1v1 निकाला उन्होंने वो बहुत ही शानदार था। एकेएम का पीक खतरनाक था भाई, चाहूंगा क्या इंटेंस मैचेस जा रहे आज, ना सिर्फ 2 पॉइंट्स लेकर जाएगा बल्कि इतना कॉन्फिडेंस बढ़ाने भाई, क्या इंटेंस मैचेस जा रहे हैं ना आज। पॉइंट्स टेबल देखते हुए वैम्पायर भी ऊपर आ गई, अब तो वैम्पायर गेमिंग भी ऊपर आ गई है भाई। अब कोई भी जीत सकता है, पॉइंट टेबल देखा। अरे भाई 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 डेंजर पॉइंट टेबल हो गए। एसटी 159 ठीक है फर्स्ट पे, फाल्कन 149 सेकंड पे, वैम्पायर स्पोर्ट्स 137 थर्ड पे, आरएसजी 129 फोर्थ पे, डामवान गेमिंग फिफ्थ पे 129, स्नैक्स 140। ठीक है भाई, स्टिकर ओनली कर देता हूँ, ठीक है भाई। मतलब मैं दूसरे बाहर की टीम का नाम ले रहा हूँ तो उसमें भी तुमको प्रॉब्लम है, हाँ बाहर की टीम का नाम ले रहा हूँ उसमें भी तुमको प्रॉब्लम है, ठीक है भाई। कोई भी जीते यार, अपने को क्या, अपन तो चाहते थे सोल जीते, बट कोई नहीं, इस बार नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम देखते क्या होता। इस बार बस अच्छे प्लेस पे एंड कर जाए वो अपने को मेन है। बाकी कोई भी टीम जीता यार, अपने को क्या भाई, तुम पनौती बोल रहे हो यार, ऐसा यार गलत बात है यार, बहुत गंदी बात है भाई, तुम पाप लगेगा तुम किसी को पनौती बोल रहे हो, छी छी भाई। भाई इंटेंस हुआ भाई, इंटेंस हुआ भाई। आरएसजी का क्या हुआ फिर, आरएसजी का भाई अभी देखो 4 मैच में कैसा कमबैक कर रहे। स्नैक्स प्रेडिक्ट वीपी, अरे भाई इंटेंस हुआ भाई, 1v1 हुआ, ठीक है मेरा प्रेडिक्शन सही हो सकता था। फिर ऐसा तो भाई एक सेकंड रुक, कल मैंने बहुत कुछ प्रेडिक्ट किया, हाँ कल मैंने तो बहुत कुछ प्रेडिक्ट किया, कल जो बंदे प्रेडिक्ट नहीं करे थे उनका प्रेडिक्शन रॉन्ग, मतलब तुम सब पनौती हो, गलत बात है यार। कल मैंने इतने अच्छे प्रेडिक्शंस दिए, तब तुमने किसी ने चैट में नहीं लिखा पनौती बोल के, मतलब तुम सब पनौती थे इसके लिए नहीं लिखा ना, ठीक है आज तुम बदला ले रहे हो ना, ठीक है भाई ठीक है, आता है सबका टाइम आता है। अभी 4 मैचेस बाकी है, 4 मैचेस बाकी है भाई, टेंशन मत लो। वेलकम बैक खवातीन और खुशामदीद करेंगे एक बार फिर अभी तो लोगों को, और एक बार फिर से खवातीन और हमारे साथ मौजूद हैं एसन भाई, और एसन वेलकम टू द स्ट्रीम। आप भी चश्मा लगा के माशाल्लाह, और आपकी भी स्क्रीन में ऐसे देख सकता हूं, आपके भी सारे वो टैब्स हैं वो मुझे नजर आ रहे हैं। तो एक बार फिर से शुक्रिया अदा करेंगे आप सभी लोगों का यहाँ पर आने का, लेकिन एक और हमारे जो पार्टनर है, हमारे जो स्मार्टफोन पार्टनर है, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सोनी एक्सपीरिया ऑफिशियल पार्टनर, ऑफिशियल स्मार्टफोन पार्टनर, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस इवेंट हैपन। इस तरह का जो एक शानदार इवेंट है उसको पॉसिबल बनाने का कोशिश करें। लेकिन एसन वेलकम बैक, मैच रैंकिंग की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा जरा डिफाइन कर दें, एक्सप्लेन करते हैं जरा व्यूअर्स को ये मैच रैंकिंग्स। थैंक यू सो मच अलादीन, एंड दोस्तों एक दफा फिर से वेलकम बैक मेरी तरफ से भी आपको, लेकिन बैक अरे कहां गए आखिरकार चिकन डिनर आता हुआ। अरे वो चश्मा पहना गायब हो गए लोग। 15 प्लेसमेंट पॉइंट्स, 13 एलिमिनेशन पॉइंट्स, 28 पॉइंट्स का एक बेहतरीन मैच इस टीम ने निकाला है अपने लिए। दूसरी तरफ वैम्पायर ईस्पोर्ट्स की तरफ से भी एक कमबैक मैच आता हुआ, 16 पॉइंट्स उनके भी निकल के आते हैं। अरे मैं चश्मा पहना ये लोग गायब हो गए। फॉर एक इंटेंस बैटल, एक प्रोलॉन्ग्ड इंटेंस बैटल जो है वो हम दोनों टीम्स के दरमियान मुलाहिजा कर चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ एटॉन चंडीगढ़ तो आई नहीं, चंडीगढ़ तो
काला चचमा तेनू काला चचमा जचदा ए जचदा ए कोरे मुखड़े ते तेनू काला चचमा जचदा ए कोरे मुखड़े ते कास्टर यार कहाँ गए? सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर नकली से नखरे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर काला काला चश्मा जचता तेरे मुखड़े पे जैसे काला दिल जचता है तेरे चेहरे पे नहीं तो 10,000 लड़के तो मार ही देती होगी तू दिन में जैसे 36 फिरते हैं मेरे वर्गी और न होनी तू मुंडा बिल्कुल देसी है मैं कटदी ना तो सोनी में हो गई हम मुंडे सुन सुन के। ठीक है, सब जने क्या करो बताए? अभी जैसे बीट ड्रॉप होगा ना, सब जने ऐसा मुंडी आगे आगे करो, बैठे घर में बैठे बैठे करो, मम्मी आगे बोलना क्या हो रहा है, दौरे पड़ रहे, रेडी हो जाओ, बीट ड्रॉप होते सब करना पहले मुझे तेरे दुखने में काला चश्मा ओ मैनू काला 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 ओ मैनू काला चश्मा जचदा ए गोरे मुखड़े ते मैनू काला चश्मा जचदा ए गोरे मुखड़े ते जचदा ए गोरे मुखड़े ते। सड़कों पे चल बस बहुत हो गया, सड़कों पे बहुत चल लिए भाई, अब नहीं चलना। पाकिस्तानियों के लिए गुजारा कर जाए काफी होगी हम सब फैंस कर दिए। लेकिन दोस्तों मूव करेंगे टू वर्ल्ड एक्सपीरिया ऑफिशियल स्मार्टफोन पार्टनर हाइलाइट्स की तरफ और देखते हैं किस तरह से मिरामार का ये एक्शन हमारे सामने अनफोल्ड हुआ। मैंने क्या बच्चा बर्दाश्त एक नंबर मजा आ गया। मिरामार के सेक्शन को किस तरह से हमने विटनेस किया उसकी तरफ हम जाएंगे जरूर, लेकिन ऐसा ना मजा आएगा। आप 12 पॉइंट्स आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम के लिए बहुत होंगे, मेरे ख्याल से वो किसी के लिए भी बहुत होंगे। 12 पॉइंट्स बहुत होते हैं यार। लेकिन फिलहाल अगर बात करें आरएससी की तरफ से जिस तरह से खेला गया, लाइटनिंग ने जो सल्तनत का मुजाहरा किया वो काफी शानदार था, काबिल तारीफ रहेगा। जरूर वहीं पे बात करेंगे आरएससी के प्लेयर्स को, जिस तरह से डेनिसबैंक वाइल्डकैट्स की तरफ से काफी अच्छा था। फाल्कन्स की तरफ से फाइट अच्छी ली गई, 4 किल्स यहां पे वो कंफर्म करते हैं। लेकिन फाल्कन्स अनफॉर्चुनेटली कैसे एरिया पर प्रिंस हो जाते हैं, फाल्कन्स के प्लेयर रोटेशन कर रहे होते हैं। मौजूद थी एक डिफरेंट एंगल पे टीम एसटी मौजूद थी, वो हमेशा वो ज्यादा सर्वाइव नहीं करते हुए नजर आए। लेकिन बात करें कि आरएससी के जीजी की एक प्लेयर आरएससी का वो इतना खूबसूरती के साथ निभाता है अपनी रिस्पांसिबिलिटी को कि ये टीम चाहे अर्ली एलिमिनेट भी हो जाए, कितने किल्स इनके बैकपैक में होते ही होते हैं। एग्रेशन जो है वो बहुत अच्छा दिखाया जा रहा है इनकी तरफ से। अब जहां पर ये टीम जो है वो ओवरऑल पॉइंट टेबल में एक संभल कर खेलती हुई हमें नजर आई है। लेकिन लास्ट 1v1 पोलो की तरफ से क्या ही खूबसूरती के साथ लिया गया, वो जो क्विक पीक्स के साथ जो वो डैमेज देते हैं। आपने पीक करके फौरन से कवर में जो जाने का जो एक मेटा होता है, अब हर प्लेयर की तरफ से खेले तो पीएमपीएल के बाद जितने भी स्ट्रेटजीज होते हैं हमने देखा कि वहां पे प्लेयर्स ऐसा ही करते हैं। इनफैक्ट तो पीएमसीयूज में भी ऐसा हो रहा है कि क्विक पिक करते हैं, डैमेज देते हैं, अंदर आते हैं। डैमेज तो अंदर आकर एक सिनेरियो है, उसको फॉलो किया जाता है। वो यहां पर प्लेयर से पोलो की तरफ से यूटिलाइज किया जाता है। का जो एक मेटा होता है, पीक्स के साथ जो वो डैमेज देते हैं। आपने पीक करके फौरन से कवर में जो जाने का जो एक मेटा होता है, जो कि अब हर प्लेयर की तरफ से किया जाता है। पीएमपीएल के बाद से जितने भी स्ट्रेटजीज होते हैं हमने देखा कि वहां पर प्लेयर्स ऐसा ही करते हैं। इनफैक्ट तो पीएमसीयूज में भी ऐसा हो रहा है कि प्लेयर्स जो वो क्विक पिक करते हैं, डैमेज देते हैं, अंदर आते हैं। डैमेज तो अंदर आकर जो एक सिनेरियो है उसको फॉलो किया जाता है। वो यहाँ पर प्लेयर से पोलो की तरफ से यूटिलाइज किया जाता है, कवर का फायदा लेते हैं और जो रखा उसको जब वो कैश करते हैं, एडवांटेज से कैश करते हैं। क्या बात है। लेकिन वीडियो में निकाल लिया सनहॉक के अलावा बात करें बॉटम पे कोई टीम मौजूद थी, टीम आरएससी को एटोन स्पोर्ट्स ऑलरेडी अच्छा हमारा भाई का डायलॉग हर जगह फेमस है के लिए और सोल के लिए होपन ट्रेड की सनहॉक किसी भी टीम को रिवॉर्ड कर सकता है, कोई भी टीम इसके अंदर ले सकती है और सारी जो है वो बात वहीं पर आ जाती है एट द एंड ऑफ द डे कि सनहॉक में सर्कल का एडवांटेज किस टीम को मिलता है। लेकिन उसके बाद हम बात करें ओवरऑल रैंकिंग की, ओवरऑल रैंकिंग आज के हमारे सामने सेकंड पेज से स्टार्ट किया जाएगा। एटोन ईस्पोर्ट्स राइट नाउ ऑन 18th स्पॉट, 17th के ऊपर जो है वो टीम सोल मौजूद है, बैक टू बैक अपने सेकंड के बाद 16th स्पॉट के ऊपर आ चुकी है स्ट्रेट। डैम इज ऑन द रॉक, जिगल द जिगल, डैम इज ऑन द रॉक, जिगल द जिगल, डैम इज ऑन द रॉक, जिगल द जिगल, डैम इज ऑन द रॉक, ये मेरे पास अपना डायलॉग फेमस है। जिगल द जिगल, डैम इज ऑन द रॉक, जिगल द जिगल, डैम इज ऑन द रॉक, जिगल, डैम इज ऑन द रॉक, जिगल द जिगल। 72 पॉइंट्स नॉट बैड, ज्यादा दूर नहीं है, 15 पॉइंट्स का डिफरेंस है उनका 11 स्पॉट से। लेकिन बॉक्स गेमिंग मौजूद है जिनका पिछला मैच काफी अच्छा निकल के जाता है और इस मैच के अंदर कोई भी जीत सकता है। बॉक्स गेमिंग का देखने को मिला, वीजीएस का चिकन डिनर, डोनट यूएसटी का चिकन डिनर, टीजेबी का चिकन डिनर। 4 मिनट का ब्रेक क्यों यार, उस तरह से मतलब 4 मिनट का ब्रेक क्यों, इतनी जल्दी मैच स्टार्ट कर रहे थे, फालतू का 4 मिनट का ब्रेक। आपके पास अगर चिकन डिनर और आप फर्स्ट पेज के ऊपर नहीं है, 4 मिनट कौन ब्रेक लेता है, और वो चीजें हमें प्लेसमेंट पॉइंट्स की सूरत में इन टीम्स के जो ओवरऑल रैंकिंग उसमें नजर आ रही है। लाजिम
बिल्कुल जी, प्लेसमेंट पॉइंट्स की सूरत में नजर आ रही है। चिकन डिनर काफी टीम्स थ्रो कर रही हैं, लेकिन बॉक्स गेमिंग अभी तक उन्होंने एक भी चिकन नहीं निकाला। उनके नीचे 4 टीम्स ने 4 चिकन निकाले हुए हैं। 4 टीम्स जैसे उन्होंने एक चिकन निकाला हुआ है, टोटल 4 चिकन बन रहे हैं। सो 52 Esports उनके लिए होप है जरूर, बट सोल को देखें आप, वो मजीद नीचे से नीचे जा रहे हैं। उनके लिए आज कोई भी मैच अच्छा नहीं रहा। 18 स्पॉट पर भी जा सकते हैं अगर उनकी तरफ से जो है वो अगला मैच भी बुरा जाता है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। लेकिन बात करेंगे अगले पेज पर आने वाली टीम फॉर रेवल की, जो कि 90 पॉइंट्स लेकर जा चुकी है। VIVO के पास एक चिकन है, 95 पॉइंट्स रहेंगे। DenizBank Wildcats को देखें आप, 8वें पायदान पर, बट कोई भी चिकन नहीं। निग्मा गैलेक्सी तो हमेशा ही ऐसे करती है, ये टीम 3rd पर भी आ जाए, इसके पास चिकन नहीं होगा। फिलहाल 6ठे पे मौजूद है विद 58 एलिमिनेशन पॉइंट्स एंड 55 पॉइंट्स। सो अभी भी उनकी तरफ से वो 15 बड़ा नंबर है, उसको नहीं अडॉप्ट किया गया, उसको नहीं किसी भी तरह से टीम जो अपने खाते में दर्ज करती हुई नजर आई। लेकिन बात करेंगे ST Falcons, दोनों टीम निकाल चुके हैं। वैम्पायर का भी एक चिकन था और ये पहले ही मैच निकाला था। उसके बाद से वैम्पायर्स को हमने जो नहीं देखा। आप देखें कि वैम्पायर स्पोर्ट्स का एक मैच के अंदर 39 पॉइंट्स लेना और बाकी तमाम मैचेस में मिलाकर उनके 137 पॉइंट्स बन रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो जो एक एडवांटेज उनको पहले मैच से मिला था, उसको इन्होंने ऐसा लूज किया। अब तुम्हारे सामने पॉइंट टेबल है, तुमने टॉप 6 देख लिया, कौन जीतेगा? इनको बाकी मैचेस में भी कुछ ना कुछ कौन जीतेगा? भाई 7 इज नॉट प्लेइंग, 7 इज भाई 18 तारीख से खेलेगी, वरना ST जो है वो इनसे इस तरह से क्या लगता है कौन जीतेगा? बिल्कुल, स्टालवर्ट ई-स्पोर्ट्स हमेशा से आपने देखा है कि बिल्ड अप करती है। अब क्या लग रहा है कौन जीतेगा? जो है वो सारी रैंक को, एंड जिस तरह उन्होंने एक एक करके, मैं समझता हूँ कि एक एक जो है वो पॉइंट जोड़ के यहाँ तक पहुंचे हैं। ये नजर आता है कि काफी एक डिसिप्लिन स्क्वाड है, काफी प्रोफेशनल। तुमको अभी भी RNG लग रहा है, मतलब RNG पे भरोसा है तुमको, कमबैक करेंगे लेकर चलते हैं, एक गोल सेट करके मैच के अंदर उतरते हैं कि हमने इस मैच के अंदर इतने पॉइंट्स निकालने हैं। भाई सैनहॉक है यार, सैनहॉक में RNG तुमको पता है, RNG बूट कैंप उतरेगी ST के साथ और वैम्पायर के अभी रिजल्ट्स के अंदर। इसलिए पूछा तुमको कौन जीतेगा, क्योंकि तो अभी मसाला दिखने वाला है। मसाला क्या है? और वही बात जो हम बार-बार करते हैं, मसाला ये है बूट कैंप। टीम्स को ये बात याद है कल क्या हुआ था कि क्या ST अपना बदला ले पाएगी या RNG अपना बदला लेगी वापस? RNG को क्या पता, क्या ST वापस बदला ले पाएगी? तुमको याद है कल क्या हुआ था? इवन कंसिस्टेंट स्क्वाड कल हुआ था बूट कैंप में मसाला। इवन थर्ड जो है 5th स्पॉट पे आता है, 6 प्लेसमेंट, 4 जो है वो किल पॉइंट्स लेकर अगर मसाला फिनिश करता है, they are better than that squad। बिरयानी बन रही थी, उसी स्क्वाड की तरह जो है वो बनना है। खा के गई RNG, कभी भी आपका साथ दे सकता है, कौन खा के जाता, कभी भी आपका साथ दे सकता है। और अगर 5 मैच लस्सी मैन, क्या लगता है बूट कैंप जाएंगे लोग ST वाले? मैच जो है वो मेन डिफरेंस मेकर, क्या लगता है ST वाले बूट कैंप जाएंगे? होगा किसी भी टीम के लिए। बिल्कुल जी, आपकी इस बात से मैं एग्री करना चाहूँगा कि जो थोड़े थोड़े पॉइंट्स होते हैं वो आपको इकट्ठे होकर इतने ज़्यादा नजर आते हैं। अगर आपने 5 मैचों में 5-5 पॉइंट्स निकाले हैं, आपको जो है वो 25 पॉइंट्स मिल जाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप एक मैच 25 पॉइंट्स का खेल पाते हैं बीच में, तो 50 पॉइंट्स बन रहे हैं आपके 6 मैचेस के बाद। तो इस चीज को जो वो टीम्स को सामने रखना, और होता है आपको मिलता ही मिलता है यार। ऐसा नहीं होता कि आप 15 मैचेस खेल रहे हो और 15 में से एक भी मैच में सर्कल आपको जो है वो फायदा नहीं देगा, एडवांटेज नहीं देगा। लेकिन वहीं पर बात हमेशा करता हूँ कि सर्कल के रहमत नहीं रहना आपको। 2x कर दिया, आपको इंतजार नहीं करना कि वो एक मैच कब आएगा कि आप एक बड़ा मैच खेलें, उसके बाद शायद आप विलिंगली या अनविलिंगली आप जो है वो उसके बाद सारे मैच आपको स्टार्ट ही अच्छा लेना है, हल्का स्टार्ट लें लेकिन अच्छा लें। 5, 7, 8 पॉइंट्स इतने आपको फोर्स के जो मैचेस उनमें लेने ही हैं। आपका टारगेट यही होना चाहिए। ज्यादा बड़े के चक्कर में जाएंगे हो सकता है एलिमिनेट हो जाए, लेकिन अगर आप 5, 7, 8 पॉइंट्स के लिए जाते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ आपकी एलिमिनेशन जो है वो इतना बड़ा कोई चांस बनता नहीं है उसका। अगला मैच आ चुका है जो कि सनोक का मैच है, और इस मैच में कुछ भी हो सकता है। निग्मा गैलेक्सी लास्ट मेन टूर्नामेंट ग्लोबल में सेकंड है और 15 पॉइंट्स का जो है वो मैं कहना चाहूंगा कंप्लीटली पॉसिबल 15 पॉइंट्स लेकर हो सकता है किसी भी मेहरबान। लेकिन फिलहाल टीम्स हो चुके हैं तैयार, एसन और लेट्स गो गाइस, कौन बनता है और कौन बनता है रॉकेट्स इन द चैट। बिल्कुल डॉक्टर हेक्टर दिख जाएगा, जैसे मैं स्पारिंग कर चुका हूं, डॉक्टर सैनहॉक में नहीं उतरा, लेकिन तो हिल बैटल हो रहा है। रेडी हो चुके हैं हम लोग दोस्तों, हिल बैटल अभी भी हो रहा है। मैं अपना शेर दोबारा दोहराता हूं कि टीम्स हो चुकी हैं तैयार, खिलाड़ी हो चुके हैं तैयार, कोचेस हो चुके हैं तैयार, और देखते हैं कौन बनेगा शिकारी और कौन बनेगा शिकार। बाबा 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 मैदान लेके आएंगे इसके अंदर, लेकिन आप मैदान के बगैर ही फिनिश कर दिया इसको। लेकिन कोई बात नहीं, मैदान हमारा रेडी हो चुका है और मैप के ऊपर हमें टीम्स उतरती हुई नजर आएंगी। एक ओ गन
भाई मसाला 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 जी बिल्कुल चैट ऑन करना इसके लिए चैट ऑन करना जरूरी है मसाले वाला है बन जरूर है बट इतना ज्यादा मसाला मसाला बुरा मसाला नहीं मसाला होता। सैनहॉक में आपका कहीं भी फ्लाइट पाथ बने आप बासानी भाई गनपेटे गनपेटे बासानी वहां से जब आप ग्लाइड करके किसी भी मसाला पहुंच सकते हैं। बट वहीं पे बात करेंगे इस वक्त हमारे सामने जो वो बूट कैंप में क्लस्टर बनता हुआ एसटी ही यहाँ जब बूट कैंप के करीब जब जूझती हुई नजर आ जरूर रही है, लेकिन सर्कल 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 3 आइलैंड का सर्कल यहाँ पर अरे बूट कैंप बता दो यार, ये सब नहीं देखना यार, बन चुका है। और मैं बता दो यार, हमेशा मैं बात करता हूँ कि ये सर्कल तीनों आइलैंड्स को लास्ट 3 to यानी कहने के टोटल बता रहे नहीं यार वो 5th to 6th फेज और लास्ट सर्कल्स तक जो है वो लास्ट 3 to 4 सर्कल्स तक जो है वो ये सर्कल जो वो तीनों आइलैंड को अगर एसटी ये फाइट जीत गया एसटी टूर्नामेंट जीत गया, पता नहीं चलता ये कहां जाएगा और टीम्स को जब बड़ा नुकसान इससे उठाना पड़ता है अक्सर। लेकिन बात करेंगे एसटी की जो कि फिर से आरएससी के साथ फाइट में जूझ चुकी है, दोनों ही टीम टॉप पे मौजूद हैं और इस तरह से क्लास टॉप लेना इट्स नॉट एडवांटेजेस फॉर एनी ऑफ देम। लेकिन टीम एसटीई कल के उस बुरे सबक के बाद क्या सीख कर आई है आज किस तरह से इस बुरे सबक को जो है वो मैं कहना चाहूंगा इस बुरे सबक का जो जायका है वो टीम आरएससी को चखाया चाहता है, ये देखना पड़ेगा। के साथ मौजूद है मेन बिल्डिंग में एक प्लेयर को फ्लैंक पे छोड़ा गया है और यही स्ट्रैटेजी आरएससी भी कर रही है। तो बिल्कुल स्ट्रैटेजी वाइज अगर हम देखें तो प्लेस जिस तरह से पोजीशन किया टीम एसटी ने अपने आप को, एसटी ज़्यादा एडवांटेज में अभी यहाँ पर नज़र आ रही है और आरएसजी पॉसिबली अगर वो गलती नहीं करते तो एसटी को पनिश करते हुए नज़र आ सकते हैं। लेकिन पिका का इस ऑफ एंगल के ऊपर होना, स्पेशली एक स्पोर्ट प्लेयर का ऑफ एंगल के ऊपर होना काफ़ी वैल्यूएबल साबित होगा टीम एसटी के लिए, बिकॉज एज वी कैन सी कि जिस तरह से पिका ने अपने आप को एक अपर कंपाउंड के अंदर पोजिशन किया है बूट कैंप के अंदर, ये चीज़ उनको पूरा विजन देगा जीजी के ऊपर। इवन लाइटनिंग अगर थोड़ा एग्रेसिव होने की कोशिश करते हैं इस बूट कैंप के जो साइड पे एरिया होता है उसके थ्रू उधर जीजी और पिका का 1v1 है, देख रहे हो उधर जीजी और पिका का 1v1 चलेगा, वहां पर भी उनको देख रहे हो दी जा सकती है पिका की तरफ से। लेकिन आरएसजी के और ये ले रहा है 1v1 नोज के करीब में प्लेयर मौजूद है, पुश डीबीएस है, 1v1 बैटल हमें देखने को मिलेगा। ऊपर वाले प्लेयर जो है वो अभी तक के लिए अपना सबर जो है वो छोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन दूसरी तरफ क्राउड जो है वो भी चीयर अप करता हुआ हमें बैकग्राउंड के अंदर जो है सुनाई दे रहा है कि वो चाहते हैं कि ये फाइट कहीं ना कहीं एक कंक्लूसिव फाइट बने इस मैच में और इनिशियल्स के अंदर ही उन्हें कुछ एक्शन दो आगे का यहाँ पर सराउंड हो चुके हैं 2 से 3 साइड से अपने आप को फिर से कितना अच्छा दिमाग लगाया उसने, ऊपर गया है वो, उनको कॉल दी जाती है कि कवर आएगा कोई उसको मारेगा ही नहीं चढ़ के, पिका को सबसे पहले पिक ऑफ करना चाहते हैं बैक एंड ऊपर, दिमाग लगाया है भाई, क्या दिमाग लगाया है भाई पिका भाई, क्रेजी गेम सेंस। लेकिन फ्लावर सी को पिक ऑफ किया जा सकता था यहाँ पर, क्रेजी गेम सेंस डैमेज पड़ता हुआ फ्लावर सी को अपनी उसने फिर से चेंज करेंगे, दिमाग लगाया भाई, कोई चढ़ेगा नहीं मार से एग्रेसिवली पुश कर रही है, नेड रहेगा तो अलग बात, पुश करना पड़ेगा, नेड रहेगा तो अलग बात कर सकती है आरएसजी, मेरे को लग रहा है नेड करेंगे पुश करते हुए बिकॉज़ नेड ही ढूंढ रहे क्रॉस फायर्स जो कि एक्शन स्क्राई टॉप तीनों की तरफ से सेट किए जा चुके हैं आरएसजी के इन प्लेयर्स के ऊपर, नेड ढूंढ रहे हैं बिल्कुल पिका के डाउन स्टोरी के ऊपर मौजूद हालात। और लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए आरएससी के जीजी नेड आएगा, मैं मुझे लग रहा है नेड करेंगे, ही नोज के सिचुएशन थोड़ी सी यहाँ पर टेंस है, उस तरह से कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 52x esports दूसरी तरफ टीजेबी को पनिश करते हैं, टीजेबी के 2 प्लेयर्स को यहाँ पर उनकी तरफ से एलिमिनेट किया जा यार वहां बताओ यार वो फाइट बताओ यार प्लीज यार, मसाला है यार, तरफ अगर बात की यार तुम ऐसा मत करो यार, नॉर्डविन को देखो यार, नॉर्डविन हमेशा मसाला बताता है यार, बनाने की कोशिश करें क्योंकि जी उनके पास रहेगी, नॉर्डविन ऐसा मसाला बताया कि हर जगह मसाला देखने का ही मन करता है करके यहाँ पर उनकी तरफ से अच्छा नेट से ऊपर एक फिर से टेंशन बनती हुई 4 प्लेयर्स के फुटस्टेप सुन रहे हैं इस वक्त और सोच रहे हैं कि किस तरह से वो इस सारी सिचुएशन के अंदर अपने आप को सर्वाइव करवाएंगे। लेकिन मास टिंग के इस एग्रेसिव जो है वो गलती को पनिश करते हुए नजर आए हमें रिप्ले के अंदर और उनकी तरफ से टिंग को इंस्टेंटली फिनिश भी कर दिया जाता है। लेकिन टेंशन अभी भी स्टालवर्ट ई-स्पोर्ट्स और मिल आ गई, नाइस। अगर बात की जाए यहाँ पर आरएसजी के दरमियान बनती हुई बूट कैंप नजर आ रही है, लेकिन साथ ही साथ टीम अभी तुम लीक्स देना स्टार्ट करोगे भी बिल्कुल यहाँ पर इस सारी फाइट को देखती हुई नजर आ रही है। पॉसिबली एक बैक स्टैब उनकी तरफ से दिया जा सकता है, हेक्टर अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं यहाँ पर, हेक्टर नोज के जैसे ही यहाँ पर दिया जाएगा स्टालवर्ट ई-स्पोर्ट्स के पिका के ऊपर, एक साइड पूरी तरह से ओपन हो जाएगी सोल के लिए किल्स उठाने के लिए और जो भी प्लेयर नॉक होता है उसको इंस्टेंटली कंफर्म किया जा सकता है यहाँ पर टीम सोल की तरफ से। हेक्टर एक
हाइड और कॉम्प्रोमाइज पोजीशन के अंदर मौजूद है यहाँ पर। अगर अपने आप को ज़्यादा देर इस कंपाउंड की छत के ऊपर रखते हैं, पॉसिबली नॉक भी किया जा सकता है, उनको थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बन सकती है। लेकिन अभी तक के लिए अलादीन बूट कैंप पूरी तरह से एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन बनता हुआ, 3 टीम्स की नज़रें यहाँ पर रहने वाली हैं इन किल्स की तरफ। बिल्कुल जी, 3 टीम्स की नज़रें इन किल्स की तरफ हैं ज़रूर, मगर वहीं पर हमने देखा कि 52 स्पोर्ट्स भी एक ऐसी टीम बनी जिन्होंने किल्स उठाए टीम टोंग जाबा के ऊपर, और वेस्टर्न यूरोप से आई हुई इस टीम को मैं कहूँगा कि थोड़ा सा यार बहुत लंबा चले गया उनका फाइट, कल बहुत जल्दी हो गया। लेकिन देखिए आप किस तरह से लंबा चलेगा कर रहे हैं, पानी से बिना बोट के रोटेशन करना कहीं ना कहीं जो है दिक्कत आमेज हो जरूर सकती है, दिक्कत अंगेज कहूँगा, एक्शन आ रहा है क्योंकि दिक्कत जो है कभी भी आपको एक्शन आ रहा है धीरे-धीरे, आपको गुस्सा जरूर दिलाती है, और आपका जो भाई एक्शन आ रहा है, हैरत मार दिया एक्शन ने, वाह लुगत का जो है वो बेहतरीन तरीके से हो यहाँ पर मेन प्लेयर गया, लेकिन एक्शन की तरफ से एक्सप्रेस दिया जाता है, और एक्शन भाई ये फाइट अब आरएसजी को दिक्कत है। अगर आरएसजी 3-4 निकालता है तो बॉट लेवल फाइट में, बट मेरे को लग रहा है एसटी जीत गया हुए जरूर है, मेरे ख्याल से टीम आरएसजी को पता नहीं था, अब पता लग चुका होगा कि पिका उनके ऊपर मौजूद है, किसी न किसी तरह से वो यहाँ पर ग्रेनेड स्पैम करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन वहीं पर एक्शन की तरफ से एबिलिटी इस्तेमाल की सारी ग्रेनेड वो भी फेंकना चाहते हैं, ग्रेनेड वो भी दागना चाहते हैं, देखते हैं आरएसजी के ऊपर ग्रेनेड कनेक्ट करता है या नहीं करता। और वहीं पर बैक एंड पे सोल को भी हम देख रहे हैं, सोल के पास जो एरिया, सोल को वो नहीं छोड़ना, सोल अगर बूट कैंप में एंट्री की कोशिश करती है, ये उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, और उसके बाद उसको हम जरूर पनिशमेंट देता हुआ भी देखेंगे। लेकिन आरएसजी के ऊपर पुश करते हुए टीम एंड शॉटगन के साथ यहाँ पर नॉक किया जाता है, डीबीएस इन एक्शन, टीम एसटीई क्लोज रेंज फाइट का एडवांटेज लेकर जाती है, वो जानते हैं कि उनकी बॉडी टू बॉडी फाइट होगी, और शॉटगन से अच्छा वेपन कोई होता नहीं है। टॉप यहाँ पर एक और नॉक निकालते हुए आखिरी प्लेयर उनको भी एलिमिनेट किया जाएगा, एसटी विदाउट लूजिंग अ सिंगल प्लेयर ये फाइट विन कर जाती है, एंड हैट्स ऑफ देम। लेकिन वहीं पर टीम सोल थोड़ा सा एडवांटेज कैश अब मेरे को फीलिंग आ रहा है, एक नॉक निकाल जाती है सर, अब मेरे को फीलिंग आ रहा है बिल्कुल आरएससी के एक प्लेयर को कंफर्म किया गया यहाँ पर टीम सोल की तरफ पीका ने, भाई पीका ये फाइट एक्चुअली पीका की वजह से जीते हैं, मेरे को लगता है, बात करें टीम मेरे को लगता है पीका की गेम सेंस की वजह से फाइट जीता। अगर पीका वहां पे पिक ऑफ हो जाता ना तो आरएसजी जीता था, फिर पीका ने दिमाग लगाया, उनके बंदों के एडीएस के ऊपर चला गया, एडीएस में चला गया, ऊपर लगे बैठ गया, वो लोग ऊपर ओपन में पुश तो करेंगे नहीं थे, सो पॉसिबली उनको रिवाइव भाई किया जाएगा। पीका ने मेरे को लगता है पीका की वजह से जीता। एक्शन तो है खतरनाक, एक्शन ने तो बहुत टोचन दिया ही, बट वो पीका का गेम सेंस भाई है ना, के अंदर मौजूद पीका का गेम सेंस, वो सीधा ऊपर भाग गया ताकि उसको कोई चेस करके मारे ना, पहले सर्कल से उतरी थी, लेकिन सर्कल और इसकी एक्शन आराम से टाइम लेके आया टुवर्ड दोस मल्टी आइलैंड फॉर्मेशन। पीका ने बहुत अच्छा खेला भाई, बूट कैंप, कैंप अल्फा और कैंप चार्ली आइलैंड स्पेशली 1-1 चल रहा है इनका स्कोर, उसके अंदर मौजूद रहने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ एक दफा फिर से रिप्ले दिखाया जा रहा है उसी फाइट का, जहां पर शॉटगन एक्शन हमें देखने को मिला। डीडी लोन एचपी थे, जैसे ही नीचे उसके ऊपर पुश किया जाता है, डीडी अगर पीका हो जाता ना स्टार्टिंग में तो भाई जीता, बट पीका की गेम सेंस की वजह से बच गया, किल कंफर्म कर लिया जाता है। क्रेजी एसटी जीत गया टूर्नामेंट, पक्का जीत गया एसटी मैच से एलिमिनेट होती हुई नजर आएगी। टीजेबी आफ्टर लूजिंग 2 ऑफ देयर प्लेयर्स रिट्रीट आउट कर जाएगी, 52 ई स्पोर्ट्स से काफी दूरी बना चुके हैं, वो सर्कल के बिल्कुल एज के काफी करीब है, लेकिन सर्कल का अगला शिफ्ट पॉसिबली बूट कैंप, रूइंस कैंप अल्फा इसी साइड के ऊपर ही रहने वाला है, मल्टी आइलैंड ही रहने वाला है। दे दे यार बूट कैंप मिल जोन दे दे, अरे साला रहेगा स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स टीम सोल बॉक्स वीपी पे जो जगह है के लिए एक सेफ हेवन बनती हुई नजर आएगी। लेकिन लुक एट दैट फॉर्मेशन, वीपी पे जो जगह है अल्फा कंपाउंड ले लेना चाहिए, एरियाज माउंटेन एरियाज जहां पर वीवो कीड ने अपना सेटअप लगा लिया अलादीन, एंड दे नो कि नॉर्दर्न साइड से, हातिन की साइड से रोटेशंस आएंगी, टीम्स जो है वहाँ से मूव करके आएंगी, सो पॉसिबली अच्छे किल्स उठाने में जो है वो कामयाब होती हुई हमें वीवो कीड नजर आ सकती है। बिल्कुल जी, एक अच्छा एरिया है ज़रूर उनके पास इस वक्त के लिए वीवो किट के पास, लेकिन जिस तरह का सर्कल बना हुआ है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सर्कल रूइंस की तरफ भी जा सकता है, और वीवो किट ब्रिजेस पे इंतज़ार तो कर रहे हैं, बट ब्रिजेस क्रॉस करने की ज़रूरत किसी को भी नहीं है। हो सकता है कि डैमबोन गेमिंग जो कि इस वक्त नॉर्दर्न साइड से रोटेट कर रही है, नॉर्दर्न साइड से आती हुई जब डैमबोन गेमिंग ब्रिज क्रॉस करना चाहे तो वीवो किट उनको सरप्राइज दे दे, लेकिन अगर वीवो किट पहले ब्रिज पर चली जाती है तभी ये मुमकिन रहेगा ज़रूर। लेकिन बात करते हैं बॉक्स गेमिंग की, इस वक्त A7 के साथ एटोन एस्पोर्ट्स के साथ फाइट लेती हुई नजर आ रही है। एटोन के पास हाइट मौजूद है, बॉक्स को केयरफुल होकर खेलना है, ओपन में अगर खेलते हैं तो प्रॉब्लम बन सकती है, डिस्पर्जन है टीम बॉक्स का, थोड़ा सा खतरा लाक हो सकता है इनके ऊपर।
बिल्कुल खतरा यहाँ पर लाख रहेगा। दूसरी तरफ एटॉन के पास एक हाइट मौजूद है। बैक टू बैक भी हमें क्लोजेस्ट फ्रे के अंदर नज़र आ रही है, काफ़ी करीब है यहाँ से बॉक्स गेमिंग के, लेकिन बॉक्स गेमिंग उन्हीं कंपाउंड्स के ऊपर फंस चुकी है जहाँ पर हर पायनान से या रुइन से मूव करने वाली टीम कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल करती हुई ज़रूर नज़र आती है सैनॉक के अंदर। राइट नेक्स्ट टू द ब्रिज ये कंपाउंड्स हैं, यहाँ से आप रिट्रीट करते हुए भी जो है वो अपने प्लेयर्स लूज़ करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन एटॉन उनके सामने अगला जो सर्कल है उसके हिसाब से प्लानिंग चल रही है उनकी कि वो किस तरह से मूव करेंगे, किन कंपाउंड्स के ऊपर उन्होंने जाना है। सो अपना एक फॉल बैक प्लान पहले ही उन्होंने रेडी करके रखा हुआ है कि जस्ट इन केस अगर ये फाइट ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाती है, कोई और टीम भी यहाँ पर आ जाती है, सो दीज आर द कंपाउंड्स जहाँ पर हम पुश करते हुए जाएंगे और उन कंपाउंड्स के अंदर जो है वो से कवर लिया जाएगा। लेकिन मॉर्फ ऑन द अदर साइड आज का दिन अच्छा उन्होंने स्टार्ट किया, स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट दैट मोमेंटम जिसको एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इंडोनेशिया से आने वाली ये टीम खेलती हुई नजर आएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगेन इंटेंसिटी इस कंपटीशन की काफ़ी ज़्यादा है, टीम्स तैयारी करके आई हैं, कुछ टीम्स बहुत अच्छा खेल रही हैं, कुछ टीम्स अच्छा खेलने की कोशिश कर रही हैं लेकिन उनको उस तरह से रिस्पांस नहीं मिल रहा लॉबी की तरफ से जिस तरह वो चाह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ VGS के स्क्वाड की तरफ से हातिन को क्रॉस कर लिया जा चुका है सक्सेसफुली एंड नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड DWG जिनका सेटअप हमें सामने नज़र आ रहा है, काफ़ी क्लोज आ चुके हैं यहाँ पर DWG के प्लेयर यहाँ पर स्पॉट होते हुए। लेकिन VGS के प्लेयर्स को थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी इफ दे वांट टू सेव देमसेल्फ, क्योंकि अगर DWG के साथ फाइट लेते हैं और DWG का जो है वो कैंप लगाने की कोशिश करती है, अब VGS के लिए सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा हालात। पर बाइक उनके पास है, कवर में लगाना पड़ेगा इस बाइक को। लेकिन व्हाट्स रॉन्ग विद द टीम VGS? हमेशा इनको हम बाइक पे रोटेट करता हुआ देखते हैं, इवन इन मिरामर हमने इनको बाइक पे रोटेट करता हुआ देखा है। कोई तो केमिस्ट्री है, कोई तो रोमांस है इनका इस व्हीकल के साथ, मोटरसाइकिल के साथ। प्रॉब्ली पिंडी बॉयज को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई डोंट नो। लेकिन चलें, वो भी अब मेहरान पे जा चुके हैं, तो मेरे ख्याल से इनको भी एटलीस्ट बगी पे तो जाना चाहिए। बहुत खतरनाक व्हीकल है बाइक, आपको पता है कि दोनों ही प्लेयर्स पर जो बैठे होते हैं वो दोनों ही वल्नरेबल हो जाते हैं। लेकिन सर्कल कहाँ जाता है, ये एक फिलहाल जो वीकेंड इंतजार जरूर है। मुझे लग रहा है कि टीम और वैम्पायर स्पोर्ट्स को एडवांटेज पहुंचेगा एंड यही होता है। सर्कल ब्रिजेस को जो है वो सराउंड करता हुआ नजर आता है। कैंप अल्फा की तरफ से रोटेशन करते हुए डैम वोन गेमिंग बहुत ही अच्छे से रोटेट करती है नजर आ रही है। इस वक्त व्हीकल भी इनके पास मौजूद है। लेकिन आप 52 को देखें, लुक एट देम, कैंप ब्रावो में मौजूद हैं वो। अभी तक हिल बैटल काफी पक्का फर्स्ट एड उठाया, रोटेशन ऑप्ट की जा रही है यहां पर, पक्का फर्स्ट एड। इवन फाल्कन, बिल्कुल फाल्कन। तो अगेन कैंप और डॉग्स के एरिया में उतरते हैं। अभी तक के लिए उनकी तरफ से डिसाइड नहीं किया गया कि वेदर वो सर्कल के अंदर जाना भी चाहते हैं या नहीं। लेकिन ये जो लेट रोटेशन है वो काफ़ी पनिश करेंगी यहाँ पर। जब भी मल्टी आइलैंड जो है वो सर्कल होता है, अगर आप सर्कल के एज पे भी आने की कोशिश करते हैं अलादीन, वाटर के इंक्लूजन की वजह से काफ़ी कम क्या रोटेशन भाई जो है वो अपने आप को कीपिंग ऑल दैट इन माइंड, आपको अपने आप को उसी हिसाब से रेडी करना है फाइट्स के लिए, अर्ली फाइट्स होती हुई नजर भी आएंगी उन्हें सर्कल, क्योंकि काफी ज्यादा गेटकीप्स जो है वो मिलते हुए नजर आएंगे हमें टीम्स को। सो जल्द से जल्द बेहतर यही है कि वो सर्कल की तरफ मूव करें। थर्ड ये साइड भी रह सकते थे, ब्रिज क्लियर करके हो जाएगा और जस्ट इन केस अगर व्हीकल नहीं मिलता उन्हें पानी से निकलने वाले गए तो फिर प्लेयर्स जो है वो जोन के हाथ में भाई बहुत खराब लग रहा है, अपनी जो है वो आखिरी सांसें लेने खराब लग रहा है, जो कि खराब लग रहा है। लेकिन फिलहाल बात करेंगे टीम निग्मा गैलेक्सी की, जो कि फाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं, फिर अपना गवाया भी किया इनकी तरफ से। फिलहाल सर्कल में एक अच्छे एरिया पे मौजूद हैं और यहाँ से जो वो कोशिश की जा रही है कि आसपास में जितनी भी टीम्स हैं उनको करीब ना आने दिया जाए अपने। और ये जो एक मैं कहना चाहूँगा सिलसिला है कॉम्पाउंड्स का, इसके करीब भटकती हुई कोई टीम नजर ना आए। बिकॉज जैसे आप किसी टीम को अपनी जो करीब की जो विसिनिटी को ब्रीच करने देते हैं तो फिर तब प्रॉब्लम आपके ऊपर इस तरह से बन जाती है, वो टीम आपको निकलने नहीं देती वहां से। लेकिन फिलहाल बात करेंगे हम टीम ST की, जो कि रोटेशन करते हुए आगे आ रहे हैं। सर्कल अभी कुछ मिनटों में, कुछ सेकंड्स में जो शिफ्ट कर जाएगा और नेक्स्ट सर्कल मजीद डेडली हो सकता है। नेक्स्ट सर्कल डिसाइड करेगा क्या उसे ब्रिज पर ही रहना या फिर कोई एक आइलैंड चूज करना है, अल्फा आइलैंड या चार्ली आइलैंड की तरफ उसको
आना है और जिस आइलैंड से जाएगा ये सर्कल छोड़कर दूसरे की तरफ, ऑब्वियसली इस आइलैंड पे मौजूद तमाम टीम्स को प्रॉब्लम आएगी। और अगर ये सर्कल के तरफ चला जाता तो ज्यादा टीम्स को प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द टीम्स वो प्रेफर करते हैं कि वो बूट कैंप की तरफ से रोटेट करें या फिर कैंप चार्ली की तरफ से रोटेट करें। और अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से उन तमाम टीम्स को जो बूट कैंप और कैंप चार्ली की तरफ रोटेट करें जरूर। लेकिन बात करते हैं 300 मीटर जोन के बारे में विकेट की पहुंचाएंगे और व्हीकल बर्स्ट के साथ एक और प्लेयर डाउन। 52 स्पोर्ट्स का अब आखिरी प्लेयर बचा हुआ है जो कि वीजीएस के साथ फाइट करने में चूक रहा है, लेकिन वीजीएस लकीली 2 किल्स ले चुके हैं, तीसरा नॉक किया गया है और अभी तक अपना एक भी प्लेयर इस टीम ने नहीं गंवाया। VGS ये प्लेयर जो नॉक रिवाइव नहीं दे पाएंगे, बट सक्सेसफुली उनकी तरफ से 52 Esports को घुटनों पर लाया जा चुका है, बट दे आर गोइंग फॉर दैट रिवाइव। यहाँ पर प्लेयर अपना स्कूटर लेकर जाएंगे, आई शॉट को किया जाएगा एंड देन दे विल गो फॉर द नेक्स्ट सर्कल जो कि कैंप अल्फा के एजेस पर आ चुका है, बल्कि कैंप अल्फा को छोड़ भी चुका है और टीम वैम्पायर, टीम टी ऊपर ही जाता है जोन, और तो एनडी के टाइम पे बहुत बनता था ये वो टीम्स हैं जो याद है ओमेगा जॉट में हमें नजर आ रही है। लेकिन स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स किया भाई, अक्षय देख नंबर 3 कंफर्म किया, नॉक किया जाता है सर्कल के अंदर जाने की कोशिश के अंदर। टीम स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स यहां पर अपने सामने आने वाले हर एक थ्रेट को, हर एक जो है वो ऑपोजिशन प्लेयर को अभी तक के लिए एक लॉन मूवर की तरह साफ करते हुए जा रहे हैं, बुलडोज किया जा रहा है उनकी तरफ से हर टीम को। 5 एलिमिनेशन उनके बैकपैक में हो चुकी हैं। स्क्राई यहाँ पर डाउन हो गए, लेकिन दूसरी तरफ 4 राइवल्स फाल्कन के नेवर अलोन को टेक डाउन करते हुए VGS की तरफ से लिन को भी पिक ऑफ कर लिया जाएगा। TJB भी फाइनल प्लेयर के ऊपर हमें अभी तक के लिए सर्वाइव करती हुई नजर आती है एंड एक क्लस्टर बनता हुआ 4 राइवल्स मॉर्फ और फाल्कन के दरमियान, जिसमें ज्यादा नुकसान अभी तक के लिए फाल्कन्स उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जी, फाल्कन यहाँ पर जो इस वक्त दिक्कत अंगेज यहाँ पर जो मैं कहना चाहूँगा खेल दिखाते हुए नजर आ जरूर रहे हैं। लेकिन बात करेंगे किल फीड में चलते हुए ग्रेनेड्स की, जो कि फॉर रावल्स की तरफ से जो है वो इस वक्त दिखाई गई टीम मॉर्फ के ऊपर। टीम सोल कहीं ना कहीं इस सारी फाइट में जो वो हिस्सेदार बन सकती है, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं उनको जो है इस वक्त क्रॉस कर पानी जो वो आना है आगे, और अगर वो अभी अपनी पोजीशन रिवील करते हैं तो शायद उनको डैमेज टीम के साथ। और किल फीड में देखें तो जेवे को नॉक किया जाता है टीम सोल की तरफ से, लेकिन अब से किल कंफर्म करते हुए बीजेपी की किल को नॉक करते हुए किल स्विच दूसरा क्या अब दिक्कत में आ जाएगी, बिकॉज़ उनके जिंदा है और वो है पिका जो कि उनके पास जूझ रहे हैं। 13 किट्स उनके पास मौजूद है, की जाएगी बिल्कुल भी पिक नहीं देना चाहते, लेकिन कंफर्मेशन करेंगे और अब यहाँ पर उनकी तरफ से हील बैक की जाएगी। B2B इससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन नहीं सकती। गॉब्लिन की तरफ से यहाँ अपनी जो एक मैं कहना चाहूंगा स्प्रे जो है दिखाया जाता है, अपनी जो आई सेट की जाती है और किया जाता है। फॉर्चुनेटली 4 पर उनके जिंदा है। पहली बार टीम सोल को हम देख रहे हैं कि किल्स भी हैं उनके पास और चारों प्लेयर्स भी जिंदा हैं। ऐसा अगर होता है तो पॉसिबल एक अच्छा मैच जो है वो इनकी तरफ से निकलेगा जरूर। बट अभी हम क्या बात है भाई, क्या बात है जो कि फाइट लेना चाहती है टीम फोरवेल के साथ। एंड लुक एट दिस स्प्रे, क्या ही खूबसूरती के साथ पुश करते हैं टीम मॉर्फ के प्लेयर यहाँ पर जिंदा इस वक्त नजर आ जरूर रहे हैं, बट उनकी बाकी टीम जो इस मैच में भी बची हुई हमें नजर नहीं आ रही। फॉर रावल भी इस वक्त बात करें मौजूद है, लेकिन बात करेंगे टीम A7 अभी भी उनकी तरफ से जब वो सर्कल के अंदर आने की कोशिश की जा रही है, सर्कल से बाहर ही मौजूद है। मैप के अंदर देखें अगर आप ऐसा तो बहुत सारी टीम और वहीं पर एलिमिनेट हो रही है। ब्रिज पे कितने टीम बैठे भाई, ही सर्कल के अंदर होगा अलादीन इस तरह की सिचुएशन में उनके बाहर गेट की बोल रहा है किस तरह से प्लेयर्स को पिक आउट किया जा चुका है। एटॉन के प्लेयर फर्स्ट एड किस पे करते हुए सोल क्रॉस कर रहे हैं इस रिवर को, लेकिन ये क्रॉसिंग जो है उनके लिए इम्पॉसिबल बना दी जा चुकी है। अक्षत किल ले ले, अरे जॉर्ड अक्षत नहीं मारा जोन से यहां पर डैमेज खा चुके थे, लेकिन अक्षत यहां पर करते हैं ये किल के बैक में जाएगा, लेकिन बैक एंड के ऊपर इस्तांबुल वाइल्ड कैट्स के प्लेयर को नॉक किया जाता है VGS की तरफ से। VGS यहां पर यार एक बार को देखना है गॉब्लिन पे कितने फर्स्ट एड टीम्स के लिए स्पेशली यहां पर गॉब्लिन को फर्स्ट एड कितने दिखने मिल जाए तो मजा आएगा। गेट कीप लगा सकते हैं इस सारी सिचुएशन में बॉक्स का और साथ ही साथ भी वो कीट का, लेकिन वो ज्यादा अभी इंटरेस्टेड है फाइट में अगेंस्ट टीम VGS, उनको भारी नुकसान देती हुई भी नजर आ रही है। ब्लू जोन में देखें आप कितने प्लेयर्स यहां पर एलिमिनेट हो रहे हैं। फाल्कन के प्लेयर आखिर
आखिरकार दम तोड़ जाते के लिए खराब गया हैं, मैच। सिर्फ एक प्लेसमेंट पॉइंट ही लेकर जाने में कामयाब हो गए। दूसरी तरफ एटॉन की बात करें, उनके भी प्लेयर अभी तक के लिए हील बैटल करते हुए नजर आएंगे और अब फाइनल प्लेयर उनके भी सर्वाइव कर रहे हैं। गॉब्लिन अकेले प्लेयर कितनी देर सर्वाइव कर सकते थे, आखिरकार यहाँ पर हाथ खड़े कर देते हैं ब्लू जोन के प्रेशर के आगे कि मेरी बस हो गई है, अब मैं एक घर चलता हूँ, और सोल इसी के साथ एलिमिनेट हो जाती है। 6 एलिमिनेशन उनके बैकपैक में रहेंगी। बॉक्स अब पुश कर रही है ऑन वीवो के प्लेयर सामने मौजूद, रिटेलिएशन कुछ देखने को मिलेगी, लेकिन इससे पहले रिटेलिएशन शुरू होती वीवो के एक प्लेयर को टेक डाउन किया जाता है। एड्रियन जल्दी से अपने प्लेयर को यहाँ पर छोड़कर जाते हुए, लेकिन जिस कंपाउंड के अंदर जाते हैं वहां पर उनको भी स्पॉट किया जा चुका है। एड्रियन यहाँ पर बॉक्स गेमिंग के प्लेयर्स को पिन डाउन करके एक एक करके यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन एक फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश के अंदर एक प्लेयर को डाउन करते हैं। एड्रियन लो ऑन एचपी, क्रोजा चलती है उनकी तरफ से, लेकिन बैक एंड के ऊपर ट्रिस्मे जो है वो टीम वीवो कीट के जो नॉक प्लेयर थे मैग्रेलिन उनको 7 पॉइंट आ रहे करने में कामयाब हो जाते हैं। 7 या 8 डाउन टू 1 स्टैंडिंग, लेकिन वीजीएस स्टिल गेट कीपिंग डब्ल्यूजी के पास अच्छी पोजीशन थी, लेकिन अब सर्कल से दूर जा चुके हैं राजा। अब फ्यूचर प्रेडिक्शन अगर ना की जाती तो शायद टीम के उनको दिला सकता था, लेकिन चलें करेंगे वैम्पायर स्पोर्ट्स की अभी तक चारों पर जिंदा है, लेकिन इस बार एलबीजी के और एलबीजी यहां पर जॉन करो भाई ये खतरनाक प्लेयर है। ऐसा सर्कल मैन को भी जाना है, ये जो नॉक था ये बहुत बुरा नॉक दिया गया क्योंकि अब डीडब्ल्यूजी को फाल्कन्स पर चार्जिंग करने पे मजबूर कर सकता है, लेकिन जोन ही नॉक हो जाएंगे स्टोन के हाथों। स्टोन यहां पर हेड का एडवांटेज लेते हुए डीडब्ल्यूजी यहां पर सर्विस वक्त एक बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है। अगर वीजीएस यहां पर थोड़ा सा हाथ बटाती है तब शायद वैम्पायर स्पोर्ट्स सर्कल में आने जो है वो दे जाए टीम डीडब्ल्यूजी को, लेकिन बैकएंड से जो है वो के प्लेयर डैमेज देंगे। वैम्पायर स्पोर्ट्स अब डैमेज खाती है दो डिफरेंट साइड से, लेकिन वीवो किड अनफॉर्चुनेटली उनके आखिरी ही प्लेयर जिंदा हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर पाएंगे वो ये देखना बहुत जरूरी है। चिकन लेके जाती है ना, हाइट का एडवांटेज है, अब उनको चिकन डिनर लेने से सिर्फ पत्थर तक पहुंच जाएंगे तो चिकन वो है इनकी पत्थरों तक पहुंच जाएंगे तो वैम्पायर का चिकन करते हैं इनकी अपनी गलतियां, अगर इनकी गलती करते हैं तो चिकन डिनर थ्रो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो सेट मौजूद है चिकन डिनर आसानी से लिया जा सकते हैं। तरफ से मजीद किल्स कंफर्म करते हुए चौथा किल अपने बैकपैक में डाला जाएगा, लेकिन ना अरे क्या एक्सपेक्टेड किया वो काफी बताना पे दिया गया। नॉक किस साइड पे हुआ अभी तक पता नहीं चला, अभी बीटीएस के प्लेयर यहां पर ने उन्होंने नॉक किया जरूर है। ओके आईडब्ल्यू अरे क्यों क्या अरे चिच्चा वैम्पायर स्पोर्ट्स के प्लेयर की तरफ से स्टोन यहां पर एक और प्लेयर डाउन करते हुए नजर आएंगे। जरूर बोरन सामने मौजूद, ग्रेनेड अगर फेंका जाता है बोरन एलिमिनेट हो सकते हैं, उसके बाद रिवाइवल की जो कोशिश थी वो कर सकते हैं टीम वैम्पायर स्पोर्ट्स के प्लेयर्स। रिवाइवल दिया अभी जा रहा है रेवन क्लॉ की तरफ से इस वक्त के लिए, और फिर से टीम वैम्पायर स्पोर्ट्स 3 के साथ जिंदा नजर आएगी। क्या ही जबरदस्त ग्रेनेड फेंका जाता है, 2 किल्स कंफर्म किए जाते हैं। डेनिसबैंक वाइल्डकैट इस मैच से बाहर जाती है। वैम्पायर स्पोर्ट्स अपना अब 2 टीम्स बच चुकी हैं। वीजीएस दे हैव द एडवांटेज, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है वैम्पायर को अल्फालूजी यहां पर कमाल कर सकते हैं, उनको का मुजाहरा करना पड़ेगा, उनको बिल्कुल भी रिवील नहीं करनी अपनी पोजीशन, लेकिन यहां पर स्पॉट करके या फूस नॉक हो जाएंगे। रेवन क्लॉ सिचुएशन को इवन स्टीवन कर देगा। इस सारी फाइट के अंदर मामला मोल्टोव्स भी जाते हुए नजर आएंगे। टीम वीजीएस यहां अपना चिकन डिनर खुद ही गवाते हुए अल्फालूजी खड़े होते हैं, नॉक निकालने की कोशिश करते हुए, डैमेज नहीं काफी नॉक निकालते खुद भी नॉक हो जाते हैं। अब यहाँ पर हालात 1v2 के बन जाएंगे, 1v1 बन जाएंगे। गद्दाफी के ऊपर स्टोन मौजूद, एक गेम चलती हुई डैमेज देंगे, लेकिन ग्रेनेड करते हुए स्टोन वर्सेस गद्दाफी, ग्रेनेड ट्रेड किए जाएंगे, लेकिन पहले ग्रेनेड करते हुए वैम्पायर स्पोर्ट्स के प्लेयर चिकन ले जाते हैं। शानदार तरीके से वैम्पायर स्पोर्ट्स डील करती हुई चिकन डिनर निकाला जाता है। स्टोन बहुत ही जबरदस्त तरीके से खेलते हुए अपनी टीम को फाइनली भाई लास्ट मैच इसका 1v1 था सब मिड स्टोन गेम प्ले में। और वैम्पायर ईस्पोर्ट्स जहां पर हम पिछले ही मैच के अंदर बात कर रहे थे कि ये टीम भाई लास्ट मैच भी इनका 1v1 था, वे इस बार मार दिया। जिस तरह से उन्होंने लास्ट मैच देखा था मिरामार, इसका 1v1 था स्टोन का ही, उसने पीक करके अच्छा मारा था सामने वाले ने, बैक टू बैक वाले ने। भाई पिछले मैच सेकंड, इस मैच फर्स्ट। भाई अब क्या लगता है वैम्पायर या एसटी पॉइंट्स टेबल देखते भाई, पॉइंट्स टेबल देखते। रुको 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 दिखा पॉइंट्स टेबल। भाई क्या लग रहा है भाई, कौन जीत रहा है भाई? एकदम क्या मैचेस आ रहे हैं, फाइनल डे एकदम फाइनल मैच जा रहा है, तो फाइनल डे एकदम इंटेंस मैचेस जा रहे हैं भाई, इतना मतलब एकदम परफेक्ट फाइनल डे, इससे बेटर फाइनल डे नहीं मिलेगा भाई देखने, इससे बेटर फाइनल डे नहीं देखने मिलेगा भाई।
और अच्छे किल ले रहे हैं इन्होंने, किल अच्छे लिए। बताता हूँ पॉइंट्स टेबल, मेरे हिसाब से लीड 5 पॉइंट के अंदर अंदर ही रहेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत कवर कर लिया, इन्होंने बहुत कवर कर लिया। पांच पॉइंट का लीड है, कितना पॉइंट का लीड है? आगे 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 4 पॉइंट मैं बोला था ना 5 पॉइंट के अंदर अंदर रहेगा। 4 पॉइंट भाई 3 मैच बचे, ठीक है 3 मैच बचे, 4 पॉइंट का डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड में। 4 पॉइंट 166 162 एंड अभी भी फैल्कन रेस में है। फैल्कन के 150 पॉइंट है, फर्स्ट और थर्ड में 14 पॉइंट का डिफरेंस है, बस 16 पॉइंट का। फैल्कन अभी भी रेस में, 4 पॉइंट का डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड में, और फर्स्ट और थर्ड में 16 पॉइंट का डिफरेंस। अभी कोई भी जीत सकता है, अभी भी कोई भी जीत सकता है तीनों में से। मां कसम क्या फाइनल जा रहा है भाई, क्या फाइनल जा रहा है। 3 मैच खत्म हो गए भाई, क्रेजी फाइनल ब्रो, डेंजर भाई डेंजर। भाई बहुत डेंजर फाइनल जा रहा है। क्या लग रहा है भाई कौन जीत रहा है? क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? एसटी, वैम्पायर या फैल्कन? मेरे को 2 फीलिंग आ रही है, ठीक है। सबसे पहली फीलिंग एसटी और वैम्पायर आपस में लड़ लेंगे, फैल्कन जी के वैसा जीत जाएगी। दूसरी फीलिंग फैल्कन का 20 किल चिकन आने वाला। तीसरी फीलिंग एसटी टूर्नामेंट जीत गई। मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार, बहुत सारे फीलिंग्स आ रहे हैं यार, बहुत सारे गट फीलिंग आ रहे हैं। पता नहीं भाई क्या होगा, देखने में मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मसाला है, मसाला है। वो बनाई गई टीम्स की तरफ ठीक, क्या हो सकता है पता है? अभी एक चीज हो सकती है, आरएसजी एसटी के ड्रॉप पे जा सकती है। आरएसजी सैनॉक बूट कैंप में मरी तो आरएसजी जो है सो एसटी के ड्रॉप पे जा सकती है, एंड आरएसजी चिकन मार दी तो फिर आरएसजी को कोई नहीं रोक सकता। अरे कुछ अभी भाई मैं नहीं बोल रहा भाई कुछ, मेरे को लग रहा है आरएसजी जीतेगी, मेरे को लग रहा है एसटी जीतेगी, मेरे को लग रहा है फैल्कन जीतेगी, मेरे को लग रहा है क्या नाम इनका, और कौन सी टीम, अरे अभी जो जीते क्या नाम, अरे क्या वैम्पायर जीतेगी। मेरे को लग रहा है निग्मा भी कमबैक कर सकता। भाई छोड़ो भाई, मेहरबा वैम्पायर ई स्पोर्ट्स से काफी देर बाद वंस अगेन एक बेहतरीन किल्स के साथ, बेहतरीन प्लेसमेंट पॉइंट्स के साथ एक अच्छा मैच निकाल लिया। बिल्कुल वैम्पायर ई स्पोर्ट्स का एक काफी जो है वो इंतजार से भरा हुआ मैं समझता हूँ कि ये सफर रहा होगा। नंबर्स इंग्लिश में बोल दो, 166 पॉइंट्स 162 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स का आएगा। इस तरह से उन्होंने जिस बैंक के साथ स्टार्ट किया था इस कंपटीशन को, अगेन मैं समझता हूँ उनसे उम्मीदें जो है वो काफी ज्यादा लगा दी जा चुकी थी, लेकिन वर्चुअल गेमिंग स्क्वाड ऑन द अदर साइड बैक टू बैक अच्छा मैच निकलता है उनका। इससे बेटर फाइनल देखने नहीं मिलेगा इस दफा फिर से उन्होंने निकाल दिए हैं। वीजीएस पॉसिबली हमें इससे बेटर फाइनल देखने नहीं मिलेगा, पेज की तरफ अपने इस सफर में फर्दर क्लोज आती हुई नजर आएगी, लेकिन डेनिज़बैंक वाइल्डकैट्स इससे बेटर फाइनल देखने नहीं मिलेगा भाई। डेनिज़बैंक जो है इसको अपना नाम बदलना पड़ेगा या फिर मुझे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इनके ऊपर, लेकिन 12 पॉइंट्स उनके भी बैक में रहेंगे। निग्मा गैलेक्सी विद 10 पॉइंट्स, बॉक्स गेमिंग 9 पॉइंट्स उनके तरफ जाते हैं। सोल के लिए भी एक अच्छा मैच निकल के जाता हुआ 6 जो है वो एलिमिनेशन उन्होंने स्कोर की इस मैच के अंदर, और एक प्लेसमेंट पॉइंट किधर है बता दो दिया, बट अनफॉर्चूनेटली 166 162 150 दोस्त नहीं, टॉप सर्कल जो है वो किसी को मिलता नहीं सैनॉक के अंदर। अभी भी भरोसा है मेरे को, जितना भी आप उससे पहले इकट्ठा कर सकते हैं पॉइंट्स वो इकट्ठे कर लें, और सोल हमें कोई डोरेमोन है क्या चैट में, जाना भाई टाइम मशीन लेके जरा देखिए ना कौन जीता। कहीं वीजीएस ने जैसी आज के दिन कंसिस्टेंसी दिखाई है और जिस रफ्तार से वो आगे जा रहे हैं, 2 मैचेस में आज के दिन उन्होंने बहुत बाखूबी के साथ परफॉर्म किया। दूसरा मैच है बैक टू बैक, इतना तो बैक टू बैक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही जितना वीजीएस निकाला है गवर्नमेंट ने रिफ्लेक्स। अरे पॉजिटिव सो कहीं ना कहीं इम्कानात हैं उनके टॉप में हो जाएंगे। एक मैच दूर है, इस मैच के बाद हम ओवरऑल इसी बात पे भी देखेंगे। गॉब्लिन के लिए सोनी एक्सपीरिया हाइलाइट्स मुलाहिजा फरमाइए, बेहतरीन लम्हात आ चुके हैं। वॉशरूम जाके ठीक है, वॉशरूम ब्रेक 1 मिनट में। लाइटां लगी दिया तारे तारे सालों ने पारे जाती हवा ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਜਾਵੇ ਲੱਗੇ ਬਾਸ ਦੀ ਚੁੰਝ ਹਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਇਫ ਦੇ ਕੋਟ ਗੈਸੋਲੀਨਾ ਫੁੱਲਾ ਟੈਂਕੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਜ਼ਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅੜੀਏ ਨਹੀਂ ਸਿਰ
ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲ V12 ਇੰਜਣ ਤੇ ਗੁੰਜੇ ਲਲਕਾਰ ਨੇ ਲਰਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ 3 ਡਿਗਰੀ ਆ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਉੱਡਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਜਣ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬਬਲ ਹਜ਼ਾਰ ਨੇ ਰੌਲਾ ਸੁਣਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਨੇ ਉੱਡੀ ਡਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਖਰੋੜੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਸਪੇਸ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਸਪੇਸ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਸਪੇਸ 60 MG ਵਾਲੀ ਅੜ ਬੱਲਾਂ ਲੇਮਨੀ ਪੌਪ ਕਰ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ੇਵਨੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਯਾਰਾਂ ਰੱਖਿਆ ਏਦਾਂ ਜਦਾਂ ਐਲਾਮਸਕਲੀ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਦੀ ਗੇਮ ਨੀ ਗਿਲਟ ਲੋਂਜ ਕੁੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੱਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਸਪੇਸਸ਼ਿਪ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਸਪੇਸਸ਼ਿਪ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ जल्दी घबरा भी गए हैं आज के दिन जल्दी सारे मंजर को देखकर वैसी परफॉर्मेंस में गई थी बूट कैंप टीम स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स को एलिमिनेट करने के लिए लेकिन इस दफा कहानी एक कोई और ही लिखी जाती है टीम स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स टीम आरएसजी के कंप्लीट स्क्वाड को वाइप आउट करने में कामयाब हो जाते हैं जस्ट लुक एट द स्माइल्स ऑन देयर फेसेस वीजीएस के प्लेयर्स बिल्कुल कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कोई भी उनके चेहरों पर परेशानी नहीं दिखाई दे रही और प्रैक्टिस फिलहाल लॉबी जा चुकी हैं टीम्स और चंद ही सेकंड्स में अगला मैच भी मंजर आम पर आ जाएगा और कुछ दिल बनाए जा रहे हैं वीजीएस के प्लेयर्स की तरफ से और आंखें उनकी भरी हुई मुझे दिखाई दे रही हैं दिस शोज के कितना एग्रेसिव पिछला मैच उनका रहा है माइन्यूट डिटेल्स कर रहा हूँ यहाँ पर लेकिन ये ट्रॉफी ओह माय गॉड इस ट्रॉफी पर आंखें जमी हुई हैं बहुत सी टीम्स की और इनफैक्ट टॉप की जो तीन टीम्स हैं बेहतरीन टीम्स इस सारे मंजर की जो निकलकर सामने आई है क्लासिक मैच में वंस अगेन इनको धकेल दिया जाएगा इस सारे इवेंट के अंदर और देखते हैं कि इस मैच के बाद क्या कहानी लिखी जाती है सिर्फ 3 ही पॉइंट्स का 4 पॉइंट्स का डिफरेंस है बहुत पीछे है इंग्लिश देखते English बहुत आगे यार. May have gone downhill just a little bit for Vampire Esports, but it looks like they do finish strong as well. But it will be these last 3 matches because there's still quite a lot of points to be had here in the lobby as we head over. भाई English बहुत आगे भाई. Right now, down 1 USG. English देखते भाई बहुत आगे. चलो जेम लीड ले with his playing path being extremely kind compared to most of the others during this kind of small tournament. PMWI, I say small in terms of length, but it's huge in terms of the pride on the line here, in terms of the glory, the prize pool itself. So all of these teams really are trying to bring absolutely everything they can from the back of their arsenal. Just scraping the bottom of the barrel there, trying to get anything they can pop into the pocket. Oh, look at this. Plane path was fairly kind. George pulled down from Milter. A lot of places open, but the circle, a hard northern shift. Yeah, up towards this northeast side. Now, Stalwart might struggle with this one just slightly because they're dropping over towards Nova at Neuer. We've already explained this before, but with an 18-team lobby, it's very difficult to have those secondary spots. So Stalwart's almost forced to head down towards Nova up Neuer right now. And with this eastern side on the circle as well, and them always crossing on the eastern bridge, they're going to come into contact with a fair few teams. You can also come into contact with a fair few teams as well, as long as you are watching together with us. So if you complete those daily missions to earn those points, once you have enough of those points, they are there. Tap on the rewards icon to claim the corresponding reward. Participate in the event, either solo or you can team up with other players, both totally fine. And team up could be a little bit easier to get those rewards. And you saw that little fancy graphic there on your screen there. That's for the PMWI gun skin. Guys, जितने भी लोग ने फटाफट follow जरूर ठोक देना. We are very close to 850k followers. बता देता हूँ कितने बचे हैं. 50% off PMWI packs. 8000 बचे करा पाओगे यार, करा दो यार, मजा आ जाएगा. So grab them whilst you can because you will get a set straight away and 5 chances to draw PMWI treasure chests. And of course on the 14th, which is tomorrow, 14th of August, all the way until the 15th of next month, it will be 16% off those PMWI packs and you get 6 chances to draw PMWI treasure chests.
Checking out the map at the moment, Nigma Galaxy over towards Pachinki, just about in this one. Falcons, though, over towards Morph in Yasnaya, just on that eastern side. They said they weren't going to change anything at the start of the day with a beautiful interview with Joy Boy himself, the coach of the team. And it looks like they are sticking to their guns here, but this actually presents a very good opportunity for Team Falcons. They may have slipped behind just slightly, but we saw them have fantastic results towards the end of the day yesterday. And now, with a few games to go, and again, all the crowd cheering, that mentality is going to be there for them. I don't know how you get down during this tournament with that kind of support. So I think Falcons can certainly bring it back. They grab some vehicles from down south, going to bring those back up to Yasnaya, so they have a fair bit of rotational tools in their pocket at the moment. I've been called that before. A rotational tool. A rotational tool? That's right. Okay. Does the interstellar music come with you? Sure. Why not? Absolutely. Certainly ages me plenty. But we're going to be getting on board at the moment with Nigma Galaxy, who last game, they didn't have a standout performance. In fact, they were caught up in that rotation from that southwestern island, but they closed the gap towards one of those top 5 spots quite significantly over RSG, a very coveted position for Nigma Galaxy to try and take a hold of. So if they can break out again this game, they might be with a chance of getting in for the after party next week. Yeah, Nigma Galaxy now just 6 points behind RSG with 129 points, so there's definitely potential for them to ladder up here. Nigma Galaxy, I would say they're having a bit of a rough tournament. That's considering in 6th place, but that's just because I respect the team so much. I think that the guys from Iraq are doing such good work so far for themselves. I expect a little bit more from this team, but I think 6th place right now, 123 points, bring it home in this last stretch right now. And they could definitely be seeing themselves a quick little jump up into that after-party showdown. 52 and VGS trading fire right now. Danger इनका आपस में बहुत fight हो रहा है. It is 52 VGS, sorry, to pick up a point over on towards one of the 52 players. Nothing too dramatic though for either of these teams. They will just be heading away. Looking at where a lot of these teams are moving, Damwon here, early rotation, right? This is something we've seen, I think you were mentioning this backstage. It's something they've gone back to, right? It's being early on those rotates and getting straight in the middle. Absolutely. Never had those VIVO key directly sending into Jumper's building at the moment. Rivals a little bit split from the rest of his team. Diego taken down. There will be a knockdown there from the grenade, but absolutely no response from the rest of 4 rivals here who are nowhere to be seen. No, nowhere near. Unfortunately, to have to take that fight in that scenario with no backup. And Jumper will have fallen for the 4 rivals. Not ideal. VGS. Sorry. They managed to get an elimination earlier on, but Aton Esports had them in their sights. One shot will fall. Defi under pressure as well. Needs to be careful in the climb on this UAS, but it's going very, very slowly, spinning around out in the open. As Senatexa sends on in to try and get a better angle, to try and get on this chase, try and get away. It's starting to smoke now, so not a lot of HP left on it. See the first level 1 helmet, level 1 vest almost broken as well. Far from ideal, far from what you want to see, but it looks like Aton are going to give up the chase for now. Very unfortunate Bruno wasn't able to hit those shots on the target, at least being the actual driver, but you know, he did hit a fair few on the UAS. It's not quite enough to actually bring the vehicle down with the explosions. Goblin doing his best to slip out of the way there, crawling his way just over the lip of that hill. Back in his vehicle, spots TJB, who have been residing in North George for some time now. They've rotated up past ruins. They will be in the path of TJB, but TJB very much aware of their location. These two teams been clashing almost every single map now, so this is probably one of those points where maybe just go your separate ways. Potentially, I mean, it depends what Seoul want to do, because you've also got those other teams that they might want to guard, but then you get behind. Yeah, it's a decision they're going to have to make in these next couple of minutes. It's going to be absolutely crucial that they make one that's going to go well for them. I mean, Seoul haven't had the best of tournaments so far, if we're honest. They haven't had a great time of things, set down in 17th at the moment with 66 points. So picking up any points, laddering up, getting a little bit more cash in pocket would be excellent news for them. Still representing, and that's the absolutely main thing. As long as you turn up
and try and get something done. That's all you can ask. I don't think Team Soul's put the brakes on at all during this tournament. It's just been a case where there's so many regions here. And honestly, this is probably one of the most competitive lobbies I've seen in a very, very long time. You know, 18 team lobby, it doesn't always lend itself the best to a super competitive gameplay. But honestly, here, it has worked out extremely well. Yes, you know, people have been forced into certain drop spots, but all these teams are adapted fantastically to it. Regardless, you know, everyone has turned up, like I said. Ooh, definitely spotted the player there. Got eyes on, but TJB are guarding out on the bridge. North George trying to stop the Wildcats from moving through behind them, but they haven't had much of an impact. They haven't had much of a slowing effect. Lin not really getting the damage that they were looking for, taking out the wheel of that buggy as well. X-Ray playing around this wall. It's a lick of damage in, but it's not going to be good enough as X-Ray takes that tumble. First aid on board. Fortingskir's GK first echoes that result with another knock onto X-Ray. TJB causing such problems in the standings right now, especially for Wildcats, and with this new circle heading right up towards the northeast side. DenizBank Wildcats in 7th place with 112 points. Today was the day where they could have potentially made it to the AfterParty Showdown. But with so many players going down, Lux basically having to give it up right now alongside Boran, who is taking a couple of bullets himself. You know, this is one of those situations where you have 2 more games to go. And the Wildcats have to have unbelievable results in those 2 if they want to see themselves into the After-Party Showdown. It looks like TJB want to chase this one down, potentially. Chow just trying to pick up this flush and ensure this point. And we'll be able to do so. Nice and simple there, but Wildcats will be getting away with 2, Lux and Boran, as they head in on the western side. Virtual Game Squad up towards Severny, their secondary spot, usually liking to drop towards Lipovka, but this time around they dropped in Severny nice and early, and it's actually worked out for them, surprisingly. Box Gaming looking up towards 52 Esports. They're just trying to make themselves a little compound to share for some time. Try and stay away from a lot of this action. Fair few vehicles on board for these players, but don't want to get too ahead of themselves, knowing that there's a fair bit of the game left to go. Scry just get knocked here by Nigma Galaxy. Okay, and Ralph is looking to plink away, pick up that flush. Nigma Galaxy is starting okay. This is the team that we talked about earlier. Needs a good performance to jump up into those top 5. Taking on Stalwart, proving that's the way to do it. Yeah, this is great news for Team Falcons, honestly. Obviously not the best news for Mongolia, who are looking to claim yet again another title here over in the PMWI. But for Team Falcons, this does open the gap slightly, with only 3 players on Stalwart looking to weather the storm in these final circles. Team Falcons starting up in Yasnaya might be able to find themselves a decent spot and maybe ladder up, but we know what Stalwart can do. They live and live on. They're very, very resilient as a team. Some would even call them Stalwart themselves. But honestly, this is one of their key factors. It's very, very good. It helps them in terms of that consistency where, you know, even if they get a bad start to the game, they still make it up towards that 1st through 5th placings. Yeah. Taking a look at this, so this second circle, I mean, it's an even further northern shift right now. But a lot of the teams have actually already made it fairly deep into this circle. They've managed to find a lot of position. We're still 18 teams alive, Brian. We're still 66 players alive. The most players lost on a single team were the Wildcats, and they were in that engagement with TJB that we just saw. So at the moment, it's been fairly quiet in this lobby. You've got like this little triangle slice that heads up towards Stalba, just outside of Yasnaya, right, where it's just all fields. It's very, very open. So it's slightly awkward to play in, so you're just looking for some compounds in this area. Quite flat terrain, honestly, just above Yasnaya, Poliana. Obviously, there's still the fields in place, so that's a big chunk of area that cannot be played, which is why you do see this fairly even line just across the top side. A lot of teams just looking for beneficial areas. You see Nigma Galaxy as well as Aton Esports taking position up towards Stalwart. It's not always the best of spots because you do get circles like this, which may potentially not head up there. So you don't want to head up the mountain too early, because coming down it's going to be one hell of a tumble. It does sometimes give you a little bit of control over that terrain, right? But it can be, as you say, very difficult to leave. It's not without its problems, not without its troubles. Yeah. Similarly, for Wildcats, 2 players, they're going to really struggle to push past this glut of players on the western side.
Yeah, there's certainly staging in this area as well, so think of it almost like a staircase where, you know, you can play on various levels up towards Salba. But right now, it still seems to be a decent place to be playing at the moment. I think most teams aren't trying to move out there too early. Team Falcons hedging their bets at the moment. They don't want to take it too far into the circle, rather just, you know, hold strong on this southeast edge. Morph at the moment. This is one of the games where, you know, we dropped in over towards Yasnaya, and Morph wanted to stay in this one as long as possible, show us exactly what Indonesia can do. But it's USG who made a surprisingly early rotate, but goodness me, the Wildcats once again harassed by TJB. They will not let this one lie. TJB don't lose a knock either, but Seoul are on the case for a little bit of an answer now. It is traded off. Tingska will be able to get that answer out in the open, though. TJB have their player knocked. Lin needs a little bit of a rescue mission to be enacted here. Boran could prove to be a thorn in the side, but Hector gets across towards Lin's position. GK first, I don't think they're going to be able to... Hang on a minute. They did. They managed to land the shot. They managed to stop this push, and now it's all on Omega to push in and get this result to Hector. Not only that, there's another player there as well. TJB have rallied around Lin's down position. GK first will scout this out, and in they go. The duo from the back will swing around the side. GK first taken low, taken out as well. A spray over towards Akshat from Xiao behind the rock, and GK first will crawl to safety. Quick smoke coming through from Xiao. Very, very concerned with his teammate's safety here. Akshat off in the distance. Did get that nice off angle, but now he has to leave. And like you said, they rallied together so very well in that play. TJB able to hold strong for just a little bit longer. They have caused a lot of problems so far, taking shots at a lot of different teams. Still only 3 eliminations, but mark that up to 5 now with the rest of the knocks coming through. Boran, though, coming back into action. Takes down GK first from afar. But they know where he is, and he's not really got too much to work with here at the moment. Boran for the Wildcats, last player surviving. Potential to go down first in this game. Representatives from Turkey struggling at the hands of the European TJB on the western edge. How much further can they go? I think that's the majority of Seoul taken out. We saw that engagement action sent a lot more centrally. You can see him on the north side there, Nigma Galaxy. Circle does go their way, though. Towards that northeastern side, but Vampire Esports actually in a very good position. And considering where they drop as well, usually down towards Primos, they've made a very good run up towards here. So fill us in on that. But they have got very, very well situated in the circle, surprisingly to me at least. There's that replay of the car basically getting sent directly back to the manufacturer, where it'll need a couple of repairs. Certainly think so. I mean, there's plenty of shrapnel in the bonnet. Won't run like it used to. Never will, unfortunately, Blank. But yeah, that thing will be ready in 2035. If you're lucky. Maybe they'll have... Yeah, maybe it will. Maybe they'll be able to patch that one up. But Nigma Galaxy, they're going to patch up their position against the ingress from Donuts USG. Unfortunately, Amodi takes a little bit of damage repositioning the buggy. Doesn't go down just yet. The reload from Missile gives him some respite. Donuts USG made an early rotate. I think they're definitely learning from their mistakes as this tournament has gone on. You know, staying in Rozok for a little bit too long, maybe getting caught off guard. Lightning tries to pass through. And, you know, same as his namesake, able to do it. DD falls, but USG, goodness me. Oh, they are going to be able to hold the second wave of that approach from RSG, but there's still pressure from the off angle. Lightning's been spotted, has got the teammate next to him. GZ is there as well. They both made it through. It's treacherous hillsides now, as G said, turn up the hill towards Nigma Galaxy's position as they swing out to the eastern side. VGS have eyes on as well. RSG were right underneath Stalwart down towards the south side, so they were very, very far behind, and this is a very typical RSG play. Just send it to the direct center of the circle and see what you can make do with it. But in this time, they have sent straight into the barbed wires of all these players and got put up in the process. And that'll be RSG out again. With Nigma Galaxy still in the match here, this gives them great opportunity to ladder those 6 points at the beginning of the game. Falcons taking on Stalwart. This is good news for the top of the table race right now. If you're a Falcons fan here in Saudi Arabia, action getting taken very, very low. Does get away with it. In the meantime, Team Seoul eliminated. They will be out now, ranked 16th on the game. Horrific action. Out now, just top remaining.
And Falcons, like we said before, they waited for their turn in line, and now it seems that they'll be moving into the circle. And with Stalwart pushed out of the way, this is real opportunity to start making up those points from before. Stalwart still have one player. They've still got top, but it's on the outside there. Difficult stuff. Falcons with 4, one a limb on Vampire the or Falcon, कौन लग रहा है? Back-to-back. ये मैच में ज़्यादा लीड लेके जाएगा. जल्दी बताओ. All looking to try and push into this compound. They will certainly see this US kill switch. Needs to be on the money for this. J-Way a little bit further down. Falcons yet to make that aggressive push. They're worried about the backstep. See the smoke dropped by top. They assume it's from that final player from Stalwart. Top just dropping on the iron sights. A lot of these players do tend to feel like the iron sights gives them a better shot, even at distance. Falcon really not letting these teams go at all. Morph, though, also in the sidelines, and Stalwart still has to move in. And with this circle down towards the southeast, Falcon, they've been thrown a bit of rope. They're going to start clambering up it. और ये होने वाला है get to the top of that cliff. I mean, at the moment, के 2 मैचेस पे डिसाइड होगा. The top of the tables pretty close. They did let it slip just that little bit down in 3rd place. They started the game 12 points behind Vampire, 16 points behind Stalwart, who have just been eliminated now. Guys, 0 point down. So the further Falcons can go, the higher they'll 0 fly. point down go. ST go. Back to back. भाई. Somehow got that chicken dinner early today. VP पे golden chance है lead बनाने का. Falcon पे है golden chance. 2nd place against them. भाई very close at that. Now क्या tournament है भाई ये? To make a move off towards that eastern side potentially. Danger जा रहा है बे. Ravenclaw इसी out बात the पे circle. रसमलाई Looks like they're just setting up the barricade versus a lot of these teams. They want to clear this western side, keep it as safe as possible. From there. Look at this little dugout that they have in the rocks. This is going to be absolutely instrumental to their end game. Nordwin का tournament याद आ गया अभी. Leverage that. Trying to get something done. Back to back, engaging with Nigma Galaxy on their north side as the push comes through from the squad. Back to back, currently holding that compound on the top of the hill. We saw them push up to it earlier. Ralph looking to potentially get that res, but the backlines of Nigma Galaxy suffering as well on this aggressive move. That's one player going down already. Lord on knee, Ralph on knee as well. I think that's just one player up in Hamodi now. Real tough situation. Ravenclaw. What's this man been doing all his lonesome? Been providing so much good frontal fire for the rest of the team. Vampire Esports were able to scoop up a couple of points for themselves. Here's the nade earlier that put an end to Stalwart's run here on Erangel. The judge is able to get that spray down. Spots the player in the bush. Nicely found. Vampire Esports. They are just sending bullets every which way and somehow finding their mark on pretty much everything there. Morph looking to engage. Rocky doesn't get the knock there. Back behind cover and has to push back through the smoke. GK first spotted on the off angle there for Ravenclaw. Nicely picked up. TJB thinned down yet again. Has to drop to the floor. We'll have to just jump up and go for the quick peek. Xiao actually goes down, and that's the support from the rest of the team you're looking for. That does send Vampire Esports down to just 3 players now, but they are racking up points slowly but surely. Box are on their north side with a little bit heavier firepower right now, a little bit more hefty. Guys, VP tabletop. As the Vampires. Abhi current table ke hisab se. Down to 3. Lucas, Stone, and Schweppes. Still a formidable squad to be dealing with, and it seems like they've turned back up, but unfortunately for them, there's a knock, and Schweppes taken low. A really beautiful spray from Break to really suppress that position. It will slow them down. A southern shift comes through. But not quite long enough here, and this might just give time for Vampire to resurrect one of their fallen teammates. Morph taking knocks from Falcons on top side. That's never alone there, who had such a good run yesterday in that 1v2 versus the Korean powerhouse of Damwon Kia over on Erangel. So far, Falcons have been controlling this circle very nicely. Circle does come down to them now, but they've been playing it slow, safe, and calculated. Nigma Galaxy still with 3 players. They've been able to pick up the pieces on the north side, and they are clearing that area. Very nicely found. I think that was Damwon Kia who did go down to them on the north side. Falcons, though, engaged with Morph right now, all very low. But they are looking to get those heals off, and they are succeeding for the most part here. Morph staying alive in those smoke covers. Vampire Esports will be there setting the smokes out as well. Box slowly crawling their way up. One taken down on USC from Break here.
Missile just tries to send his way up, propelled by hydrogen up this mountain. Vaz is still down in the dirt there, I believe, out in the open, unless they did get eliminated there. I have to double check, but yeah, maybe they did get... No, 52, still there, have their representative quite near the box as well. Could prove problematic. With that tiny little bit of cover out in the open. Vampire Esports finally able to take that Thorn out. As Missile fires down yet again over onto break. Laid bare out in the open. Really not going to survive that. Tree not there in time. No way, for box now down the hill. This is that second staircase I was talking about earlier. It's the staging. No way, for an absolute advantage. Nigma Galaxy, though, with 3 players still up right now and 8 eliminations. They've really got them back into this one. Stepping back up to the plate now. Vampire Esports did a very, very good job to clear the western side from not the most amazing positioning considering the circle. I know it's time for them to start making this work because honestly, after that first game, on the first day, we really expected great things out of them. And now they're starting to bring it back into form. Donuts USG go down to a nade from Nigma Galaxy there as well. And the north side is starting to get swept. Vampire Esports will be their next obstacle if they want to push this way. But Falcons dominating the majority of this circle. A knock over onto Nigma Galaxy will slow their approach from the north side. That's from Vampire Esports as well. You currently have 6 eliminations. Falcons currently only with 3, but they have caused so much damage in this lobby. If it was just a knock here and there, they are cementing their ground in a very formidable position on the map at the moment. Fluketh, though, with the nade. This guy was on fire on Erangel earlier on in this tournament. Now looking for a little bit more. Morph, 4 players alive. Circle north towards Vampire Esports. A little bit more time there. Rocky did finally go down. The nade took the majority of that down. Red bar health away, leaving only 2 4-player squads alive. Falcon Esports and back to back. We've had probably some of their best results of the tournament so far today. But it might have been too little too late. Not so for the other teams. Falcon, never alone with the MK14. Brutal here in PUBG Mobile. The speed at which he can rattle off those shots is terrifying. There's Ralph. Nade up top side. Not easy hitting these nades from that kind of angle either. But they are in the trenches, and Nigma Galaxy know exactly where to send these nades in. This utility usage absolutely on point. Polo shimmies out wide to the left. Low HP, spotted behind the smoke, will be going down if it is going to be found out. Vampire Esports are still on a track. Go down to it. अरे heavy chicken लिया फिर heavy kills के साथ लिया है इन्होंने अरे तुरतुरी है भाई chicken है भाई chicken है Falcons unfortunately suffering chicken है भाई इनका chicken है तुरतुरी है भाई Vampire Esports just pulling out the broom भाई इसमें तुरतुरी है भाई वो भी stone पे भाई swept this edge of absolutely anyone that might have even dared to have challenged them. Looking for a little bit more loot from downhill. They are really limited on meds right now. You can see Stone absolutely nothing on board to patch himself back up with. They'll be after sharing those meds at some point, so they will have to group back together. But Vampire Esports, they have been on a warpath. Hamodi really taking the fight to back as well. 2 players up and standing for them, but it's only 1 player now. Just Hamodi himself with a 1 versus 1 against Killswitch. Finds some shots underneath the vehicle, looking for more, but down is there, and it's J-Way to stand up tall for back on the top of the hill. Can they get these reses and get back to 3? Swings out wide. Vampire Esports tries to take advantage of the situation, but Falcons, they're too fast with it. They're right into the scene. Peregrines here in the battlefield. Looking to get on that hunt. J-Way behind the buggy, taken down. 4 players for Falcons versus the Vampires. The wings are wide span right now, and this is where they start to block out the sun. But that's 1 going down already. Stone finding again, no meds whatsoever. This fight is one of attrition, and it absolutely is that Falcons have the betterment in terms of supplies. And Yusef's position behind this great as well. If it finds it onto Stone, is great, but it looks like Stone has the info that there is a player there. What can be leveraged from this spot? Circle moving more towards Vampire.
भाई दिख रहा है भाई. See him in the grass if you're Yusuf, but that's mainly because we've got the X-ray on right now, so very difficult for Yusuf to even identify this. Question is, how much utility does Vampire Esports have left? And I think they've got absolutely nothing. Luckily, there was a loot crate on their side, but it's one apiece either side. Never alone, nade in hand. Stoned actually finds Yusuf, and he can't quite hit the shots. That takes him down to 2. Vampire Esports are making this happen. 10 eliminations up to 11 as Never Alone gets tagged. In they go with the push. Fluke at the defeat as well. Never Alone goes. It's all down to power for Falcons, but the Vampires running up the hill will be able to take it down. It's Vampire Esports with a chicken dinner. What a resurgence from this team. With absolutely nothing in the back pockets, in the backpack whatsoever. They just make this happen. Real bushcraft training for the Vampire Esports team. इनके स्टैट्स सुनो लास्ट 3 मैच के. सेकंड पे आए थे, उसके बाद फर्स्ट आए थे, उसके बाद फिर से फर्स्ट आए. 3 मैचों में इन्होंने कम से कम सबकी बुंड फाड़ दी भाई. 3 मैच में लिटरली. भाई सेकंड मैच, भाई एक मैच में सेकंड है, उसके बाद 2 बैक टू बैक चिकन. भाई हैट्रिक चिकन होता अगर वो 1v1 उसका निकल जाता वहां पे. भाई स्टोन They were both there, means that race is still going to be close, right? It's still going to be really, really tight. Not only that, Nigma Galaxy with a good, solid performance in that game. Crazy भाई. यार पॉइंट्स टेबल बता दो भाई. अब तो बहुत गंदा लीड ले लिए होंगे ये लोग. हाँ, ये लोग तो गंदा लीड ले लिए होंगे भाई. मेरे को लग रहा है इन लोगों ने बहुत गंदा लीड ले लिए. क्या बोलते हो? 20 पॉइंट का लीड तो रहेगा मिनिमम. 2 मैच ही बचे भाई. भाई 2 मैच ही बचे. 2 मैच ही बचे भाई. 20 पॉइंट का लीड है ब्रो. बहुत ज्यादा है. अनलेस इनके खराब मैचेस गए. और 21 पॉइंट का लीड है भाई. 21 पॉइंट का लीड है भाई. फर्स्ट और सेकंड में स्टालवर्ट थर्ड चले गई. स्टालवर्ट सीधा थर्ड चले गए भाई. आरएसजी 6 चले गई. 190. सेकंड पे फाल्कन 169 और 190. इन दोनों में से दोनों में कितना 21 पॉइंट का डिफरेंस. स्टालवर्ट 166 4 170. 24 पॉइंट का डिफरेंस स्टालवर्ट और फर्स्ट में. भाई डेंजर भाई. डेंजर डेंजर डेंजर. टॉप 3 टीम्स में से है भाई. वैम्पायर का ट्रॉफी है लिटरली. ऐसा देखा जाए तो वैम्पायर का ट्रॉफी है. बस 2 मैच कंसिस्टेंट 10 पॉइंट 15 पॉइंट निकाल लिए. अगर वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स 2 मैच में 15 पॉइंट निकाल लेते हैं, अगर वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स 2 मैच में 15 पॉइंट निकाल लेते हैं तो ट्रॉफी जा रही है थाईलैंड. खत्म. डेंजर भाई. स्टोन्ड भाई डेंजर है भाई. विद स्टोन्ड मैन. क्रेजी मैन. क्रेजी गेम प्ले. क्या मैच जा रहा है वे. क्या टूर्नामेंट जा रहा है वे, है ना. 3 मैच में मेरे हिसाब से इन्होंने 2 चिकन और 1 सेकेंड 60-70 पॉइंट निकाल लिए वे इन्होंने, है ना. 60 या 70 पॉइंट निकाल लिए इन्होंने 3 मैचेस में. ऐसा कमबैक हो तो भाई कोई रोक ही नहीं सकता है भाई. वीपी का फैन हो गया हूँ ब्रो. सही में भाई 100% यार. हैट्स ऑफ भाई. हैट्स ऑफ. डेंजर है ना भाई ये वीपी वाले. भाई इन्होंने अपनी छाप छोड़ दी है भाई. पहले मैच से ही छाप छोड़े. पता है ना पहले मैच क्या हुआ था. 24 किल चिकन. 24 किल चिकन भाई. सोल क्या पोजी पे बता रहा हूँ. 17th पे अभी अच्छा जंप मार सकते. कितना जंप मार सकते पता है. 2 मैच अच्छे जाएंगे तो भाई टॉप 12 जंप मार सकते हैं. 2 मैच अच्छे जाने चाहिए बस. 2 मैच अच्छे जाए यार. Ladies and gentlemen, Vampire Esports, the first back-to-back chicken dinner we've had. The team from Thailand, we were definitely worried after day 2, considering they couldn't replicate the performance from day 1. But Sertani and Co, they've been able to, I think, take first place away. Yeah, I think we can agree, Clarence. This circle was
horrendous. Yes. Next map in 10 minutes के कोई तरीका है? They got some really 10 minutes कौन रुकाता है? where you can play from. 10 minutes मेरे को यार बीएड कराने जाना है यार. ये लोग ऐसा करेंगे तो कैसा यार? Position, so that's why you see such high. यार अगर बैंगलोर जा रहा हूँ यार जरा दाढ़ी वाड़ी कटाने का सोच रहा था यार. ये लोग यार ऐसा करेंगे तो भाई कैसा यार? Feeling the flow here. भाई जरा 9 बजे के पहले कंप्लीट कर दो भाई. जरा दाढ़ी कटाना है तुम्हारे भाई को. बीएड ट्रिम विम कराने का यार तुम्हारा भाई का जा रहा है यार. बैंगलोर जा रहा है. जरा बड़े फैन गर्ल्स मिलेंगे यार. थोड़ा weird. Well, this was a test, a proper test, a Stalwart ending up on the side of this mountain as well, and they played it phenomenally. I'm very, very impressed by what we're seeing from Vampire. Gentlemen, that victory right there for Vampire Esports was a 200. But Vampire is odd, है ना? Vampire Esports is odd, Vampire Esports is odd. Leo. एक सेकंड आ गाइस. अरे म्यूट क्यों कर दिया इनको? Donuts, like they fell off way too much yesterday, so 11 points. Like we need to see top threes coming out from this team. Yeah. No, definitely, and likewise for teams like TJB, etc., and things like that. 9 eliminations going their way, given these circles. Not too bad at all, but again, a little bit too little, too late for these kinds of moments if you're wanting to be aiming for the very, very top. All right, well, go ahead, Max. No, I was going to say Nigma Galaxy, though, like their push from, like, they were one of the bottom teams after day one. Like, their push into top 5 is absolutely insane. So they get a few more games like this, like AfterParty Showdown. It's in the pocket for them. Oops, 7 seasons. Yeah, and it's going to be extremely fun. If you guys haven't checked out how the format will work, well, obviously you're going to find out in less than a week's time, but it's going to be all about certain achievements you भाई पहले RRQ का भी ऐसे डोमिनेशन रहता था. एंड में खतरनाक आते थे. स्टोन भाई भी बहुत पुराना प्लेयर है, पता है? बहुत पुराना प्लेयर है भाई. ये उसके लिए खेलता था. मिथ स्टोन. वैम्पायर स्नैक्स नहीं रे. IND स्नैक्स मैन. क्या बोलते हो? नो आई विल स्टॉप VP इन PMGC. अभी तो पता नहीं यार PMGC का अभी जो चल रहा है उसके बारे में बात करो यार. जो आने वाला है उसके बारे में बातें मत करो भाई. करंट चल रहा है उस पर बातें करो. डेंजर टीम है भाई बट वैम्पायर भी है ना. देखो भाई 1900 डैमेज. सॉरी, इधर भी वैम्पायर उधर भी वैम्पायर. प्रोडक्शन तो है, ठीक है. इधर भी वैम्पायर है उधर भी वैम्पायर. प्रोडक्शन तो है. Day 1, day 3 on the left side, day 1 on the right. Yeah, it was going to be hard pass average eliminations from day 1, but they're almost there. ठीक है, day 1 और day 2 का ऐसा कुछ बोल रहा had that first game with the 24 point eliminations and things like that, but these last 2 games especially absolutely blasting here for Vampire, and very, very respectable indeed. I think especially Mike has been really doing so much for the team, like finding the off angles, closing off some really strong positions in those end game circles. Like I think Mike is my personal MVP for this team at least, and he's been doing a lot to get success for the team. Yeah, I would agree. I mean, keep in mind, right? There's still RSC won't play after party because this week they have PL finals. Same है? He could be catching up now. RSC's going down. PL finals होंगे? Yeah. You know what? अबे यार मैं watch party करेंगी PL finals का. क्या बोलते हो? Later on. क्या बोलते हो? But I think what's interesting, right, is this kind of shows though, like Vampire have been so consistent today. Day 1, if we look back on it, if we really think about it, यार they weren't amazing. वो रसमलाई खा ली थी ना यार. थोड़ा रसमलाई खा ली थी ना यार. 5-6 रसमलाई खा ली. थोड़ा नींद आ रहा है यार. समझ रहे हो? मीठा खाने का नींद आता है. मम्मी को बोला था कुछ खाने के लिए तो भूख लग रही है. मम्मी बोलती पाव भाजी है. बोला पाव भाजी अभी स्ट्रीम पे तो खाऊंगा नहीं. सुकून से बैठ के बटर डाल के प्याज व्याज डाल के खाऊंगा आराम से. बोलते क्या है? मैं बोला मम्मी बोलती रसमलाई है. बोला रसमलाई दो, भूख लग रही है. मतलब कोई रसमलाई पूछता है तो 1 पीस 2 पीस देते. मेरे मम्मी ने 5 पीस दे दिए रसमलाई के. मैंने 5 के 5 खा लिए. तो अभी थोड़ा झूल रहा हूँ ऐसा झूमरे पैसा हो रहा है. ठीक है. स्वीट ज्यादा हो गया. स्वीट तो जो है सो कल बैंगलोर पैदल जाना पड़ेगा. कार्डियो कर रहा हूँ. पैदल जाना पड़ेगा बैंगलोर. इतना ज्यादा स्वीट होगा. In these games, especially on bad circles, right? And it converts into extra elimination. Vampire versus RSC drop fight confirm. No, confirm. हाँ ठीक है. तू ही है ना बीच का दलाल. तू ही है ना इन दोनों का फाइट कराने वाला. हाँ भाई चलो ब्रोकर तू ही है ना. आइए गाइस, ये है ड्रॉप है. ये जगह है 4 BHK 5 BHK. तो आप दोनों टीम उतरोगे तो एक रूम पकड़ के आराम से फाइट ले सकते हो. ड्रॉप फाइट ठीक है भाई. हाँ लोफी बॉय नाम देखो. बोल रहा कौन है?
RNC वर्सेस वैम्पायर ड्रॉप फाइट कंफर्म। नाम कैसा है भाई का? लोफी बॉय। लोफी बॉय भाई जाओ लोफी गाने सुनो तुम कहाँ ये सब करा रहे हो? Pure average damage a game. भाई आज का दिन देखो RNC का कितना खराब गया है। डे 2 देखो, डे 2 में 8 किल का एवरेज था, 1700 का डैमेज था। अभी का आज का दिन देखो 1 किल का एवरेज, almost like above 8 average elimination per game, and now just above 1. क्या बोलेगा? I mean, I think the race for first place for RSG maybe is over. Top, no, they can still make it into a very good position, get some extra prize pool. Like RSG can make it up there, but first place, I think they are slowly but surely falling out of relevance. They've bled out in a lot of these games. It's like we've seen them lose 1 or 2 early, and then from there, from there, how do you actually recover from that situation? You're constantly going to be hounded. If anybody gets whiff of the fact that you are not all alive in, say, a compound, for example, they'll push hard onto that because they know that you don't have the manpower capability of being able to shut them down. So once those early deaths happen here, one of those early eliminations happen, it's difficult to recover. And the main issue is that we see them like get those 0-point games, right? You've seen like Nigma Galaxy and Stalwart continuously getting those points in. Like they are not only not winning any points, they're falling behind the competition at a pretty steady pace. So they need to get themselves back in action here in these last 2 games. Yeah, and gentlemen, we've been talking obviously about the overall rankings. We're going to look at in a second. अरे यार कुछ रुको यार, अपन आज लास्ट डे आखिरी बार देखने मिलेंगे यार, ऐसा मिस थोड़ी कर सकते यार। आखिरी दिन है, मैडम को देखेंगे तो सही यार। कहाँ है मैडम हमारी? Rata. Are? Tetapi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, pastinya kita mau shout out kepada sponsor kita yang sudah meramaikan sponsor nih karena mir gua. Thank you so much for Rata. Bank dan teman-teman sekalian yang menjadi अरे आईडी पूछ रही है, मेरे गेम की आईडी पूछ रही है। Rata 58127130. Meanwhile di hari pertama kemarin Rata dikomentari oleh Junior JR kalau Vampire final day यार। Ya, oke, ngomongin Vampire. यार आज फाइनल डे यार, कल से दिखेंगे नहीं यार दीदी, मतलब कास्टर यार, कल से दिखेंगे नहीं यार। Gua rasa ini kekuatan review banget sih, review mapping mereka pakai भाई। rebutan terus berarti अभी ये lagi dan kan rata lebih Juga Erangel terakhir kita. Dan bisa melaju nanti ke Afterparty Showdown di minggu ke depan. Tapi sebelum kita melanjutkan game selanjutnya, ini dia ada video yang menarik pastinya yang harus kalian tonton. So check this out. Check this out. Okay, definitely we'll check this out. Instagram ID. Definitely check this out. यार अरे तुम सिम फिल्म देख रहे हो यार, इतना गंदा भी नहीं हुआ है। अरे मैच स्टार्ट हो गया। There as well, but things are क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? फाइनल टाइम पूछ रहा हूँ, कौन जीत रहा है? ये मैच डिसाइडर मैच रहेगा। अगर ये मैच में वैम्पायर ने 10-15 मैच ले लिए तो मैं जा रहा हूँ बीएड कराने। मजाक कर रहा हूँ, मैं करूंगा लास्ट मैच भी स्ट्रीम। अगर वैम्पायर ये मैच जीत जाती है तो इजी थाईलैंड को ट्रॉफी जा रही। लेट्स गो। Hell, coming up next week, starting on Thursday at the exact same time we've been starting throughout these last 3 days. But John on the Blank, why don't you take us into our penultimate match of the day and the event? कौन जीत रहा है ट्रॉफी? 2x कर दिया। And the event, Blank. It's all coming down to the wire. So close at the top. You love to see these little leapfrogs happening. It's all to play for. Yeah, he doubled up there right at the end. But we are heading right over into Miramar right now. And this is where we're going to see the playing path. You can't see it yet, so I'm not going to spoil it for any of you because unlike yesterday, today is a special day where we will be finding out exactly who's going to take that first place prize home, as well as the top 5 who will go through to the after-party showdown. मैं बोला था ग्राफ्टन की मैडम को अपनी जो चैट्स है वो लीक मत करना, वो लीक हो गई यार चैट्स, फिर डेटा प्राइवेसी का इशू हो गया। That is a very, very big lead. 21 points above the Falcons. And I think one important thing that Des was talking about was that, you know, Team Falcons, Stalwart Esports, both these teams have the ability to catch catch Vampire Esports up at that 190-point mark. Yeah, it's still a closable gap, right? It's still very much something that can change on a dime.
Plane Path starting to come through on Miramar, as Jason said, the penultimate match of the day. The Plane Path from Vallademar all the way up to Elazahar. That rhymes, that's nice. Yeah, you like that a lot. What I like a lot is when we get this PMWI watch together, so you can complete those daily missions to earn points, and once enough points are accumulated, tap the rewards icon to claim the corresponding reward. You can participate in the event solo or team up with other players. Both is totally fine. Of course, if you team up, it could be a little bit easier to get those rewards. And just before we head right into game proper, there is a PMWI gun skin and outfit, and that sale period is from the 4th of August through to the 13th of August as well. 50% off PMWI packs, and you get a set straight away and 5 chances to draw PMWI treasure chests. And from tomorrow, the 14th of August, until the 15th of September, so next month, there will be 16% off PMWI packs, where you get 6 chances to draw PMWI treasure chests. And as we head into our final games of the day, we cannot forget the PMWI Champions Celebration from the 4th of August through to the 13th, all using the region of the top 3 teams. Obviously, we know exactly who they are right now. We'll have the chance to win a prize, and it's a maximum of 1 award per user. Saudi Arabia, as well as Mongolia, and also right at the top, Thailand. Yeah, looking to try and pop those rewards into those regions with a maximum of 1 per user. And of course, not only can you get rewards that way, but if you're contributing towards our peak concurrent viewers, if we reach 100 million live viewers watching, then everyone could get items in the 2022 PMWI Lucky Crate with a maximum of 1 award per user. And we want to do that. We want to head into the in-game 2022 PMWI Watch Together event every day from the 11th of August for more information. Now, heading right into it, Seoul already losing one player right off the bat. It's Box Gaming here in Picardo, and these two teams are at it again. They just will not let up. Bensu hits the floor. Goblin also will take a tumble. It's back and forth here, John. 1 for 1 right now, but another knock found swiftly over onto Hector. It's looking Box right now. Team Seoul with 2 players, both close to each other, but their teammates are getting flushed out. Not so for the Box Gaming squad. Akshat and Omega, last 2 standing now. It looks like they are going to get these reses for Box as well. So 2v2, unfortunately, the 2 players from Seoul have been knocked and also eliminated. So no chance of getting those 2 guys back up again, but Box will be able to get up to a full squad. Nice little split from these 2 teams. Happen. Vampire Esports over towards Minas Gerais at the moment, just north of Morph. Morph, kind of a chance, I'll say kind of a chance of making it to that top 5. It is Omega, who's trying to do the do-si-do with these 2 players. Can't quite make it happen. Giving them the fancy feet, finds 1, gets the reload, but goes to the one. Goodness, what a second! It's Omega! Team Soul finds 2 on Box. And Akshat now with a chance to get some healing done as well. They are going to try and take the fight to Box and Trisme. I take it back with a pirouette and a waltz. It will be a quick combat from Team Soul there. Beautiful stuff. God level भाई Omega Omega खतरनाक खेल रहा है भाई. Scenario that we did not expect to happen. Now Trisme and भाई Omega जॉट रुकना नहीं चाहिए स्क्रीन खत्म हो जाता है. These players are, but Akshat immediately moves out the way. Wiser. अरे तुम इनको यही टाइम पे लैग करना है क्या यार? तुम यार ये कैसा इनका प्रोडक्शन है? ये देखो क्या है इनका. Picardo right now bathed in bullets. Omega जॉट इन द 10 HP में मार दिया बे. Everywhere, blankets gone back and forth. Losing 2 players early. When you're in this central position, really far from ideal for both of these teams. It's not what you want to see, especially if you're looking to just try and put as many points on the board as you can. Try and ladder up to those higher earning placements on the overall tables. Just getting those points right now. See, especially if you're looking to just try and put as many points on the board as you can. Try and ladder up to those higher earning placements on the overall tables. Extremely important. Just getting those points right now, every little bit counts, especially if you're trying to hold on to those top 5 spots currently claimed by Vampire, Stalwart, Falcons, Damwon Kia, as well as Nigma Galaxy, who are all set right now to make it into the AfterParty Showdown. There will be an extra $1 million on the line, including the $2 million from the PMWI event itself. So
Lots of money to be had here in the PMWI as well as the After-Party Showdown, which will be a little bit more fun. We got a load of prizes there, but you'll find out more about that on Thursday. I'm sure Jason Kaplan will be very happy to fill you in on all the details when it comes to them. But right now, it's all about these final moments of the PMWI. So many regions facing off. For Glory. To try and claim that top spot at the moment. It's the Thai team on the top. Vampire Esports, who started off the tournament marvelously strong. The 24 elimination game. As James said on the desk, we didn't think they were going to be able to get back up to that average, that day one average eliminations, but they've nearly done it so far today. Another good performance would tip them over that edge and plunge them into the precipice of success. Which is not a metaphor used often, but I feel it fits here. That's fair enough. Well, I think UMP it was very much the night on day one. The sun apparently came up day two, and Vampire withered away. But as nightfall once again, here in day three, it's time for Vampires to reign supreme. See exactly what they can get done, but you know, there is still those 2 games and 21 points. It may put you just ahead of teams, but at this point in the tournament, it is miles ahead and can look quite daunting. But Falcons and Stalwart, we know these are 2 teams. Daunting is just another word in the vocabulary to them. They'll make it happen regardless or not. Rockets in the chat. Not too many teams outside of Picardo struggling right now. Fairly disparate in positioning. Not really clashing just yet. But RSG, TJB, VIVO keyed from the north side, all starting to make their way more central. You can see Morph there as well on your screen on the right-hand side, on the north end of Los Leones, potentially looking for a central position as well. Morph having a slow comeback from day one and making it onto the first page of the leaderboard today is actually somewhat of an achievement in my opinion. You know, starting day one in a firm 18th place, start crawling their way back up to here. Talking to the coach of that team, and you know it's an 18-hour flight, so. I mean, I was only on a 6-hour flight, and that was rough to say the least. But it got delayed. It did get delayed. That is correct. But regardless, you know, to come here, compete the highest level, that's what you got to do as a player. And really, Morph has made it happen. And you've got to be proud of the Indonesian team, especially if you are part of their region. Be able to crawl back up, climb back up at this point, you know, with the head held high. Again, though, there is still a chance for Steve to get into top 5, and that's what we love about the PMWI, is that right now it is so scary for a lot of these teams at the top, because at any moment you can be shunted out of the top 5. I mean, the gap between 1st and 5th right now is fairly significant, sitting at 54, I believe, between the two, if my maths is correct. As they say, never do maths live on air. But that gap, whilst it seems daunting right now, it just requires the team at the top, currently Vampire Esports, to have a bad game, and that gap can close very quickly if you're one of those teams that can have a very, very good game, as all of these top 5 teams are. But the gap between 5th and 6th place, it's so much closer. The laddering up between 3rd and pretty much 7th is really still all to play for. Look at the map, new circle. Coming your way very, very shortly. Right now, Stalwart up towards San Martin. Action still claiming the top spot with 35 eliminations. But check that out. Stoned actually made his way onto this leaderboard again with 31 eliminations. And we thought Lightning got onto that page very, very quickly. But looks like Stoned is very hesitant to let that disappear. And with the back-to-back chicken dinners also just behind Action in terms of damage. You know, that could be a shake-up towards the MVP. Let's go Rockets in the chat! Let alone just Vampire Esports' current point totals. Circle heads over towards the eastern side, towards Aberdeen. We've seen this circle previously in the tournament before. Very rough to play.
Graveyard may as well be a literal term for the position on the map, considering there is very, very barren, and that is where so many people do get buried on this map, because it's just very, very difficult to get through that small little funnel. There's so many teams come into that area, they crunch together, end up fighting one another. So a lot of these teams just looking for a good position on the map, and there's still opportunity for this to be an urban ending down towards Los Leones. Absolutely, on a couple of hard shifts, absolutely, it would prove to be pretty tricky. Could also be an urban ending in Picado, which is still very much in the zone, right? So we've got a lot of different potential opportunities. You talked about Graveyard being a literal term at the moment. Falcons sat in that area. Right? Do you think they're going to be able to make it out of this? They have a lot of time to play with, but if they don't take that opportunity, potentially could prove troublesome. It's the question of where this next circle goes, right? If we get really packed into that area, then yeah, things start to get a little bit more difficult. But right now, you can see right there, as I say it, there's your sniper down, beautiful headshot comes through to take the knock. So, you know, this is the high ground advantage you get to play on this little ridge line. But yeah, later on in the game, if we head up here, then it becomes tough. Goodness me, Xiao just sending it back. Killswitch has to duck back out of the window, lest he lose his head. A couple of headshots found there. You can see the level 2 helmet took a lot of damage. Level 3 vest though, so luckily those weren't body shots, otherwise that would have damaged that lovely pristine 3-tick vest. You love to see those. Fortunately, Daku not so lucky, only the one. Just needs to plant his feet on the ceiling apparently and have his head out of view underneath the window. That's going to keep him very, very safe. Yeah, I think that would. Yeah, on the yeah, if gravity didn't exist, of course. Yeah, in a gravityless vacuum, then yeah, absolutely. Assuming he's look at that. FLC. support hai वे लोगों का. Goodness me. The turnout has been absolutely incredible. भाई क्या support है भाई लोगों का, देख रहे हो? Falcons on screen right now, giving them some love. Oh dear me, Damar, don't do that. That's very mean to you, fellow player. Virtual Gaming Squad taking some knocks. भाई देख रहे हो chat, ये देख रहे हो जो chat on करता हूँ. They're down towards the southeast side, trying to make their way through Los Leones. भाई ये देख रहे हो? Wildcats who really hold a very good position up towards the north side of Los Leones. भाई ये देख रहे हो? Hold out both Aton as well as Virtual Gaming Squad and hopefully pick up a couple of points here. Crazy, man. The crowd happy with their performance there, as they should be. Next circle soon to come on to everyone else. Yeah. Well done us. Well done us. Yeah. Very, very good. Nigma Galaxy, slow, well, maybe not slow, but they are last to come in elimination from the blue action, on that western side right now. Just about to pop. We were talking about where those hard shifts could fall, how problematic that could be depending on where it goes. And it's north. Picado on the south side of it, that graveyard position on the east. So for Stalwart, this is actually fairly decent. Picado still in the picture, and with both those teams that originally dropped in Picado and Box as well as Seoul, you know, these two teams, they are not looking too healthy coming into these circles towards the end, so it does mean that Picado can be taken up residence by another team should they want to drop into here nice and quick. And you know, here, we've known them for flying into circles. That's exactly what they're doing right now. Looks like they're heading towards the foothills of Picado, towards that northern side. Damar tries to get across. Naoto taking some pot shots with the Mini 14, but this guy, he's got the move in the vehicle. He's going to do a full flip over the top. Can he land it? Doesn't need to. Drops out, bends the knees. That's suspension. You're right. That is suspension. Goodness me. Bouncy knees. Do you think? He popped a tiny little bend in the knee. Yeah. Kept it in. Springs for thighs, they call him. Goodness me. Lasers for eyes, though. As they do sit now, one of the players from VIVO keyed up. That is the second headshot of the game coming through from Never Alone. Goodness me. Okay. Give this guy a sniper and give him some clear skies, and he'll find as many players as you need here. Falcons are... Well, Falcons here to take names and heads, apparently. RSG in a little bit of a scuffle. Not too much right now, but there's a team just in front of them that they're going to have to be worried about. Morph, I believe, that's just over the hill. As we get a little replay as Damar
Sends it on up and over. We're getting the suspended knees there. Stays alive. Very, very good. But back-to-back, engaging with Nigma Galaxy and not having the best of time of it right now. Nigma Galaxy have been absolutely on a tear today so far, Blank. Their day one performance would not have led us to believe that this is the same team. Well, does go low, but back-to-back, taking a fair amount of shots from Freak here. That vehicle is not going any longer there. Take it on foot now, but still there are shots ringing out towards them. 52 slinking their way across the hillsides. RSG trying to have some oversight. But the ridgeline has been spotted fast. Under pressure from Lightning, one of our MVP candidates, and taking out the vehicle. That's going to do the job. Boom goes the dynamite, thus takes a knee. Very good tracking on this player, honestly, and he's going to go for another here. Ooh, Lightning takes a lot of damage, but they get a second knock on these vehicles. I don't know what's going on, but 52 Esports lose 2 out in the open. Daku here looks at the buggy and just doesn't know whether it's his savior, or in this case, it's a curse. Every single vehicle that 52 Esports has sent through, RSG have torn apart. Morph versus honestly, he's just not looking good for them. Next circle pops down towards Picardo. On the roadside, but it's Virtual Gaming Squad dropping in on down one here. They look like they didn't expect this, but Yafos is already down. Julie, nade in hand. On that forefront, trying to get a little angle there, and be able to get a flash. Yafos. VGS not having the greatest time. Ever alone up in the elimination feed again, by the way. This guy's a madman with this sniper, looking for the eagle eye prize there, but seeing what they can get done in terms of eliminations first. Down one gaming, they've got Team Soul. Remember, they are down to 2 from earlier engagement. South side. Box, similarly, they are down to 1 now. As 52 finally get eliminated. Down 1 here, not looking to go for this full push just yet. Don't need to go for it all the way on this southwest edge. Sung does get knocked by Team Soul, or at least the remnants of them, over towards Picardo. Looks like Akshat does have eyes on from that area. Sung should be resible though. They should be able to get that one back up, hopefully. So Stalwart under fire, action close to VIVO Keyed. He took a knock earlier from the barrel of Never Alone. This is a very important fight for ST, man. With one of our top fraggers in the tournament, action. Trying to get some intel. Pika swings out wide. Very important fight for ST. Might be able to get this player on the wall. Looking for that engagement action. Looks good, and there's the 1-2 punch from Stalwart. Nice coordination coming through on that aggression. The oversight from Adrian, not going to happen there. Not going to work for them. Diego takes a lot of damage from Pika. This is coordination from Stalwart. This is why they are one of the top teams in this tournament. Really well done so far. VIVO Keyed, not even able to put a dent into them. Stalwart. Arey kya baat hai re Akshat? Martin. Guys, rockets in the chat. To the power ando. And onto the east, taking up residence inside this compound. Very difficult to see out, and there's a lot of different angles that Stalwart can take from this area. It just gives them time to, you know, keep a little bit of a timer on this for themselves. They can start to make their move later. It's what they usually do. Right now, this is just an area to keep it calm. Falcon, though, double nade from Powerful onto USG. It looks like Team Falcons, they are not done yet. No, they are just going to keep on going. 2 elimination points now found. Well, that's probably not the story that you tell having watched this game. It feels like they've had much more of an impact so far. RSG with the highest elimination count at the moment, bar Team Soul, who have had 4, but RSG, all 4 of them alive as well. VIVO Keyed. Okay, I thought they were a little bit suffering here, but it seems like Stalwart have had a taste of their own medicine. Adrian from the top rope. Splashdown. Oh my day, Circle. Wow. On top of Falcons now. This is a really big chance for them, but there is another team inside of the circle just to the east of them. Vampire Esports looking to sweep the east side, but they take a knock.
never alone, introducing the world to air conditioning. Chat one hole ahead at a time. Goodness me, the man is absolutely insane with this M4. Bhai, danger bhai. Do you not want to get in the sight lines? And on Miramar, it's the perfect place to do it, right? A lot of open ground. Falcon पे crazy compound, VP पे REGAN पर पीछे team है. I don't think I've seen this Falcon के पास golden chance है. Headshots with a sniper ever. Stone मर गया. Now Wildcats are coming in. Take down मतलब last match decider है, PARO है ना? Esports. These guys are now just last down match to decider 2 है. players. क्योंकि VP के पीछे भी team है. Now for Falcon, Vampire Esports. VP के पीछे भी team है भाई. For themselves for an end देखो ना उसके पीछे. VP के पास IW है. USG पीछे से आ रही है. तो VP के लिए मुश्किल है. With 2 players, Falcon का chicken होना चाहिए भाई ये match. 15 teams alive. Omega क्या बात है भाई? It's only going to get harder for a lot of these teams. At the start of the Omega game, they had 21-point buffer to play with, right blank. So Vampire Esports consistency right now. Should be enough to see them through, barring Team Falcons popping off, barring Stalwart having absolutely stonker of a game, but very much up for grabs. This team Nigma Galaxy, Damwon Gaming close by, the nade bobbles around, it comes back. How on earth do you manage that? I don't know how Omega got in the he chat lives through that one, but somehow he does. Vampire Esports taking down just one player now. Lord trying to send some eggs over the top. Unfortunately, Morph is now out in Omega got in the chat. That climb is ended here. The Wildcats still going though. As a player, Omega just ने with बहुत Boran, shine किया है, है ना? talking to the Turkish casters earlier. Sinan telling me that, you know, Boran on those final days, in those final matches, that's where he really starts to pop off. Nigma Galaxy take a knock over towards Ralph. And Lord as well, jousting up the hill. TJB entering the fray. Omega lone warrior bhai, ना danger मार. Three-way fight right now over on the western edge. Lin spotted. Yeah, you're not going to win that one. Lord able to do the work. Nigma Galaxy play up that hill, take down TJB, and now they can focus their aggression over towards Damwon. But they have taken a lot of damage in the meantime, and Damwon Kia are not going to let it slide. Continuing to hold them back. They're right outside the blue, but the blue is doing the majority of the work. Great Molotovs from Damwon Kia will take out the remainder of the players, taking them to 5 eliminations here. Great stuff here from Damwon Kia. Nigma Galaxy go down, and Damwon Kia, great news for them as well, because they can start to challenge for those top spots. RGS, REGAN.S Gaming at the moment suffering. If they go down here, they might lose out on their chance to push back into the top 5. Boran is just not letting up for the Wildcats. 3 players still in this. Schweppes all in his lows from Vampire Esports. He's starting to ladder up though. 7 teams remain, 17 players still in this. Falcons head to head here with Stalwarts. Unfortunately, it's Stalwart with Damwon Gaming. Damwon Kia, sorry, coming in from the behind. The nades will find their way in towards Store. I have no doubt. Cielo for VIVO Keed could prove to be a little tricksy, if he so chooses, but finding the time might be a better answer. A double nade comes through Damar, able to open things up, but in the meantime, Damwon Kia have descended away from this engagement. They know this next circle is better for them if they can get there. Another nade comes over the top, takes down the 2 players that were knocked there. Now Falcons, they're looking to take themselves somewhere safer. They dealt with VIVO Keed, they've sent Stalwart packing. And now it's time to head on over the road. This is where it gets difficult, but Powerful's already made his way across, but there's still 1 player remaining from VIVO Keed. It's Cielo. And that's what we're talking about. Could be tricksy. VIVO Keed still in the fight. 7 teams remain with Vampire Esports on #1 spot right now, also with a lone survivor. How far can Team Falcons push to try and catch up to that gap? 3 players remain. Wildcats with 3. Damwon Kia suffering. 2 players down. Only the 1 just Junie up, and that's not long for this one. Damwon Kia eliminated. 4 teams remain now. Stalwart, Falcons, Vampire, all still in this. Damwon Kia crash and burn on the side of the road. So a nice couple of shots coming through from top. You can never count this guy out from Stalwart. Falcons, though, they did make their way across. Now the Wildcats. It's here, the Turkish team looking to make up some of the points right at the final hurdle. 20 points right now sat behind the leaders. Falcons, they're going to need
Well, if they get a chicken dinner, they'll be able to get 15 points from that. So they need 5 more points to draw level. And at the moment, there's not that much in the lobby. So Falcons right now cannot jump up and challenge for the first spot, but they can put themselves right at the door of victory for the final game if they take this one home. Last match decider. But top here. Last match is decider, man. VP versus bullets from Falcon. Wildcats. He really just wants to ruin the days of Falcons at the moment. He wants to be the one and his team just behind Vampire Esports. And it is just neck and neck between these 3 teams right now. But Top's find himself a safe position at the moment. Wildcats, I mean, we haven't talked about them a whole lot, but there is a possibility that they could jump up towards that top 5 position. With Stalwart going down, if they can take out Falcons, they could potentially be booking themselves an invite towards that after party next week as well. 3v3. They've got the tickets in the basket. Now it's time to go to the checkout. Well, that won't come till Erangel. We'll see if they can get there first. Just crouched down, waiting, biding his time. Circle, dead center. Neither of these teams want to make the first move. Never Alone has been absolutely unbelievable this match. 4 headshots so far with the sniper in hand. Powerful, drops the nade over. If you can get that opening, oh, that's perfect. Boran goes down. He was their point man as well. If Never Alone can find the snipe, it's going to bring him into a 1 versus 3, but they push in instead. Rifles in hand. UMP to lead the charge. M4 to back it up. Powerful. Sprays down to foe. And the Falcons ride strong across the top. They want this so badly here in Riyadh that they are going to push all the way back towards Lux. 1 versus 3. The Falcons challenging for these top spots. They want to take this one home, and they will do so. A chicken dinner in the penultimate game. 27 points on the game. भाई कौन जीत रहा है? क्या लग रहा है? कौन सा लैंड जा रहे हो भाई? DEC बैंगलोर. गाइस क्या लग रहा है गाइस? अभी सेलिब्रेट नहीं किया वो लोग. ये देखकर अच्छा लगा मेरे को. इन्होंने अभी सेलिब्रेट नहीं किया. इनको पता है लास्ट मैच बाकी है. और ये चैट सुनने दे. To that top spot, like you said, John. Honestly, where we're at right now is going to be one of those positions where Vampire Esports are really going to have to try so hard to get just past Falcons, who are staying neck and neck with them. And do not count Stalwart out just yet as well, Blank. They were in that game in 3rd place, right? Yeah. They came all the way in late. And that was phenomenal for them to be able to jump on up. Yeah, I just cannot believe what we're seeing here today, because one more game left right now. I just don't believe that there are 2 teams at the top that are just so neck and neck at the moment. I can't wait to see how it turns out. And the race for the top 5 as well. It is all heating up, and it is right to the last game. इन्होंने लीड बहुत ले लिया है फाल्कन वालों ने. We'll be back soon with the desk. बहुत गंदा लीड ले लिया है ब्रो फाल्कन वालों. ड्रॉप फाइट होगा मेरे को लगता है. लेट्स सी. यार डालना पॉइंट्स टेबल भाई. Falcon McLaren. Oh my god. Oh my god. कितने पॉइंट का डिफरेंस है पता है? 2 पॉइंट का. तुमको पता है कितने पॉइंट का डिफरेंस है? 2 पॉइंट का. एंड फर्स्ट और थर्ड में है 20 पॉइंट का डिफरेंस. ठीक है. अगर एसटी को जीतना है तो तुमको पता है क्या चाहिए एसटी को. विनर विनर चिकन डिनर. अगर एसटी को चैंपियन बनना है तो एसटी को चाहिए चिकन डिनर. और वैम्पायर और टीम फाल्कन में से इन दोनों में से जिसको जीतना है, जो पहले मरा वो हार गया, दूसरा वाला सर्वाइव कर गया वो जीत गया. 2 पॉइंट का डिफरेंस है. ये है PMWI वर्ल्ड इनविटेशनल और लास्ट मैच बचा है, फाइनल डे है. इससे बेटर टूर्नामेंट तुमको देखने नहीं मिलेगा भाई. इससे बेटर टूर्नामेंट तुमको देखने नहीं मिलेगा भाई. अभी मेरे को लगता है फाल्कन वाले जाएंगे मीटिंग करने कोई शेख से. अब मेरे को 100% लगता है फाल्कन वालों की कोई मीटिंग होगी शेख से मैच ब्रेक में. अभी शेख बोलेगा अगर तुम ये मैच टूर्नामेंट जीती, एक कुआ तुम्हारे घर में मम्मी का, एक पापा का, एक भाई का, एक बहन का, चाचा का, चाची का, सबका एक कुआ मैं करती.
तुमको मैक्लेरन कोनी से गिफ्ट करती अगर तुम ये टूर्नामेंट जीती तो प्राइस पुल भाड़ में जाती, अपने को ट्रॉफी मांगती। खत्म भाई। अभी डेफिनेटली इनका मीटिंग हुआ होगा कोई शेख से, तेरे चाचा का, चाची का, मम्मी का, पापा का, सबका एक एक कुआ में देती, तुम टूर्नामेंट जीतती। 2 पॉइंट का है डिफरेंस, माँ कसम 2 पॉइंट का डिफरेंस। शेख बोलते अभी भी social media platforms to the team if भाई, you are कैसा supporting tournament make sure to इतना comment over intense the tournament भाई। social media channels. Make sure you guys check that out. Also make sure to check out मतलब Sunny इससे Gaming, intense because क्या they've है been भाई? able to help support and put this event on for us. A big thank you to तुम them. जीतती, to हम make sure तुमको पूरा दुबई का गोल्डन वीजा देती। दुबई का गोल्डन वीजा क्या है, लोग तो उधर ही रहते। माफ करो माफ करो माफ करो। तुमको यूएसए का मतलब तुमको वर्ल्ड वाइड ट्रिप देती हम, तुम मालदीव जाती, पानी में डुबकी मारती, तैरो। तुमको किधर जाने का, कौन से कोने में दुनिया में जाने का हम स्पॉन्सर करती, तुम जीतो टूर्नामेंट ट्रॉफी लाती सऊदी अरेबिया में, मजा आ जाता। It is going to be wow. Oh, I'm getting ahead of बाप myself. रे बाप, 2 पॉइंट का है भाई। The circles were wild in this 2 game. पॉइंट का है भाई डिफरेंस। Yeah, why? पोल डाल रहा हूँ, देखते हैं कौन जीतता। So many पोल डाल रहा हूँ, shifts, so Falcons able to capitalize on that. I think they had a great drop on them, but I can understand all the concerns that they had about those high ground positions overlooking the roads. You have to deal with all those teams before you then come back to the circle. So that in itself causes so many trials. It's like a fire, it's a gauntlet. Even if you don't like eliminate the entire squad, if you just reduce the numbers and regroup on the other side of the road, you have a very clear chance of denying that win rate from the Wildcats, which is exactly what they did. 27 points, that's huge. And I'm not gonna lie, you have some tournaments that become a little bit boring towards the end because you know which team is going to be taking the trophy, which team is going to be taking that first place. Not here. Like we have no idea who's going to take it home. I think it might be a 3 or 4 point difference up at the top. Something like that. Probably something like that, yeah. Well, you know what, Guys, we're going to get into that in just a few seconds. We're trying to rush through here because you can see 3 minutes and 50 seconds. So we get into our final match of the event. But really quickly, a big thank you to Aramco as well for supporting this event with G8. You guys at home? Guys, पोल डाला है जरा बताओ। Not $500,000, but you can win some more prizes if you post your पोल डाला है जरा बताओ। Make sure to tag the official शेख जीतती, फाल्कन जीतती, एसटी जीतती या वीपी Stalwart जीतती। Esports can actually great meme. I'm telling you to get चला अभी भी शेख जीतती। John had to hold me back. Yeah, he did have to hold you back. भाई यहाँ तो ओमेगा ने जो मारा है, ओमेगा के लिए 1 सेकंड, ओमेगा के लिए ओमेगा के लिए हो जाए ठीक है। मैं वॉशरूम जा गया हवा नूं चीरदा जावे लगे बास दी चुंझ हट हथ नहीं आंदा जट नहीं फड़ लैंदे इफ दे कट गैसोलीना फुल्ला टैंकी हत्थां विच बूजिया महंगी दे लाउंदे जांदे अड़िए नी सिर लाइटां लगदियां तारे चढ़े सिरां नूं ने पारे जांदी उड्डदी फरारी लगे लाइटां लगदियां तारे चढ़े सिरां नूं ने पारे जांदी उड्डदी फरारी लगे V12 इंजन ते गुंजे ललकार लरन दी सेना नालों तेज रफ्तार ने 3 डिग्री हाईवे ते उड्डणे नूं जांदी जिद्दां इंजने लाया हुंदा बब लजार ने रौला सुन कार दा नी सीने उड्डी डारदा नी टैरां देख रोडे उत्ते छड्डी लट्टां लगदियां तारे चढ़े सरां नूं ने पारे जांदी उड्डदी फरारी लगे स्पेस लट्टां लगदियां तारे चढ़े सरां नूं ने पारे जांदी उड्डदी फरारी लगे स्पेस लाइटां लगदियां तारे चढ़े सिरां नूं ने पारे जांदी उड्डदी फरारी लगे स्पेस 60 MG वाली अड़ बल्ला लेमनी पॉप कर लगदी ना दुनिया जेवनी गड्डियां दा चक्का यारा रखिया है तां जदां मस्कली propulsion दी गेम नी गिल्ट लोंज कुड़े बोलदे आ घट जदों बोलदे ते मूंह ते बकी लाउंदे लाइटां लगदियां तारे चढ़े सिरां नूं ने पारे जांदी उड्डदी फरारी लगे स्पेसशिप लाइटां लगदियां तारे चढ़े सिरां नूं ने पारे जांदी उड्डदी फरारी लगे स्पेसशिप लाइटां लगदियां तारे चढ़े सिरां नूं ने पारे जांदी उड्डदी फरारी लगे स्पेसशिप यल्ला हबीबी हमको शेख का मैसेज आती, शेख बोलती है अगर तुम फाल्कन को सपोर्ट करती हैदराबाद में $2 मिलियन आती। ओके शेख सर,
Guys, Falcon OP in the chat. Only Falcon That support. is insane. Like the domination from Sheikh bolti paisa absolutely Oh, huge. look at Vampires here, getting ready, getting underway. They know they have the game currently in their hands. $500,000 in their pocket if they can hold on to this lead. But our commentators are going to have to come in here, and hopefully they're hyped up, because I'm hyped up. We're seconds away from our final match here of the PUBG Mobile World Invitational 2022. First place, $500,000. Top 5 advances to the After Party Showdown next week. John and Blank, take us away. One more ride, once more into the breach. In 30 seconds, we're going to be taken to the skies over Erangel for the final time here at the PMWI. Last match, guys. To crown our champions. It is all coming down to this 2-point difference between Vampire Esports and Team Falcons. Fifth place chase still on the cards. It is real scary at the moment. RSG, 137 points. Nigma Galaxy, 148. Definitely possible if Nigma Galaxy has a bad game here for REGAN.S to get back into that top 5. But it's the DenizBank Wildcats who have been really pumping stuff out in that last game to try and push into that top 5. Let's go. The Turkish team, you know, this would be absolutely monumental. Guys, Rockets in the chat, GMD in the Stalwart, chat. 178. Points exactly behind Vampire Esports. We cannot count them out yet. From day to day, they have been our most consistent team. Certainly have. 15 तारीख बस 14 को तो मैं जा रहा हूं कल बैंगलोर कल स्ट्रीम नहीं होगा परसों मिलूंगा As the playing path comes on in for the last time. Let's go. From Novo up to Stel, but this time around क्या drop fight हो सकता है leaning. So Gatka, Hospital, Georgia Pole, a little bit late drop. Another Neuer though. Instant drop there for Stalwart. They can get looted and booted and ready to go. Looking at our leaderboards at the moment, Vampire Esports still fielding some 31 eliminations, Lightning 32, but it's still Action, who really has been man of action for our tournament so far, getting some absolutely wild stuff done. Wildcats also will be able to get themselves onto North Sosnovka almost immediately, even maybe down towards military base, and Vampire Esports will have to drop very, very long here with this eastern playing path over towards Quarry, so that does make things difficult for them. Let's go. I think he got all those headshots last match. I mean, I wouldn't be surprised. That was quite impressive. Action just about holding on to the knock record, 31 to 30 to 30 on our leaderboard right now. The MVP race must be absolutely spiced out the wazoo right now, Blank. Honestly, we've had so many good individual players from practically all of these teams that it's going to be a weird one to check it out. Oh, dear me. Ooh. Oh, this is one of the circles where maybe teams will change their drops. And in the very final match of the PMWI, we are seeing an absolute curveball being thrown at us. Guys, crazy zone. Wow. What a shift on an eastern plane as well. This is really going to clump those teams up to that eastern side, right? Not a lot of teams are going to want to go all the way out to Georgia Pole, so that's TJB who could potentially be hit here on a difficult position for themselves. You can see they are on the north side and going to try. Well, we can see that they are on that north side, still trying to go for that sort of area. But do they wrap back, try and go somewhere else? Last match, sab YOLO खेलेंगे by the way. Sab YOLO. They want to get looted there straight away, but it's a struggle just with the way the circle's gone. But this is going to be a very interesting ending to our tournament. Diego, nothing but a pistol in hand, and TJB have got looted up just a little bit faster. Yeah, even that shotty, that UMP, there's no way you could stand up to that with a pistol against 2. I mean, miracle shots would be necessary, but it's just not going to happen. Nice high nade there to scarce yellow if nothing else. Len gets the spray down. Okay. There is potential here with that shotgun in hand to shut down a stairway push. With the K9 for Lin ready to bark. Just want to leave him alone here. Don't even bother with it. Real struggle now for VIVO, Keed, TJB, but these are not the teams in the story that we are telling today between Falcons, Stalwart, as well as Vampire Esports. Have really stamped a place in our memories, and hopefully yours too.
Certainly have. Certainly mine. This will be an event to remember for sure. Oh! Watching. Okay, hang on a minute. There we go. That was the bar I was talking about. He's ready. Iron sight. Game skirt. क्या बात है भाई? TJB With Lin heads up top side. Now it's one last player. K9 tries to send it in there, like you said. Cannot close the jaws around the target. I sent some UMP shots down there. Slam करेंगे सीधा पिस्तौल लेके जा रहे हैं चेस कर रहे हैं क्या? वो नहीं कर रहा है. If you've been following these storylines, if you've been watching TJB over these last couple of days, following that race for the top spot, then of course you have been watching with us and trying to earn those daily missions, to earn points. Once you earn enough points, once you've accumulated those, you can tap on the rewards icon in-game to claim the corresponding rewards. You can participate in that event solo or team up with other players. Both ways is absolutely okay, and teaming up could help you get that reward even easier. There's also another reward here for everyone at home. PMWI gun skins and outfits through from the 4th of August through to the 13th of August. It's 50% off PMWI packs. You get a set straight away and 5 chances to draw the PMWI treasure. Okay, Lin. It just looks so good on screen. Yeah, well, if you aren't going to jump in for those sales, and I don't see why you wouldn't, the 14th of August, so tomorrow that starts until the 15th of September, there will be 16% rather of PMWI packs where you get 6 chances to draw PMWI treasure chests. Or it's gonna be Stalwart Esports with a 4th of August all the way through to the 13th, which is today. May the best team win. Ending soon. All users in the region of the top 3 teams will have a chance to win a prize, and that's a maximum of 1 award per user. And, you know, talking about getting things done and celebrating, you know, if you tune into the PMWI live stream and we reach 100 million live watching, and everyone could get items in the 2022 PMWI Lucky Crate. That is also a maximum of 1 award per user. So visit the in-game 2022 PMWI Watch Together area every day from the 11th onwards for more information. Looking back at the game, we're back on board with Vampire Esports, who have opted to head down towards Quarry and Primorsk. They didn't want to do anything too fancy here, especially in the last game, and honestly, I don't blame them. This is the smart thing to do. Aton Esports down towards Milter Power. A drop that they're very familiar with. Back-to-back, though, move slightly across from Milter. And it's REGAN.S who actually moved down towards that shelter area, you know, just taking up a little bit more room on the southern side and actually coalescing quite quickly here. TJB did strike out towards that North Georgia position. No teams in very close conflict right now, which is really what we're looking for. Wildcats and Stalwart potentially coming into a scramble. A scrabble for bridge control on the eastern bridge of Military Island. Let's see. No shots just yet ringing out. Scouting being done right now. You know, Wildcats are actually moving very, very close, like you said, John. Stalwart's just playing it pretty slow. I think they kind of expected this too. With Circle being so much towards the east, this is one of the few times that Wildcats might want to even go for this eastern bridge crossing, and where it really does benefit Stalwart. It also means that it looks like Box is getting directly in position just outside that eastern bridge. They have vehicles. We haven't seen really any bridge camps up until now. Back-to-back tries. Over towards Aton Esports, very close together in Milter Power and Milter. Looking at where this circle is, I mean, you've got to imagine that Milter is going to be a strong position in these coming minutes. So getting that claim early could prove to be good, or could prove to be a downfall if a lot of teams decide the same, right? If they decide everybody wants to go in there, everybody wants a piece of that pie, it could be just too much pressure to bear and nobody could come out as a winner-winner chicken dinner from that region. Just have to wait and see, Blank. That's the beauty of it. That's the beauty of PUBG Mobile. And we do love PUBG Mobile. Hell yeah. 100%. Fair few teams out inside of the blue at the moment. Vampire Esports, this is one we always expect, especially going down towards Primos, Quarry and Ferry Pier. They are now starting to make their move, and make their move they will have to. It's not one of those games where they can just sit
pretty and wait this out and take the first place prize. Flower looks over towards Yusuf. Good start for Falcons, but luckily they do get that player out of dodge. Look how damaged he is. Going into this game with 3 players would have been horrendous. And luckily able to make it out alive. But like I said, you know, Vampire Esports, they cannot sit on their laurels here. Only 2 points behind them is Team Falcons. So they will need to put up some points, or at least Falcons will need to go down early in this game, which I'm sure everyone here in Saudi Arabia does not want. No, certainly not. And you've got to remember that chase for 5th place spot as well. With Wildcats on 135, facing off against Stalwart on this military island, this is a proving ground for them, right? If they're able to come through, I feel like they would deserve that top 5 spot, but they have to be able to come through. That's a brutal shift. Like, that's a lot of water. That's a lot of water. This actually is quite good for Stalwart, in fact, because it means that they can wait. They don't have to cross the bridge just yet. They can sit around, chill out, and take this game a little bit more slow, particularly with the circle heading out down towards them. So there's no urgency for them, so they can start to make that move if they want to. They're having a right barrel roll with the bike over there. Flower C walks on past, well, drives on past, but does take a quick look out in that direction. Vampire Esports, you can see them just starting to make their way over the coast. Shot up by 2 teams, though, back to back and Stalwart. Never mind, I take my statement back. From ideal. Bad for business. वापस लेता हूँ मैं मेरा statement. Because ST ने तो bridge cross भी कर लिया. Off, so stays alive. The coop left a little bit too far forward for recouping that one. What the? Stalwart going to push in from the back as well. Take some shots over towards Bensu. The firing line is established. Box caught in a mincemeat. Stalwart would love to pick up a couple of these knocks and a couple of these eliminations as well. In fact, actually taking one knock over towards back-to-back and a couple of knocks over towards box. So this is a great time to come in and try and third party. Some people throw the nade out the vehicle. Goodness me, the moving grenade. They really want to get this fight started and underway. They want to finish it quick. They can take that aggression. 2 back-to-back. You have Morph to worry about at the same time as well. They could prove to be useful, but no, sorry. Team Everybody's moving along the south coast, and Stalwart will take heavy fire, trying to suppress this line as top takes a tumble. This is not good right now. Stalwart down to 3 players. They're taking this game very, very fast at the moment, trying to be swift with it because they know they need those eliminations, but it's Soul who comes in right at a very crucial moment for STE. You can see there's rockets in the chat behind them right now. Everyone on this coastal line. Oh! Team Soul spraying down the back again, box. They have just had such a terrible time on this rotation. Nice Omega. Omega लिया दूसरा भी. And they are just not going to क्या बात है, क्या बात है. है. तीन किल. Rockets in the chat. They're not completely out just now. Ando guys, ando. 10th place at the start of this game. Ando struggling to get much more done with just, I believe, break left for the squad. Yeah, there he is. You can see full HP. Goblin has been spotted. Action. Contending for that MVP spot as well. You've got to remember, there's a bit of money on the line here as well for Action alone. So even if Stalwart don't have the best of performances, if Action can get a couple of limbs on, if he can get a lot of damage in, would be good. Cheeky peek coming through. Steve versus Soul Man again. From Action. He's one of our top fraggers. Vampire Esports, you can see them on the map right now. अगर ये zone मिलता power चला गया ना, of all of these teams, they hear this shots. अगर ये zone मिलता power चला गया ना, they just want to find a position. मिलता power उतना लंबा shift तो नहीं लग रहा, मिलता का ही zone लग रहा है. Too much fire. Stop just towards the north side of Milter, waiting for this next circle to pop. Now down one. Oh my goodness me. This is a circle to end the PMWI on. I mean, it's certainly a circle, that is for sure. Aton Esports, USG, both pretty happy with this. They were backed into a corner, but now it looks like they're... Wow. Okay, all right. How much of the circles is currently water right now? I feel like it's अब बनना पड़ेगा, समुद्र में डुबकी मारना पड़ेगा भाई. This peninsula far from kind. Can the Wildcats get across as well? Of course, they're still in that race for 5th place. Vampire Esports, though, down one Kia, rocking on past. Stone gets tossed out of the vehicle on the rotate. They lose one here. Doubtful that they'll be able to get Stone back up again. We'll see
If there's any camaraderie here for the Vampire Esports team to get them back up, back in action as a full 4. Staying alive though, they are answering and answering in force. Vampire Esports find some fine-tuning, and they are absolutely furious that they've lost their teammate there. On but across the way for down 1 here with 2 players remaining now. They're in 4th place, and with good performances from other teams, are at risk of dropping from those top 5 as well. This is terrifying at the moment, down 1 here. Yes, they tried to send it dead central, but they've only made it in with all the points are equal now. VP ने 2 kill मार दिया, तो 2 point की जो lead थी वो खत्म हो गई. अब दोनों equal चल रहे हैं. It would be such a shame जो for them अच्छा खेलेगा वो to lose जीतेगा. the after-party showdown right here. Just जितना है तो survive करना पड़ेगा ना मेरी जान. The Falcons so far being a little bit quiet, but I imagine that's about to change. 4 rivals swinging in past the back of the tower along that cliffside. 4 rivals. This push for them specifically is going to be really, really treacherous. In go Box Gaming's last player. Break against Stalwart with 3. It's not going to last long. Action picks up another one in the race for MVP. He's wanting to hold this. Pika knows that a nade gets thrown out, sees the little underhand as he walks in. It was an underhanded play. In this case, both players from STE, they just waited out. Falcons right on the northeastern edge. 1 player on the floor. It's Damar here. Most likely will lose him. Appy searching the smoke for that player. Powerful, takes a bit of damage. Yusuf's on the drive. They're looking for areas to just stay safe in. It's those 2 points they're behind him. Vampire Esports similarly not in the best situations. Feels like Team Falcons kind of let that one happen, allowed 4 rivals to descend from their cliffside position, and now are potentially on the back foot in their race to try and challenge Vampire Esports for the top spot, for the trophy. Vampire center of Vampire Bizo. Vampire Bizo. Vampire ले गया क्या? मेरे को लग रहा है This is good for Vampire Esports. You've got to admit, these guys are like one of those medieval battering rams. They will make the circle through rain or sunshine. It does not matter. They were in Quarry, Primos. Now they're in the dead central of the circle now, despite even incredible hardships that are coming out here. Now Falcons, smokes are down, they're going to get through the gates, get through the fences, and hopefully find their way into this circle, but USG are all looking over towards them. Donuts USG taking those pot shots, but they can swing around the north side here. Zone 4, so the zone won't be super hardcore right now, but if they get knocked outside too far, they might be able to get that res. Making it to these buildings, really, really good news, but they're going to really expend a lot of their vehicle utility here. Nigma Galaxy यहाँ पे खाली कैसे है? Down towards them, they see Morph off in the distance. अभी भी कुछ भी हो सकता है भाई. Pretty close by, if not a little bit closer. अबे तुम leaks दे दो यार. मैं बार-बार chat enable क्यों कर रहा हूँ? Check on the other side, action. Takes a couple of hits from Team Soul. Pika just sending it in, has to get immediately out, but does get knocked by back-to-backs Polo. He was looking for the Wizard Tower, wasn't able to find it. Nevada Kadavra kill switch. Stone knock हो गया बे. अच्छा Stone को rep दे दिया था. वहाँ पे ऊपर में knock होने का. क्या बात है यार? The downfall of Box Gaming now, duking it out with one another back-to-back, Stalwart and Soul, all in a line, still on that western side, pushing in from Milter. Soul versus ST on that eastern side. At the moment, Stalwart with the worst of it, crunched in the middle. That's not a sandwich you want to be the filling of. Well, they are suffering. Rockets in the chat, रुकने नहीं चाहिए. पहले बोल दे रहा हूँ. That thick bread is weighing down on them from both ways. It's like soda bread. It's some hefty, hefty stuff. It is difficult to muscle through, but I'm not sure if even Stalwart can make this one happen. Vampire Esports, though, keeping it chilled out after losing one of their players. Still 3 eliminations. Despite everything, quite decent here. Falcons yet to even score 1. But survival could be all that matters if one of them takes a tumble early on. You do not want to be taking massive risks here with the score so close. You know you just need to outlast the other team. Sure, there's the possibility that Vampire Esports get a 500 million kill game, right? Yep. Elimination game. But Team Falcons, do they take that bet? Probably not. Stalwart, 1 HP.
On 178 at the start of this game, trying to pick up as many points as they can to solidify that third place position that they started the game in. Kill switch, take the nade. Action with a nade on the top. Sorry, I've just noticed something. The Vampire Esports currently on 4 players. So Stoned actually was able to just army crawl his way all the way across the map and get picked back up again. I mean, he is a vampire. Maybe he resurrected, you know? ST got 2 chances. Or just turned into a bat and flew on over. ST has no chances was a bit wounded, but spooky. It was absolutely fine. या तो अगर ये Falcon के साइड शिफ्ट देता है या VP देखते हैं. Guys, ये जिस पे जोन गया वो टूर्नामेंट जीता. या तो VP पे जोन गया तो VP जीता. Falcon पे गया तो Falcon के आगे का कंपाउंड खाली है यार. Stalwart eliminated now. GG. So third place. VP champs in the chat. If one of those teams sat behind them, down 1 Kia. Guys, हो जाए. Only on 2 players, or Nigma Galaxy potentially a little bit more likely to be able to take that. Could jump up and maybe steal that position away. Hard lag रहा है यार action पाप भी चला alive. It's the Wildcats chase that is very much hard at lag risk. for ST. Right now, they're taking congratulations for back to back. Vampire. Vampire Esports, Tani was saying that, you know, they're a positionally congratulations to Vampire Esports. And honestly, coming from Stalwart Esports के लिए यार compound, getting through the players to make it happen as well, and even taking that bold move to move over the top side of the post, just out of cover while they hear the third party going on. To hit this compound, in this specific spot, knowing the circle's going to have to come back up towards them. Very, very well done, very smart. No one can say this is circle for Vampire Esports at all. Falcons, though, they have got to head through some really rough terrain. And so many teams will be sweeping these areas for players. TJB Esports cracking on with RSG. Pick up mechanic in action. Vampire brings DD. The 2 lesser synergy working out at the moment, but ooh, Daku, if he gets the angle, he's a free broadside, gets another knock, looks for it, no! Snakes away behind the cover, but Vaz is in with the rest of 52. Sorry, the only remaining player of 52, looking for the challenge, but can't get it done. RSG staying alive under pressure. This is beautiful to try and strike out. They stay in it, Blank. This chase for 5th is still going. RSG, it's not the best position in the world, but they're only got Omber and Forest away aside them. So, you know, this really could be a chance for them. Forest currently fighting the world on his lonesome versus the entirety of USG. Falcons, though, TJB versus them. Never alone, hits the deck, takes a fair amount of bullets. Yusuf, look at a strikeout. No way that you get that teammate back up. Powerful, hot on the heels. The smoke cover is there. Champions in the chat. Looking to cut down this crossing. Attention is turned as well away to Nigma Galaxy. Yusuf on the floor, spotted. Powerful. Could be taken here, and it could be all over for Falcons on their race out in the blue. And Vampire Champions in the chat. And that is it. Congratulations, Team Vampire. No one expected this comeback. Hats off. It will end here, but still a fantastic position. Crazy gameplay by Vampire. Crazy gameplay. Hard luck ST, hard luck Falcon. Falcon runner-up. Blue Zone claimed the final victim. Crazy. Vampire Esports looking set. Crazy. To take this one home, looking to try. Guys, Vampire Champions in the chat. Don't see a way that they can be dethroned here. अब नाच लो भाई, emote कर लो. मार्क का साथ मारते जा रहा Stone. So difficult. Stone तो मारते ही जा रहा है, मारते ही जा रहा है, मारते ही जा रहा है, मारते ही जा रहा है. Bullets around the map. Chicken भाई. अबे भाई ये हिस्ट्री रिपीट होगा भाई. पिछली बार भी कौन से तो ये ग्लोबल में लास्ट मैच चिकन आया था भाई. भाई चिकन है लिख के ले लो सोल का चिकन. 100% चिकन 100%. लिख के ले लो भैया चिकन है. The circle moving out westward, right on top of Team. So now, challenge on the cards for 5th place. Omega Chicha तो magnet है वे. PMGC में हुआ था ना. Hold on to it. RSG eliminated 6 elimination. Star Challenge में भी हुआ था भाई. सबसे पहला Star Challenge last match chicken. Team 8-bit. इसके बाद PMGC में last match chicken Team Soul. इसके बाद अभी PMWI में last match chicken Team Soul. Leo. Takes a knock there to the 4 chicken 100% chicken. Well, they've done the work already. 100%.
Nades towards the back though, going to do plenty more. Goblin bhai. Left down to one. Grenade bhai. They'll spot it out in the open. Spray's looking good. 11 kill मार दिए. इसको बोलते हैं टूर्नामेंट खत्म करना. क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टूर्नामेंट जीतना. ये होता है तरीका टूर्नामेंट जीतने का भाई. खेलो तो ऐसा खेलो भाई. सीधा 11 किल मार दिए भाई. डर के खेले ही नहीं है लड़के. 11 किल मार दिए. हमें मर जाए घंटा फर्क नहीं पड़ता. भाई गेम प्ले भाई क्या वैम्पायर भाई. क्रेजी भाई. हैट्स ऑफ भाई. हैट्स ऑफ भाई. वैम्पायर हैट्स ऑफ भाई. If Vampire Esports Esports end the day with a chicken dinner, it's a second, a first, a fourth, and then potentially even another chicken dinner on the day. It will be the most incredible points to finish this tournament of PUBGMOBILE. Pmwi, Aton goes down, and Vampire's taking everyone on. Unfortunately, Ravenclaw hits the floor. Sorted out himself. Ravenclaw to take the knee, but back into the smoke. Vampire still with 11 eliminations. They Goblin! Erangel. Goblin हो गए हो क्या? अक्षत भाई! लियो! One home as well. लियो! Fight through the rest पनौती भाई अरे अभी देखना ना माँ का साथ पनौती जो बोल रहा ना बैगन के वाले सबके साथ. अभी देखो तुम्हारी बोटी बंद नहीं कराऊंगा तो. Position, Nades back in. मुंह बंद हो जाएगा तुम लोग. अभी देखो बस. मैच देखो The बस. forces holding them out are going to wane, but it's only Schweppes पिंडे में now मिला दिए. standing पूरी for the लॉबी को top अपने squad. पोटे देखो बस. अली कैसा मार रहे हैं. अक्षत बे ट्रेड आ गया. अरे खत्म रे. TJB एलिमिनेट बे. क्या हो रहा? 9 किल आंदो. Who just nailed them down. आंदो. Torn apart by bullets. Sent so quickly. It looks like Vampire Esports will get all 3 players back up again. And they're stuck in the blue. Chicken is eat by Vampire भाई. Molotov position, Vampire, really solid to stop their push over towards the Vampire Esports position. Now they can start to win their way in, but Seoul have 4 players alive. The team from India, who have at times, would love to chicken dinner है क्या? zone देखो जी. अजी zone देखो जी. You just और पे जी अक्षत भी आ लो जी. 10 किला डालो. Current moment. डालो 7-8 किला मारो. बैगन में मिला दो पूरी लॉबी को. Here we are again. Casting सुनना नहीं है मेरे को. बैगन भी casting नहीं सुनना है. Over the top. Nigma Galaxy still have freak in the game. This nade could prove absolutely disastrous. Doesn't hit anyone luckily, but they might have seen the arc of stoned. मैच के बाद बताते हैं. A little bit of damage from Ravenclaw, but Freak takes a tumble as well. Nigma Galaxy eliminated. Stoned is found as back-to-back ride on in, trying to get that flush. They will. Polo sends out. Sweat wants to find the shots, but takes a lot of damage. Vampire Esports might have their run cut down here, but they have done enough. Only Ravenclaw left, hitting the deck for a drop shot, and that is the end of their story. But it is now back-to-back, and Seoul going head-to-head. The team from India. 4 players alive. Elimination game. Find the player. But we are going to go over to the stage for the ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅੜੀਏ ਨੀ ਲੈਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਪਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਵਾਲੇ ਖਾ ਗਏ ਭਾਈ ਲੈਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਵੀਕਲਾ ਵੰਜਣ ਦੇ ਗੰਜੇ ਲਲਕਾਰ ਨੇ ਲਰਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ 3 ਡਿਗਰੀ ਆ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਉੱਡਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇੰਜਣ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬਬਲ ਜ਼ਾਰ ਨੇ ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਨੇ ਉੱਡੀ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਖਰੋੜੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡੀ ਲੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਲੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਸੌਟੇਜ ਕੇ ਸਾਥ ਲੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਸਾਠਿਆਂ ਮਜੀ ਵਾਲੀ ਅੜ ਬੱਲਾ ਲੇਮਨੀ ਪੌਪ ਕਰ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਜੈਮਨੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਯਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦਾਂ ਲਾ ਮਸਕਲੀ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਦੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਗਿਲਟ ਲੋਂਜ ਕੁੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੱਤੀ ਲੂੜੇ ਲੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਸਪੇਸਸ਼ਿਪ ਲੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਸਪੇਸਸ਼ਿਪ ਲੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਸਪੇਸਸ਼ਿਪ एक बार सबके सब
वैम्पायर ओपी कर दो, एक बार कर दो, एक बार कर दो। एक बार वैम्पायर ओपी कर दो, वैम्पायर ओपी कर दो भाई। बहुत नेक्स्ट लेवल खेले भाई, बहुत नेक्स्ट लेवल खेले, बहुत नेक्स्ट लेवल खेले भाई, बहुत नेक्स्ट लेवल खेले भाई। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, सब बोल रहे थे, मैं खुद बोल रहा था आरएसजी जीतेगी या तो एसटी जीतेगी या तो फाल्कन जीतेगी भाई। आउट ऑफ नोवेयर कमबैक हो तो ऐसा हो, क्रेजी कमबैक भाई, क्रेजी कमबैक भाई, नेक्स्ट लेवल कमबैक भाई, डेंजर भाई, डेंजर। वैम्पायर ओपी। और जाते जाते एक बार ओमेगा ओपी इन द चैट गाइस, आन दो ओमेगा ओपी इन द चैट कर दो एक बार। ओमेगा ने दिल जीता है टूर्नामेंट में, टू बी ऑनेस्ट। तुम लोगों का तो नहीं पता भाई, बट ओमेगा ने मेरा तो दिल जीत लिया भाई। ओमेगा ने जिस तरीके से टूर्नामेंट में परफॉर्म किया है, हैट्स ऑफ भाई ओमेगा। अच्छों की फट जाती है भाई ऐसे टूर्नामेंट में आईजीएल करना, ऐसे टूर्नामेंट में खेलना भाई। तूने भाई प्रूव कर दिया भाई अपना आईजीएल। ओमेगा ने प्रूव कर दिया भाई कैसा आईजीएल है वो, कैसा प्लेयर है वो जो 1v2, वो जो फ्रैग्स ओमेगा ने निकाले हैं, वो जो भाई आईजीएल ओमेगा ने करा है, क्रेजी ब्रो। हैट्स ऑफ भाई ओमेगा, मैड रेस्पेक्ट, मैड रेस्पेक्ट। ठीक है, रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया ओवरऑल स्टैंडिंग्स में, थोड़े फैंस ऑफ कोर्स डिसअपॉइंट रहेंगे, बट ओमेगा भाई दिल जीत लिया भाई, दिल जीत लिया भाई ओमेगा ने। एक से ओवरऑल अपन कितना है देख लेता हूँ। 11th आ गए गाइस, अरे यार 6 पॉइंट से रह गए, 11th आ गए अपन, #11th आ गए। अच्छा जम मारा है, चिकन मार दे कैसा जम मारा है, देख रहे हो। #11 आए गाइस अपन। ओमेगा ओपी, ओमेगा ओपी भाई। वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स ने 23 पॉइंट की लीड से टूर्नामेंट जीता है। इसको क्या बोलते हैं पता है? डोमिनेशन बोलते। वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स गॉड भाई, क्रेजी भाई, क्रेजी। स्टालवर्ट भी अच्छा खेला, फाल्कन भी क्रेजी खेला भाई, फाल्कन भाई क्रेजी भाई। एमवीपी कौन बना? एक्शन ही बनेगा आई थिंक। एग्जिट छोड़ दिए, यस ब्रदर, एग्जिट छोड़ दिए, एग्जिट छोड़ दिए ब्रदर। क्यों छोड़ा भाई? अरे मैं तो बहुत ये बैन के पहले ही छोड़ने का प्लान था, बैन के पहले छोड़ने का प्लान था मेरा, कि वो तो उन लोगों का 4 लोगों का लाइनअप परफेक्ट था भाई। मैं ऐसा नहीं कि बैन हुआ उसके बाद छोड़ने का प्लान था, मैं तो बैन के पहले बोल के रखा था कि छोड़ने का है। रीजन यही है बिकॉज उन लोगों का 4 लोगों का परफेक्ट लाइनअप था, मेरे को एज अ 5th प्लेयर नहीं खेलना था, मेरे को ऑफकोर्स खेलना था यार। मैं एक्सो ज्वाइन किया था जनवरी में, तब से लेके बीएमपीएस के पहले तक मैं ही खेल रहा था प्लेइंग 4 में, बहुत सारे टूर्नामेंट जीते भी, बट फिर बीएमपीएस में ऐसा डिसाइड हुआ कि इमॉर्टल खेलेगा एज अ सपोर्ट प्लेयर, और मेरे को सपोर्ट रोल तब वो टाइम पे नहीं जम रहा था, तो ऑफकोर्स इमॉर्टल खेलना सही था। इमॉर्टल बहुत क्रेजी सपोर्ट है, उन लोगों का सिनर्जी भी इमॉर्टल के साथ ज़्यादा अच्छा है, वो तो बहुत टाइम से खेल रहे हैं। तो बोला ठीक है कंटिन्यू करो बीएमपीएस के लिए। मैं तभी प्लान कर दिया था कि बीएमपीएस के बाद छोड़ेंगे, बिकॉज ऑफकोर्स यार इधर अपने को नहीं जमा। स्टार्टिंग में अच्छा जम गया था, स्टार्टिंग में अच्छा हम लोग टूर्नामेंट जीते थे, 3-4 थर्ड पार्टी टूर्नामेंट जीते थे, आपको पता है। और उसके बाद एकदम से फिर बीएमपीएस में ये डिसाइड होता है कि इमॉर्टल खेलेगा, तो बोला ठीक है आप लोगों को जैसा बेस्ट लगे वो करो। तो उनका सिनर्जी उनके साथ उसके साथ ज़्यादा था। ऑफकोर्स इमॉर्टल थोड़ा बेस्ट, मेरे से बहुत बेटर सपोर्ट प्लेयर है वो, मैं उतना सपोर्ट खेला नहीं हूँ और मेरे को उतना सपोर्ट वो टाइम पे नहीं जम रहा था, तो इमॉर्टल खेला, उसको उन लोग अच्छा जमा। बोला ठीक है आप लोग कंटिन्यू करो, आप लोगों का सिनर्जी वैसे भी अच्छा है, मैं क्यों बीच में परेशान हुआ, मैं बैक ऑफ करिए। कोई और में अभी नहीं, अभी कोई और, अभी गेम का ही आता पता नहीं है, कोई और में नहीं जा रहा। न्यूयॉर्क नहीं, अभी गेम ही नहीं है ना, गेम नहीं है तो क्या करूँ, कहाँ ज्वाइन करूँ, फायदा ही नहीं है कहीं ज्वाइन करके, गेम ही नहीं है भाई अभी। करंट टॉक नो और नॉट अ पार्ट ऑफ एनी और ओनली पार्ट ऑफ 8-bit क्रिएटिव्स। मतलब मेजी वॉज राइट, मेजी जब बोला था तब सब सही था, बीएमपीएस के बाद चेंज हुआ है सब कुछ ऐसे। मेजी बीएमपीएस के पहले बोला था।
झूठ बोल रहा है। अरे भाई जाके पोस्ट देख लो भाई, व्हाट द फक यार। उन 4 का सिनर्जी सबसे बेस्ट था, उन लोगों का सेट हो रहा था आपस में। मैं बोला ठीक है यार, मैं क्यों बीच में यार ऐसा जबरदस्ती करूँ कि मेरे को खेलना है, मेरे को खेलना है। 4 खेलो यार, मैं बैक ऑफ कर देता हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया था कि कहीं और ट्राई करूँगा। बस उन लोगों का 4 का उनका आपस में सिनर्जी सेट है, तो मैं क्यों परेशान करूँ भाई। और तुम खेलो। कौन से और में जा रहे हो? कोई और में नहीं जा रहा अभी तो, कोई और में नहीं। जब तक गेम का आता पता नहीं होता है तब तक मैं कहीं नहीं जा रहा भाई। गेम का आता पता ही नहीं है अभी। गेम भगवान भरोसे, गेम को आन दो, मेरा हाथ ठीक होने दो सबसे पहले। मेन ये हाथ जैसी ठीक हो जाएगा तब तक गेम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखते क्या क्या होता है। एसएटीएल, अरे एसएटीएल तो ऐसे भी पार्टी है यार अपन एसएटीएल की, उसमें क्या। बैंगलोर जा रहे हो? गाइस जा रहा हूँ मैं। चलो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। मैं जा रहा भाई बीएड कराने, कल मेरे को बैंगलोर जाना है। कल अपने को बैंगलोर जा रहा है, जरा बीएड करा के आएंगे। इसी बात पे खतरनाक सा गाना बजा देते हैं। आई होप गाइस आप लोगों को एंजॉय करे होंगे ये वॉच पार्टी 3 दिन की। कैसा लगा? एंटरटेन किया तुम्हारे भाई ने? नहीं किया? बेस्ट वॉच पार्टी यार बताओ, तुम्हारे भाई ने एंटरटेन किया कि नहीं किया? क्या लगता है? अरे भाई ये सब तुम ये और के नाम वाम लगाना बंद कर दो भाई। मैं कोई और में नहीं हूँ भाई, और ना गेम आए जब तक मैं हूँ। मैं कोई और ज्वाइन नहीं करने वाला भाई, क्लियर कट बोल दे रहा हूँ। कोई भी हाईलाइट चैनल वाला मत डालना भाई, इधर ज्वाइन कर रहे हो उधर ज्वाइन कर रहे हो। क्लियर कट बोल रहा हूँ, किधर भी ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। गेम जब तक कंफर्म नहीं होता, मेरा हाथ जब तक सही नहीं होता, तब तक मैं कोई और में ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ। पहले बोल रहे हो ठीक है? मजा आया नहीं आया वॉच पार्टी में? पहले ये बताओ, डिड यू गाइज एंजॉय द वॉच पार्टी? डिड यू गाइज एंजॉय द वॉच पार्टी? बेस्ट वॉच। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू फॉर द सपोर्ट गाइस। जितने भी लोग ने 850 के फॉलोअर्स करा दो, मजा आ जाएगा। जाते जाते मिलते हैं कल बैंगलोर। पनौती कौन बोल रहा था उसकी बैंड की? हाँ कौन बोल रहा था? पनौती कौन बोल रहा था? आया ना लास्ट मैच चिकन। गट फीलिंग बोलते उसको। गट फीलिंग है मतलब है। चलो आन दो भाई, जितने भी लोग नए फटाफट फॉलो ठोक देना। मिलते हैं आप सबसे 15 तारीख को। कल मैं बैंगलोर में रहूंगा, जितने बैंगलोर के लोग हैं मिलने आओ। टीसी एरिना में पूरा दिन मैं बैठे रहूंगा, चिल करूंगा, आप लोग से बातें करेंगे, मजा आएगा। मिलते 15 को खेलेंगे, बकचोदी करेंगे, मजा आएगा। खेल दो। 18 तारीख को भी वापस वॉच पार्टी होगी, तुमको पता है। 18 तारीख को अपनी 7 सीज खेलेगी अब, और मजा आएगा। बाय बाय गाइस, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, स्टे सेफ। बैंगलोर में मिलो जितने भी बैंगलोर वाले आ जाओ। चलो बाय बाय। 6, 5, 4, 3, 2, 1 लाइटां लगदियां तारे तेरे सिराने ने पारे जांदियां हवा ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ